Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome back to day 2 of our exhibition and seminar on research, processing, and product development of herbal medicines. Yesterday, we had insightful discussions on research, quality, standardization, regulatory frameworks, and the future potential of herbal medicines in Pakistan. Before we proceed further, I would like to invite a few reflections from the audience. In one sentence, what is the most important message or takeaway that you are carrying forward from yesterday's session? Any one of you, just one line, जो कल आपने कल के सेशन से सीखी हो. Any one of you, कुछ भी एक सेंटेंस जो आप बताना चाहो. जी सर, माइक है. जी जी वेरी नाइस. थैंक यू. एनीवन एल्स, अगर कोई कुछ भी एनीथिंग कुछ कहना चाहे. हम्म. हम्म. जी बिल्कुल. जी मैम प्लीज. Absolutely. Absolutely. Thank you very much. जी सर. और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तादाद को हमने इंक्रीज करना है और उसको फोकस करके उनकी ट्रेनिंग करवानी है और उनको आगे कम्पिटेंसी बेस्ड आगे लाना है ताकि वो जो दूसरा सिस्टम है उसके इक्वलेंट इफेक्टिवनेस डिस्ट्रीब्यूट कर सके पॉपुलेशन के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर और पूरी हमारी उनको आराम जो पहुंचाना है सेहत का वो उसी लेवल पे जाए जिस लेवल पे मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जा रहा है. बिल्कुल मैडम का कल का सवाल था कि होल्ड ऑन एफिकेसी ये कैसे इंश्योर किया जाएगा. तो एफिकेसी बेस्ड इसमें से एक चीज जो थी कि इनकी क्वालिटी कंट्रोल जो हर्बल प्रोडक्ट्स की है अभी सिर्फ केमिकल बेस्ड चल रहे हैं. ये एफिकेसी बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इसका नहीं है अभी तक जिसमें हमें दुनिया में पहल करनी है. बिल्कुल. हमें इसमें केमिकल एवेल्युएशन के साथ साथ बायोलॉजिकल एवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर प्राइमरी पैरामीटर सेट करना है जो प्रिडिक्ट करके दें कि ये एफिकेसी इतनी आएगी. बिल्कुल. तो बायोलॉजिकल प्रिडिक्शन सिस्टम्स का इंक्लूजन जो है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर वो इस चीज को इस लेवल पे ले आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन या एलोपैथिक है उसके बराबर एफिकेसी हर्बल की होगी और वो यूनिट वाइज वो जो है ना वो उसको हम जो है ना वो डिफाइन कर सकेंगे. तो डिफाइंड एफिकेसी जो है ना वो भी हमने कागज पे जी. मेरा ये कि ऐसा माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे है वो तो हो रहा है लेकिन बायोलॉजिकल की जो ये बात कर रहे हैं इसमें यकीनन गुंजाइश है. टॉक्सिसिटी की जो स्टडीज हैं वो की जा रही हैं बायोअवेलेबिलिटी की जा रही है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होते हैं वहाँ क्लिनिकल ट्रायल बड़े आसानी से हो जाते हैं मतलब फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग करते रहे हैं. लेकिन ये जो यूनानी मेडिसिन हैं या जो कन्वेंशनल मेडिसिन है इनके लिए जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को अभी मेरा ख्याल है इतना उनका बैकग्राउंड है नहीं जो उन्हें बनाना पड़ेगा. एक तो पॉइंट ये. दूसरा केमिकल ये सही कह रहे हैं कि केमिकल हो रहा है लेकिन केमिकल में भी बहुत गुंजाइश है. मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो HPLC पे जो आइडेंटिफाइड मेथड हैं उसमें वेवलेंथ फिक्स होती है लेकिन इनके साथ मसला है कि इंग्रेडिएंट बहुत सारे होते हैं तो इनकी वेवलेंथ फिक्स करना और इस बायोमार्कर भी एक इसका इलाज है
लेकिन ये HPLC पे भी हमें डिफाइन करना है जो हम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि FTNIR ये न्यू टेक्निक है बिल्कुल, ये हर्ब्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो हमने हमदर्द में इसको शुरू किया है, कर रहे हैं हम इसको, और इसका मेथड डेवलप कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि AA यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कुछ कंपनी के पास है, कुछ पे नहीं है। क्योंकि जितनी भी ये हर्बल मेडिसिन, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो हर्ब्स है, यूनानी मेडिसिन, दूसरे मिनरल्स हैं, और तीसरे एनिमल ओरिजिन की चीज़ें भी होती हैं। तो इनके लिए ये तीनों स्टडी हम करेंगे तो ये इसकी एफिकेसी स्टैब्लिश होगी। जब हमारे सेशंस एंड होंगे आज, तो हम एक पैनल डिस्कशन रखा है जिसके अंदर हम हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस करेंगे। आपने 2 दिन क्या सीखा या आप क्या कहना चाहते हैं, तो हम इंडिविजुअली आपको सुनेंगे भी, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे होंगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिफ्लेक्शंस, और अब वी लुक फॉरवर्ड टू बिल्डिंग ऑन दोज डिस्कशंस टुडे, एंड वी मूव फॉरवर्ड for practical recommendations and future direction. Now, moving with our scientific sessions, our very own, very competent officer, Deputy Director Arsalan Tariq is here. He will discuss GMP controls for herbal medicines in line with international standards. We welcome you, sir. Thank you, madam. Yesterday we discussed the quality assurance whole setup in total, what is required. In detail, they have discussed in the presentation of the Kershi International. Now, being regulator, being part of this system since more than 5 years, I have just what I have gained through these years, which we used to see during our inspections of various firms, and what we expect that the manufacturer should focus on which areas of the GMP and should follow the guidelines published internationally and accepted worldwide. So, starting from the topic that is establishing stringent GMP controls for the herbal medicines in line with international standards. Why GMP for herbal medicines? There are numerous constraints that have been elaborated previously, their agriculture practices and various. One of the examples that I have quoted is a Belgium incident. In 1993, there were certain weight loss clinics which were using a herbal pill called traditional Chinese medicine, which were using Stephania tetrandra, which was a established diuretic, contains a tetrandrine, which is a diuretic used in the traditional Chinese medicine from centuries, which is the active ingredient. The common name or the pinyin name of the herb was Han Fang Ji. The end name or the pinyin, the ending name of this herb is similar to another herb, which is the Aristolochia fangchi. The Guang fangchi is the pinyin name, or also known as the common name. The herb procured by the firm at the manufacturing of this particular product was replaced by this this new adulterant or the similar looking product. The top right shows how similarly look these herbs are, very closely related. So the product was manufactured by using Aristolochia fangchi, and end result was more than 100 healthy women had acute renal failure. So this event, also known as Aristolochic acid nephropathy, for those patients who were taking and could not develop the renal failure, in future they developed carcinoma, cancer. So since the Aristolochia जो Aristolochic acid है, ये carcinogen भी है grade 1, जिसकी वजह से उनमें कैंसर भी डेवलप हुआ. So it is appropriate that we should start from the initiating material, or the starting material of your manufacturing should be very much regulated and very much controlled. So the lesson from this history is that the supplier qualification and its auditing at par with GMP. For example, previously, last year we discussed GACP, the good agriculture and collection practices should be adopted, internationally published, recognized. Your commission has published various directives. Traceability
including the full documentation, the material from which source that have been purchased, and including the binomial nomenclature. Use binomial nomenclature for the procurement of such herbs rather than common names. It will assist the manufacturing control and will facilitate to follow the GMP. Secondly, the microscopic identity. It is required that we should evaluate the herbs macroscopically, and chemical profiling of these herbs should be maintained by the firms, and segregation of the raw material batches as a representative sample should be retained what type of material they have used during the preparation. These are a few of the lessons that we should learn from these mishaps. Now, the challenges in the herbal medicine. Previously, we have discussed in recent various professors and dignitaries have discussed various challenges, including some of the challenges which are unlike a synthetic pharmaceutical pill, where there is a single ingredient pharmaceutical product and we can identify or test that product against certain standards that have been given in the monograph. Here in the herbs, there are various, due to complex chemical matrix, there are various issues. First of all, their markers. They are not, even a single herb can claim that there is only a single marker is present in the single herb. There are various markers, a defined constitutional group of constituents which must be standardized, identified, and quantified. So every pill delivers same therapeutic dose. Some of the markers which we identify as activin markers or analytical markers. There are certain natural toxins that have been present along with their beneficial constituents. There are certain ingredients that may have potential harm or effect or side effects. So harmful compounds naturally present in the plant must be filtered out, as lactic acid, pyrrolidine, alkaloids, aconite, aconitine, and glycolic acid, hyperferrin, and these are few examples. Environmental contaminants like roots, in which we grow these herbs, must be rigorously tested for the heavy metal, pesticides, and mold spores. And the adulteration, the deliberate or the accidental substitution, just like we see in previous example, there was accidental substitution by a toxic herb in or dilution of botanical product with inferior material or unlisted the toxic plants or undeclared synthetic drugs. The GMP requirements under the law, whether these GMP controls are mandatory to be followed, either GMP is required or not for the herbal manufacturer. Yes, it is required. Under the DRAP Act, it is given in section C, 7C, 9, where the authority is empowered that can adopt the international standards, including WHO, ICH, and PICS. And in the SRO 412, that is the rules that we have that were promulgated in 2014, the Alternative Medicines and Health Product Enlistment Rules, that clearly defines and define the principles of GMP, which are required that the facility should be compliant with GMP. There are some international standards that are available that WHO has published GMP guide, and European GMP guide is available next time, and the PICS GMP guide PE 009 2015, which is published and have manufacture of the herbal medicine. The GMP is described in these guidelines. WHO published this guideline back in 2007. This is not the first time that WHO has published its guideline regarding the GMP of the herbal medicine. Initially, the step was taken by WHO in 1996, where WHO TRS 863 was prepared. The Annex 11 of that is very particular regarding the GMP control of herbal medicines. Subsequently, they developed this guideline, particularly, I'm talking about that. What is this guideline? In 1996, there was an initial the basics of the herbal GMP was published by WHO. In future, due to the requirement or the usage of the herbal medicine increased, and they have to publish and review or update their GMP guideline. And in future, they published the updated GMP herbal guideline in 2004. Or this guideline published in 2004 is an addition or addendum to the journal GMP that is being published by WHO TRS 906. Now, this guideline, particular WHO GMP, which is published in 2007, this is an
collection of both the GMP required for pharmaceutical product as well as GMP required for the herbal medicines. So there are various sections in appendix. There are 4 appendix and 2 sections which prescribe the GMP, and it's very good document for the to be followed. And in future, if the authority desire that if we adopt these guidelines like PICS and WHO, I selected both these 2 guidelines. Basically, these are given in the Act and the rules that the DRAP may adopt these international standards in future for the regulation of the herbal medicine. So our manufacturers should be capable and should aware of these guidelines so that they can follow easily and should build their facility in compliance with these guidelines. So the basic key principles that are given, definition is given the principle of the GMP in the SRO 412. That means that part of the quality assurance which ensures that medicinal products are consistently produced. The GMPs being a very minute part of the quality assurance system or the quality management is one of the integral part that covers the manufacturing side as well as the testing side of the manufacturing facility to prepare a herbal product consistently in compliance with its intended use as well as the published pharmacopoeias or the market authorization in other terms. So the basics of these lies in the GMP, the factory premises, where it is located, what are the surroundings, the building layout, man flow, material flow, the cleaning, the working space, the machinery and the equipments, validated methods are very important. Stores, raw material, packing material, finished goods, ancillary areas, water supply, waste disposal, personnel, like they should be trained, medically fit, and suitably selected. The documentation like PMRs, SOPs, logs, records, and the market surveillance like recall and the product complaint. These, as well as the quality control, which is also an integral part to confirm that the GMP is followed. So the quality control should follow the raw, as we discussed, as we will further discuss the control of the raw material, packing and in-process finished products. So the premise design, the flow, the environment, and the control. As Madhur Saab discussed in last day, that DRAP is in the phase of transition from enlistment to registration and licensing purpose. So under these draft rules, there was a annex, there was a schedule B for the which described the GMP to be followed by the chapter 2 particularly of that schedule, which describe the basic requirements to be followed by herbal manufacturers as their GMP. So these are taken from those schedules and those chapters. So the design and the construction, the premises must be located, designed, constructed, and maintained suitable operation. These are just basics of that. The DRAP ensures that the premises and the design and the flow should be minimal, should be designed such a way that it should minimize and restrict the contamination, the cross-contamination. The product should be safe to use by the end consumer. The premises must be located, designed, constructed, and maintained to suit the operation. Surfaces, exposed areas must be smooth, cleanable, and not shed particles. In most of our inspections that we used to visit, there are various issues regarding the construction material that been employed during the building design, and their manufacturing, their structure, which itself is a source of contamination. Like we require, the windows should be flush fitted, the paint should not erode, the curves should be smoothened out, there should be coved curves should be that touches the floor, and there should be not 90-degree angle between the floor and the wall. So these are the basic requirements that ensures that the cleaning can be appropriate for the intended purpose and cannot impart its particle to the product that been manufactured. The drain is also very important to prevent the backflow, avoid open channels. Premises must afford the protection against the insect. It is very important that because we are using herbs, these herbs, some of these are just like gums and sweetened agents, so they attract insects, rodents. So it is very important the facility should be designed to control the ingress of these pests.
So there should be a very stringent control regarding the rodents and the pests as well. A documented pest control procedure shall be maintained by the company. The environmental system, the electrical supply, lighting, temperature, humidity, ventilation must not adversely affect the product quality and the equipment functioning. It is also very important to understand that the herbs are very moisture containing part of the formulation that is being used in the herbal medicines. So there's a lot of potential in the herbs that the moisture can either degrade, either grow mold, or the moisture can deteriorate that in the herb, which is being stored in the raw material stores, where humidity control shall be maintained. Proper ventilation and air filtration controls are required to prevent the contamination control, cross contamination. I used to manage the dust operation, just like discussed. It should not impart its dust particles to be the part of your product at the end. The premises layout must ensure the logical flow of the material, preferably unidirectional flow of the materials, and mans are preferred in GMP. So therefore, during approval of the layout, it is discussed with the technical team how to manage the flow of raw material from stores to the dispensing, sampling, and production areas, and the frequent sampling by the QC personnel. It should also be controlled by the personnel and material movement. To minimize the errors and contamination, maintenance activities should not jeopardize the product quality. The special areas and ancillary areas, these are very important areas, which, so for example, the water. Water is also a direct part of your product. So the control of water is very important. It should be standardized, validated. Water should be utilized. That it should not impart its own taste to your product. So ancillary are separate restrooms, the change rooms and maintenance workshops, toilets should not open directly to the production areas. The storage areas must allow the orderly segregation, just like what is we received, what is recalled, what is rejected, what is sampled, what is quarantined, what is released to be used, and what is dispensed as well. These areas should clearly be defined. So the control temperature, humidity were required, receiving dispatch bays and protected from the weather. The weighing and the production, these are very important areas for the production of any herbal medicine. Just like sampling and dispensing, recently I have a chance to visit a facility where there was a dispensing room they have made. So the dispensing hood they bought is bigger size than the total area they have designated for the dispensing. Further, the placement of switches. The wire provided with the dispensing hood is so small that it could not connect to the switchboard. So I asked them to operate these dispensing hood. He was unable to. And he said that, sir, we will revise our layout and we will manage these things. So while designing the ancillary areas and the production areas, you should keep in mind that what type of equipment you are going to install in your facility. The quality control lab be separated from the production and designed of the method, separated air supplies for biological and micro labs. Adequate storage of the sample and standard solvent be recorded. The equipment and the material cleaning is also a very important part of the equipment design and calibration. Since it is a new inception of GMP concept in the herbal medicine by our industry since 2014. They are being regulated since 2014, and now they have to take these steps to procure such equipment that are from SS, or the material that should not impart its own toxicity or its own leachables or its own extractables to the product. So the equipment design and the calibration of the equipment must be suitable for operation and minimizing the risk of the error, cross-contamination. The balances and the measuring devices must be available, calibrated on schedule, and records maintained. Cleaning maintenance. Production and the lab equipment cleaned on a schedule using validated procedure. Vacuum or the wet clean preferred, preferably while granting the line clearance during the production activities.
The SOPs primarily were not available while inspecting the firms, so they were guided to make SOPs for the cleaning and line clearance. They should be validated method should be available with them. So to ensure that the previous product should not come along with the new batch. Equipment that contacts the product must not contaminate it, and defective equipment removed or clearly labeled. Removal of equipment, defected equipment or damaged equipment is also very challenged by the manufacturers. Where there is no proper SOP, the workshop man came without any protocol and take the machinery out of the during production areas without either noting it that the machine is out of order or something. So the materials, the water, no cleaning, lubricant, pest control material should contact the product. Water must comply with WHO potable water guidelines, and all incoming materials quarantined until QC release. The fixed power pipe work, it is also observed that during inspection, the pipe work was not proper. The inlets and the outlets were not designed to either wash the equipment. So the fixed pipe work and the service connection must be labeled and non-interchangeable for the hazard services. Where traditional wooden equipment is used, it must be dedicated or justified for with rigorous cleaning and the protocol. So the raw material control, once again, is already discussed, the source qualification, the labeling, the traceability, the quarantine release. It is very important to understand that the material must not be used until it is released by your QC, either by its chemical profiling, by its microbiological profiling. The SOP that you have defined, where you mentioned that how you will release the raw material for the production activity. So the personal and the personal hygiene is also very clear, very important to understand that the personnel you hire, they should be healthy. There should be a program where there should be regular examination of your health with those workers. That the disease or the lesions should not come in contact directly to your product, and rather treating the patient, it become a no sort or sarcode for the upcoming the user. The training awareness personnel must be trained in personal hygiene as well as the GMP principle. Records of the training periodic assessment must be kept. The protecting clothing should be provided. It is also very important to train your personnel regarding the use of protective clothing during the production activities. It was observed a few of the times, not always, that the personnel were not trained and they were asked to bring something from outside the premises. They used to bring that thing while wearing these gowns or the uniform that has been designated to be used inside the premises. So it requires a lot of training and hammering of these workers. All visitor, contractor, and temporary staff must follow the same hygiene procedure. Employees should report any condition that may affect the product quality. Quality control lab and stability. Testing requirements should be clearly defined. SOPs, standard testing procedures should be available. Standard analytical procedures should be validated, calibrated. Should be validated methods are available by using the calibrated equipments. The other important point is the stability. Another challenge for the industry is regarding to define the stability of the product. Where the stability studies in last day, the Kashi determines some refer the ICS guideline, the requirement for accelerated stability studies, real-time stability studies, where the product should be kept under these conditions to assess the stability of the product. The stability study determines the expiry date and the storage condition, and ongoing stability program must include the multiple batches, defined tests and schedules, and the retention sample as well. The stability reassessed after significant changes. Most of the industry are not practicing the stability, while few of the industry are keeping the stability representative samples in the stability chambers. Despite that, the stability protocol and the stability method or the approved SOP was not followed during the determination of the stability. Batch record reviews required as part of the release, and retention samples of the material and the finished product must be sufficient for at least 2 re-examination.
It is also highlighted that the retention sample should be present in sufficient quantity. In most of the cases where there is an issue in the product, and when we trace out the manufacturer and there was no reference sample available with them, and stored under the appropriate conditions. Documentation, record, and the batch control. Another very central role that plays in the GMP, the heart of GMP is the documentation. Do what you write, write what you do, but do write in compliance with the guideline. The document control documents must be appropriate, signed, date, and changed only when authorization superseded the version retained for defined period and prevented from inadvertent use. The batch processing, batch packaging record should be maintained properly, and SOPs for the traceability of these samples and records. The record must permit full traceability of significant activities, retention of the record, and retention sample maintained as per the requirement. Validation, change control, risk management, these are new entrants to the GMP. Where there is VMP, it is required that the firm should maintain a validation master plan. Accordingly, every product, every process should be validated, and the change control is also very important topic for the where there is a manufacturing change or there is a protocol change that have been occurred either deliberately or inadvertently should be recorded and recorded in the BMR, so that while traceability, while tracing any defect, any event, we should be able to figure it out. The ongoing review is port quality review PQR. It is also desired that validation and the qualification program must be continuously reviewed. Where you add a new equipment, where you add a new personnel to your, and if the equipment is added, you have to revalidate your process. If the process is changed for the extraction or the manufacturing, it should be revalidated accordingly. So with the controls to prevent the cross-contamination, dedicated areas, campaign, production, validated cleaning, closed system, the air logs monitoring should be selected based on the risk assessment and effectiveness checks. Complaint recall, cleaning and labeling and packaging. It is also very important to understand that the complaints and market recalls are very important to understand the progress of the firm. Most of the time, the firms do not maintain such records. The understanding of the firm is that when there is no recall and no complaint from the market, their part is very good. In actual, it is not that the system is not in place by the manufacturer to accept these recalls and the complaints from the market. Or if they do not recall. So it is very important that all the complaints, including the adverse reaction or any misadventure, which may be adverse or which may be a side effect, so must be recorded, investigated, and acted upon as per SOP. A tested recall system must be enabled. Prompt action distribution record must be permit identification, recovery of the affected batches, and recall products stored securely pending disposition. So the training of the personnel and their responsibility must be clear. Authorized person, the appointment of the authorized person is directly linked to the quality of the product, having sufficient experience and qualification as well as the training. So it is the time that we should hire for the herbal manufacturers that trained and having experience, particularly in these fields. So the packaging and labeling instruction must be identified for each product in the new rules that draft has drafted, where there is a proper chapter regarding the labeling guidelines. And so in future, these guidelines will be promulgated. The packaging and labeling instruction must be defined for each product and pack size, specifying the product name, dosage form, strength, net content, active ingredients, batch, expiry, etc. Black storage condition should be mentioned on the product. Thank you. Question. Thank you so much, Arsalan, for telling us in depth about GMP controls and principles for a herbal manufacturing unit that are very much same as any pharmaceutical unit for therapeutic goods. So thank you very much. Now
Moving forward, Director ICCBS, University of Karachi, Professor Mohammad Raza Shah, highly respected scientist and researcher. We are pleased to have him here with us. I invite him on stage. Kindly, sir. Online? Oh, I'm sorry, he is online. So we welcome you, sir. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, जी. So, thank you so much let me thank first Dr. Abdul Rashid for just inviting me for this talk, and I'm really thankful to him for all the work which he has been doing over the years when he was um, a director for Macy Services and now at Comstech. So what I would be just more talking about the clinical trials and basic understanding of the clinical trials and traditional Chinese medicines, which I just listened to the earlier speaker and some of the comments I just also was listening. So this is a very interesting topic. And let me just briefly introduce our center, International Center for Chemical and Biological Sciences. We are working at the interface of chemistry and biology. And as you can see that our clinical trial unit is actually a part of our biological section that we call as a CBSCR. So it's a big center. And we always just value the contribution of our donors. So that's always I just flash on whenever I'm just giving a talk. So they contributed to our center. And of course, our teachers, Professor Ataur Rahman, Professor Iqbal Chaudhry. And I'm a lucky one to be at the forefront of three great scientists of Pakistan, Professor Siri Muzuma Siddiqui, Professor Atta Rahman, and Professor Iqbal. So they have given me the torch to carry on the legacy of the center. These are various centers at ICCBS where we are working at the in the area of chemical sciences. These are the area where we are working at biological sciences. It's one of the most decorated and respected center in the international community. As you can see that it's a UNESCO Center of Excellence, UNESCO Chair on Medicinal and Bioorganic Natural Product Chemistry, and so on. The research productivity is also amazingly good. As you can see, over 10,000 research articles have been published from this center. The funding of the center, we have one handsome amount of funding from both national and international agencies. It is one of the most decorative centers in terms of honors and awards. Our faculty have received both national and international award. And let me just come to the Center for Clinical Studies, Biochemical Studies and Clinical Research. Actually, it's a license from the Drug Regulatory Authority of Pakistan, and it is a purpose-built building, the only building or only center in the country which is purpose-built as per WHO and FDA guideline that each and every room should be located at certain places, and that is you just check out the layout of the WHO and the FDA for the clinical trial. They would give you, and this center is really fit on that.
layout because we involved WHO and FDA right from the day one in the building design and the map layout stage, and then we built this center as per their guidelines. The center is having a very good emergency care unit. Similarly, there are 7 air-conditioned wards for the and we can house at one time more than 110 subject at a time. Dedicated dining facility, recreational area. There is a storage area. We have 4 -80 freezers and many -20 freezer, medical officer rooms, and so on. The analytical facilities of the CBCR and ICCBS is one of the best in the world. We have LCM, SMS, triple quadrupole system, HPLCs, and so on. These are some of the allied facilities which are necessary for the clinical trials. Like we have very good UPS backup system, solar system. The biological waste which we generate, we have our own incineration facility. Similarly, we have standby ambulance system. The access control system as per WHO guideline is available in the system. Fire tender and fire safety gadgets are all available. We have been conducting bioequivalence studies and clinical trials before the inception of the DRAP, and some of these clients are there. And this is actually after the biostudy rule have been passed, then we initiated the clinical trials on traditional Chinese medicines. This is where we are at the moment. So let me just discuss with you. This is a clinical trial which we conducted during the pandemic. This is a Ching-Fa-Gingen granules. These granules were initially prepared for the treatment of H1N1 influenza virus, but later on the Chinese authority, they discovered that this particular granule is effective against the COVID-19 patient, and during a meeting in the Governor House of Sindh province, the Chinese delegation, when there were a potential outbreak of COVID-19 in Pakistan at that time, so they recommended this one, and I was given the task to conduct clinical trials on this in these formulations or granules, and we got approval from Drug Regulatory Authority of Pakistan, National Bioethics Committee, IRB approval from the Indus Hospital, because we conducted this in collaboration with the Indus Hospital. I led this trial, and 300 subjects were randomized, and this was actually double blind studies, and treatment group were treated with the JHQG granules, and then we used the placebo at that time because there were no treatment at that time for the COVID-19 subjects. So this was actually the randomization. This is actually a demographic and baseline characteristic of the trial subjects. The subjects enrollment were completed, and we enrolled 300 subjects. 256 subjects completed the trial, and 44 subjects drop out from the trial. And then we carried out trial on 256 subjects who completed the trial. Actually, it was very difficult to recruit the patient at that time because the people were very much scaring, and there was lockdown everywhere. We were there. This was a challenging trial, so we just set up camps at various roads and squares in Karachi city, and then we convinced the populations to because in this case we were recruiting PCR confirmed symptomatic patient, but non-hospitalized one. So those are more at home. And then these were some of the activities which we conducted, and we recruited. Then the results which we
we publish these results in international journals. And after our publication, then Professor Dennis Lim from Hong Kong, he just approached me, and he suggested that he could follow our protocol on the elderly patients, but this would be an observational studies in Hong Kong. Then we share our own protocol with him, and he also carried out the trial. He carried out the trial a bit quickly because it was an observational study, but he convinced the patient to follow the protocols and all the test, diagnostic test, and which we were conducting. He was also doing the same, and then that results we were also published internationally together. After having this, we got then we became encouraged by the sense that our this clinical trial were declared as a second best clinical trial conducted on traditional Chinese medicine by World Federation of Traditional Chinese Medicine, and I was invited to China, and we received that prize for this one. So that earned us a lot of good name for not only for our organization but also for the Drug Regulatory Authority of Pakistan, that the protocol were accepted as a golden protocol by them, and nowadays they are following that because so this is that certificate which we received. And then we became encouraged, and we also carried out clinical trial on Sinopharm vaccine on healthy volunteers. This is again a intergovernment trials which were I was given the responsibility to lead this trial. So this is actually the one. But I would just again come to another traditional Chinese medicines. This is were used for the gastritis patient, and we carried out this clinical trial after having approval from National Bioethics Committee, our IRB, and Drug Regulatory Authority of Pakistan. And again, here we enrolled 240 patients, and we randomized them to 120 and 120. In one case, actually, this was a double-blind study. Again, we were not aware that whether we are giving omeprazole or we are giving the TCM product. So this was a double-blind studies. The blinding were carried out in China, and they just provided us the doses in a coded form. And this is actually some of the detail. This is a demographic and baseline characteristic of the trial subjects. We enrolled 250 patients, and this is actually 201 patients completed the trial. 30 were dropout, 9 were eliminated, and this is actually how we carried out. Again, this trial were at the time when the pandemic was there in Pakistan. So this was again a challenging trial, but we managed somehow. And what we observed after deblinding the study, when we decoded the study, so we discovered that the clinical efficacy of the Hathu-Jingweling tablet was 90.2%, while omeprazole tablet was 89.3%. So this shows that the Hathu-Jingweling tablet, which is in the Chinese market for 35 years, this have been used for the gastritis patient. So on Pakistani population, the impact is nearly equivalent to the omeprazole. And we didn't observe any statistical significance difference in the omeprazole, and that is what was the finding. This is some of the results. We again published these results in International Journal of High Repute. So this is then another clinical trial which we conducted on few Candian capsule. We compare this with the
again, doxycycline. This is an antibiotic mainly used in Pakistan to treat the pelvic inflammatory disease. And we carried out this clinical trial in collaboration with 3 hospitals in Karachi city. And in this case, the positive control was doxycycline, and the reference was doxycycline, and the treatment was that fucangen capsule. We got approval from all the regulatory bodies in Pakistan, and then we initiated the trial. 232 subjects were screened. 34 patients were disqualified at the time of screening. 198 patients received the treatment. 167 patients completed the study. And again, we carried out the safety evaluation. The safety, Kangen capsule turned out to be safe in Pakistani population. Because we didn't observe any significant difference between the two. So this was something. And we also publish the results of these clinical trials in an international journal of high repute. Again, if someone is interested, so the detailed results are presented in this publication. You know that after when we conducted a clinical trial on the Xinhua Gingan granule for the treatment of COVID-19 patients. So during the our clinical trial, what we observed in that clinical trial that this granule is not reducing the virus load. But this is quite effective to treat the upper respiratory tract disease. And that those results we published it, I presented to the Chinese pharmaceutical company who is manufacturing these granules. And then actually they carried out their own internal assessment in a Chinese population. And then they requested me that, the results which you is something very much new for the Qinghuan Gangan granules. So what we would like you to lead this clinical trial in China and Pakistan. And we want to that the half of the subject should be enrolled in Pakistan and half of the subject should be enrolled in China. So then I agreed to the suggestion, and we said that, okay, we need to now do a more systematic study in order to just establish that this Xinhua Gingan granule, this is a herbal product, is effective for the upper respiratory tract infection. And we selected like 271 patients were just assigned to Pakistan, and 271 patients were assigned to the Chinese. And in the China, they got a bit quick approval. But in Pakistan, we were just struggling to get approval, but we at last we got approval after 1 year time, and that then we initiated this clinical trial. The 271 patient, I visited China multiple times to complete that clinical trial there. So that is completed there. And recently, just a couple of weeks ago, we also completed a clinical trial on Pakistani population. So these are the results which just shows that that if you are conducting a clinical trial and clinical research, the results might lead you to something very nice, because in this case we were initially we were using these granules for the treatment of COVID-19 patient, but we discovered that actually it's not reducing the viral load, but it is providing very good symptomatic relief. And now the Chinese pharmaceutical company
is just conducting this, sponsoring this clinical trial, and would the Chinese FDA would just then registered this particular product for the treatment of upper respiratory tract infection. So that is that one can show that, and we got this these approvals, and the results are these are some of the results of this, and we will be presenting these details very soon. So this is what I wanted to just present here, that with the Unani medicines you can do the clinical trial. It is the one which we use for the traditional Chinese medicine. These are all herbal medicines. All the ingredient of these, since these are herbal medicines, so there are thousands of compounds in a single formulation. So it is very difficult to do the pharmacokinetic, but the pharmacodynamic can be done. The efficacy can be established, and that what we have shown with our clinical trials. That the effectiveness and the safety profile of the Unani medicines can be established with the help of the clinical trials, and that is what is actually needed, that we should have evidence. I just showed you one example, that the clinical trials which we conducted on the COVID-19 patient. That clinical trial, we were aiming to just reduce the viral load, because that particular Tsinghua Gingan granule were registered in 2009 for the treatment of H1N1 influenza virus. And that was one of the two products which were approved at that time by the WHO for the treatment of the COVID-19 patient. But during our clinical trial, we discovered that, okay, this is good, but yeah, it is not reducing the viral load. Thank The you very much, viral load Raza is the Saab. same. Thank you very much for your in-depth insight. Now we move forward to the next session. Mr. Amanullah Bismil, a prominent pioneer of natural therapeutics in Pakistan, Chief Executive BM Private Limited. Mr. Amanullah Bismil is well known for his contributions to herbal product development and quality systems. We welcome you on stage, sir, please. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum everyone. As I have already been introduced by the host, I am Amanullah Bismil, representing actually the homeopathic sector, industrial sector in Pakistan. And the topic today which I'm going to discuss, that is the standardization, quality control, and regulatory harmonization of homeopathic herbal medicines. That is the bridging traditional knowledge with modern drug system. Global importance of these herbal medicines. Herbal medicine remains basically a cornerstone of healthcare worldwide, yet industry faces critical challenges in quality and regulation. 80% global users or 200 billion market value. Three major challenges, that is lack of standardization, adulteration, and regulatory inconsistencies.
Increasing demand for the natural therapeutics and integrative medicine is driving the need for robust quality framework across the sector. Understanding homeopathic mother tincture. Yesterday, we have a lot of discussion on the homeopathic, on different herbal solutions, mother tinctures, herbal crude drug. But today, the topic is quite precisely, that is the homeopathic mother tinctures are primarily hydroalcoholic preparations derived from medicinal plants, manufactured in accordance with homeopathic pharmacopoeial standards. Fresh plant material, medicinal plants are carefully selected and harvested as the starting raw material. The quality, the authenticity, and the proper handling of the storage play a very critical role in ensuring the consistency, safety, and efficacy of the final mother tincture. Extraction process. The selected plant material is processed using maceration and percolation in the hydroalcoholic medium as per homeopathic pharmacopoeial guidelines. This method facilitates the extraction of bioactive constituents into the tincture base, forming a standardized mother tincture. Laboratory testing is another critical and important matter for the homeopathic mother tinctures. Is subjected to quality control analysis to ensure the compliance with homeopathic pharmacopoeial standards. Testing includes assessment of quality, purity, and consistency to ensure a reliable and standardized preparation. Final mother tincture product, the filtered mother tincture, is filled into the appropriate containers under the controlled conditions. It is now, as already explained by Dr. Tariq Arslan, that the controlled condition, controlled environment, GMP environment are very much important for the manufacturing of the herbal raw materials and herbal mother tinctures. Ensuring stability, consistency, and compliance with the pharmacopoeial requirements for the further dilution or therapeutic uses. Importance of standardization. Standardization ensures that each batch of homeopathic mother tincture consistently meets defined pharmacopoeial benchmarks for the identity, for purity, for potency, for safety, and for reproducibility. Without such controls, variations in plant sources, collection time, extraction parameters may lead to inconsistencies in quality and therapeutic reliabilities. इसकी मिसाल ऐसे समझी जा सकती है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छोटा सेक्टर है ये वाला, वर्ल्ड वाइड भी, ग्लोबली भी, बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रेगुलेटर्स, HPUS, HPCUS, ईमा भी होम्योपैथिक सेक्टर को कंट्रोल करता है, यूरोपियन यूनियन का भी एक सेक्टर कंट्रोल करता है, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया भी इसे कंट्रोल कर रहा है, HAB के नाम से कंट्रोल करता है, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया कंट्रोल करता है, उसकी डिफरेंट कमेटीज हैं, उन कमेटीज के अंदर भी फ्रॉम द पाकिस्तान सेक्टर वी ट्राई टू कंट्रीब्यूट विद देम. उसमें भी ये चीज़ें बड़ी ही डीपली डिस्कस होती हैं कि एक प्रोडक्ट है, एक हर्ब है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपने क्या अचीव किया, वो कब से पड़ी हुई है, वो कितनी देर से पड़ी है, उसका स्टेबिलिटी टाइम कितना था, उसकी लाइफ स्पैन कितनी थी, आपने 1000 किलो मंगा के स्टोर की हुई है और पता चला कि 8 महीने के बाद उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वैसे ही कुछ एवेपोरेट हो गए हैं, कुछ वैसे ही फारग हो गए हैं, उसके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, GMP गाइडलाइंस के अंदर क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई जिसके मुताबिक आप उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं. To identity confirmation of the correct plant species and the specific plant part as described in the homeopathic pharmacopoeia monographs, ensuring authenticity of the raw material used in preparation. Importance of standardization is purity, ensuring the absence of the contaminant, adulterant, heavy metals, pesticides, and foreign matter through controlled sourcing and quality testing of raw material and finished product. Potency, maintaining consistent level of active constituents within defined pharmacopoeial limits, ensuring that each batch delivers uniform therapeutic strength and effectiveness. Safety screening for the microbial contamination, toxic residues, and other harmful substances to ensure the preparation is safe for intended use and complies with the regulatory safety standards. Reproducibility is quite important for the regulatory point of view as well. एक बैच मार्केट में चला गया है, फिर रिप्रोड्यूस किया है, तो उस बैच की कंसिस्टेंसी पिछले बैच के साथ, स्टैंडर्ड के साथ,
जो फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स हैं, जो मोनोग्राफ के स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं, क्या वो उसके साथ कंसिस्टेंट भी है कि नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ रेगुलेटरी सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लीनियंसीज है, अभी कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं है, कोई टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स भी ऐसे, हमारी अपनी जो गवर्नमेंट ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं उनके पास भी कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स अभी नहीं है कि जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स, जैसे कि हम लोग जब वी मैन्युफैक्चर फॉर यूएस, वी मैन्युफैक्चर फॉर सम यूरोपियन कंट्रीज, तो वो अपने स्टैंडर्ड्स देते हैं हमें कि क्योंकि उनके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी हाई, लेबर इज वेरी हाई, प्रोडक्शन इज वेरी हाई। So we do some private label manufacturing for some US and Latin US and as well as some European countries. तो वहाँ पे वो जो standardized pharmacopoeias देते हैं और उसकी consistency अगले बैचेस के साथ बाकायदा तौर पे standardized testing होती है. And a company in Pakistan doing this herbal line homeopathic tincture business is very critical for us sometimes to maintain the standardization and all these parameters जो मैंने अभी discuss किए हैं. तो reproducibility is ensuring the batch-to-batch consistency in manufacturing through controlled processes. इस दफा आपने बैच बना के भेजा है क्रेटिकस ऑक्सीकंथा का या हाइड्रास्टिस का, तो उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका हार्वेस्टिंग पीरियड, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग एनालिसिस स्टैंडर्ड्स, जब वो बैच वहाँ पहुँचता है और वो उसको दोबारा से रीटेस्ट करते हैं, पता चला कि पिछले बैग का कलर कुछ और था, इस बैग का कलर ही बदल गया। हालांकि हर्बल मटेरियल के अंदर कलर वेरिएशंस की बहुत सारे मिसाइल्स हैं, एक बैग दूसरे बैग की कंसिस्टेंसी कलर के अंदर इज ए बिग क्वेश्चन एंड नॉट हियर इन आवर कंट्री, इज अ वर्ल्ड वाइड बिग क्वेश्चन. Secondly, through controlled process and the validated methods so that the every production cycle yields a uniform and reliable mother thing. Importance of the standardization, key parameters, botanical authentication, verify the correct botanical species. कैसे पता लगेगा कि ये species अब हमने यूज किया जी, आमतौर पे मार्केटों में हर्ब उठाई जाती है कि जी वो कोई पंजाबी नाम से उठा रहा है, कोई लोकल नेम से उठा रहा है, कोई इंग्लिश नेम से उठा रहा है। जैसे अभी डॉक्टर तारिक अरसलान ने इस बात का जिक्र किया गालिबन, तो उसके जो नेम्स हैं, जो स्टैंडर्डाइज नेम्स हैं, पर उसके बाद उसकी स्पीसीज हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करना मैं वही समझता हूँ, जैसे होम्योपैथिक में एक प्रोडक्ट है दैट इज कैंथेराइड्स, उसमें से ड्राइव होती है, दैट इज ए स्पेनिश फ्लाई. अ स्पेनिश फ्लाई इज नॉट ए वन स्पीसीज. अ स्पेनिश फ्लाई का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में ये है कि जी ये एक मक्खी है, जब गंदम उड़ती है तो उसके अंदर एक धारीदार मक्खी फिरती है, उसको पकड़ लो और उसको एक्सट्रैक्ट निकालो और उसमें से कैंसरस निकलती है. हमने उसको मंगवाया, कढ़ाया, टेस्ट कराए, पता लगा कि उसके अंदर शक्ल मिलती है, अंदर कुछ नहीं है, कैंथराइड है ही नहीं उसके अंदर. जबकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है जी कि कैंसरस का जब टिंचर निकलेगा उसका कलर डार्क ब्राउन होगा, इस तरह होगा, जबकि एक्चुअल स्पीसीज ऑफ द कैंथराइड इज ए ग्रीनिश कलर कैंथरस टिंचर, जो उसकी एक्सट्रैक्शन है. लेकिन कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है कि जी ये ब्राउनिश होता है जी और इसकी स्मेल इस तरह की होती है. तो ये चीज़ें बेसिकली इस तरह से नहीं है. इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी ऑथेंटिकेशन, उसके फिजियोकेमिकल एवेल्युएशन, उसके फाइटोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, दिस डज मैटर्स. जब तक ये चीज़ें रेगुलेटर की जानिब से इंडस्ट्रीज के ऊपर कोलैबोरेशन के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी, इंटेग्रेट नहीं होंगी, उस वक्त तक हम लोकल मार्केट को तो चला देंगे जैसे चल रही है, और आहिस्ता 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 हम बिल्कुल बुनियाद से उठ के एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में हम नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन पे लाजमी रेगुलेटर को उस तरह से चलना पड़े. और अभी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रिसेंट मेजर्स लिए हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, या जब हमें जीएमपी सर्टिफिकेट डिफरेंट कंट्रीज के इशू करते हैं, तो आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस है कि मैंने पिछले दिनों मुझे स्विट्जरलैंड के साथ हमारी एक नेगोशिएशन चल रही थी. वी आर गोइंग टू establish some mother tinctures and some impregnated globules for the Switzerland. And they said that we are not going to label manufacturing from BM Pakistan, which is basically animal tested product, or it is an animal touch product. We do need the vegan products. अब vegan product के लिए it took 1 year to be in Pakistan. कि स्विट्जरलैंड की कंपनी को 1920 से काम कर रही है, उन्होंने हमें इतने सबक पढ़ाए
1 साल के बाद हमने उनके ऑलमोस्ट कोई जितने टेस्ट थे हम 80% टेस्ट उनके क्वालिफाई कर गए एंड नाउ फाइनली एक इंटरनेशनल एजेंसी हमारा वैगन ऑडिट कर रही है जिसके को 40 पॉइंट्स हैं और 17 को बीएम पाकिस्तान का ऑडिट हो रहा है फॉर स्विट्जरलैंड पर्पस। और वो कोलैबोरेट स्विट्जरलैंड करवा रहा है ऑडिट कि आर देयर सिस्टम्स, आर देयर प्रोडक्शन लाइंस are really not contaminated with any animal product. Their production lines are really vegan, and then we will do the production. We will start production with BM Pakistan. फिर वो आगे उसकी लेबलिंग करेंगे। These are quite critical standards. एक पाकिस्तान जैसी कंपनी लेवल जो होम्योपैथी का पाकिस्तान में जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड लेवल, बट रेगुलेटर और जो कंपनीज हैं हमारे होम्योपैथिक सेक्टर की, फिर मैं उस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ अवर एसोसिएशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ बीएम पाकिस्तान, उसमें क्लोज कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमें बहुत सारी लर्निंग करनी है एंड द रेगुलेटर इज बेसिकली द ओनली सोर्स विद अस जिसकी लर्निंग से, जिसकी कोऑपरेशन से, जिसकी कोलैबोरेशन से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो मौजूदा हम कर रहे हैं इसको नॉट 10 टाइम, नॉट 20, इसको 100 टाइम में मल्टीप्लाई करा सकता हूँ once we are being provided the facilitations for different tests and standards. थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा सेक्टर है जो मदर टिंचर का है। जैसे तो एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, इक्विपमेंट लगा हुआ है उसके अंदर। तो रॉ मटेरियल ऑथेंटिकेशन के लिए वेरिफिकेशन ऑफ दी करेक्ट बोटेनिकल स्पीसीज, प्लांट पार्ट एंड रॉ मटेरियल। अब होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर एक और भी चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको प्लांट पूरे का पूरा ही उसके अंदर यूज होना है। एक चीज कहते हैं जी कि वो अभी सीजन नहीं है तो अभी इसके बेरीज नहीं आए हैं तो आप इसके पत्ते डाल दें और इसके एरियल्स डाल दें, तो इसकी बाग डाल दें, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दें तो आपके अंदर वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा बड़ा कॉमन है इंडस्ट्रीज के अंदर। इसलिए मेरी ये बड़ी हम्बल सबमिशन होगी, एंड में मैं एक सबमिशन पुटअप करूंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन is the most important, because this segment homeopathic mother tincture is not a mother tincture, it is the API. This is the homeopathic API कि जिसके ऊपर होम्योपैथी की तमाम जितनी भी चीजें हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर होना। जब हमारा API ही स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो आगे जितनी चीजों ने पोटेंटाइज होना है, डाइल्यूट होना है, अगली डोजेज फॉर्म में जाना है, वो कैसे स्टैंडर्डाइज हो सकती है जब हमारा बेसिक रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज नहीं। तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्ट बोटेनिकल स्पीसीज, बेरी है तो बेरी ही होनी चाहिए। अब बेरी है वो राइप चाहिए या अनराइप चाहिए, उसके लिए अगर मैं बेरीज जो है वो यूरोप से इंपोर्ट करके देखता हूँ तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके रिजल्ट, उसके टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। चाइना से मंगाता हूँ तो कुछ और निकलते हैं, पाकिस्तान से नॉर्दर्न एरिया से बेरीज इकट्ठी करता हूँ उसके डिफरेंट हैं। जैसे कि कल डॉक्टर साहब ने जो उस्ताद साहब के साथ बैठे हैं, सॉरी मैं नाम भूल गया, उन्होंने भी जिक्र किया कि हम अगर एक एरिया से सॉइल से जगह लेते हैं तो उसके कुछ और चीज़ें निकलती हैं, दूसरे से निकलते हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस तो आते हैं इसके अंदर, बट कंसिस्टेंसी, उसके रेगुलेटरी मामलात, उसकी ऑथेंटिकेशन और उसके टेस्ट एंड ट्रायल, दीज ऑल डज मैटर। कि जब तक आप बोटेनिकल स्पीसीज, प्लांट पार्ट, रॉ मटेरियल क्वालिटी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर नहीं करते उसकी ऑथेंटिसिटी को, और फार्माकोपियल कंप्लायंस नहीं होती अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइज्ड मोनोग्राफ ऑफ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया, तो वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं हो सकती। Secondly, a controlled manufacturing process, standardized maceration है, extraction है, filtration है, processing procedures है, performed according to the approved SOPs to ensure the consistent mother tincture and preparation। हमारे यहाँ, मैं क्योंकि अपने इंडस्ट्री के लेवल पे बात कर रहा हूँ इसलिए तो दूसरी इंडस्ट्री के दोस्त इसको बिल्कुल ना समझें, वो मेरे से बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, नॉलेज देने की ज़रूरत है। हम अपने लेवल वर्कशॉप्स करते रहते हैं। SOP doesn't means SOP to manufacture the product. SOP means the SOP तो फैक्ट्री में दाखिल होने की भी SOP, डिपार्टमेंट में जाने की SOP, माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाने की SOP और है, क्वालिटी कंट्रोल में जाने की और है, केमिस्ट्री लैब में जाने की और है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन लैब में जाने की, हर डिपार्टमेंट की अपनी SOP। सेम एज आपका पानी की टेस्टिंग है उसकी SOP, और सेम एज आपकी कोई क्लीनिंग है, किसी इक्विपमेंट के ऊपर आपका प्रोडक्ट चल रहा है
उसके बाद उसकी क्लीनिंग होनी है, उसकी एसओपी और प्रोडक्ट ने मैन्युफैक्चर होना है, उसकी एसओपी और। तो हर एसओपी शुड बी ए कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट। और जिस तरह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी 2026 के जो नए रूल्स को लेके आ रही है और उसके अंदर जिस तरीके से बल्क एक्सट्रैक्शन और दीगर टॉपिक्स को कल जैसे बुलदार साहब ने ब्रीफिंग दी थी, उसको मैंने रात काफ़ी जितनी स्टडी में कर सकता था मैंने की। दिस इज रियली 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 मार्वलस, एक्सेलेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने अभी बीन बजानी है और हमने उस बीन को अंडरस्टैंड करना है और हमें आपसे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट 3 है जी ऑर्गेनोलेप्टिक एंड फिजियोकेमिकल टेस्टिंग। ये गो के छोटे छोटे टेस्ट है ये वाले, कलर, ऑर्डर, क्लैरिटी, अल्कोहल कंटेंट और पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ड्राई रेजिड्यूज एंड अदर जो डिफाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। बट इट डज मैटर्स। अगर आपकी आज कलर कंसिस्टेंसी, ऑर्डर कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, अल्कोहल कंटेंट्स और जो चीजें हैं जो आपके रेजिड्यूज हैं वो नहीं मिलते और कल दूसरे बैच के अंदर कुछ और हो जाते हैं, तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी कहाँ रहेगी? आपके प्रोडक्ट तो कंसिस्टेंट है ही नहीं। Identification and chromatographic analysis, that is the chemical identification test and chromatographic fingerprints, that is TLC and HPTLC, are performed to verify the identity and characteristic profile of the mother finger. This is the most typical, most important in homeopathic segment. Homeopathic raw material, basic raw material is the mother tincture, mother solution. They have 4 or 5 kingdoms. The 80% kingdom of the homeopathic API is the herbs, जहां से ये ड्राइव होकर आगे चलती हैं। और उसकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर जब तक हम अपनी क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग और टीएलसी और एचपीटीएलसी से नहीं गुजरते, हम ऑथेंटिसिटी के अंदर जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। अगला है जी माइक्रोबियल एंड हैवी मैटर स्क्रीनिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी इंडस्ट्री में जो लोग मदर टिंक्चर्स बनाते हैं, जो हर्ब की स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज की भी एक कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट है। हर्ब को मैन्युफैक्चर करने के बाद जब तक आप उसके बैच को रिलीज करेंगे, रिलीज करने से पहले आप जब तक उसकी हैवी मेटल टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, माइक्रोबियल टेस्टिंग, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जी कि अगर अल्कोहल आपकी 30% है, 40% है, तो माइक्रोबियल टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है आपको। Whereas I believe to some extent, but जहां तक जिस किस्म का एनवायरनमेंट है, जिस किस्म की लोकल हर्ब्स हमें मिलती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें साथ लग के आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं ये समझ जी सही। तो इसको हमें लाजमी तौर के ऊपर ऐसे स्टैंडर्ड डेवलप करके देने हैं रेगुलेटरी की तरफ से। इन चीज़ों की तरफ खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो बेसिक एपीआई बनाती हैं, कम से कम उनके पास पूरी माइक्रोबायोलॉजी इक्विपमेंट लैब मुकम्मल हो, उनके पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, दीगर जितनी चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हैं वो मजबूत होनी चाहिए। आगे साइंटिफिक एग्जांपल है स्टैंडर्डाइज्ड मदर टिंक्चर्स की, जिसमें मैंने कैरेंडोला की, एक्टिनिशिया की, विनस्टीवा की दी है कि किस तरह से जो है इसके मार्कर कंपाउंड्स के जरिए से इसके आइडेंटिफिकेशन को होम्योपैथिक के अंदर रीजन टेस्टिंग के जरिए स्टैंडर्डाइज करके HPUS ने, HPCUS ने, यूरोपियन यूनियन ने और दीगर कंट्रीज ने बाकायदा तौर पर उसको स्टैंडर्डाइज किया है और हमारे यहाँ इसे रेगुलेट होने की जरूरत है। रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन है, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे मैंने बताया कि WHO गाइडलाइंस है, ईमा गाइडलाइंस हैं, FDA बोटेनिकल गाइडलाइंस हैं, आईओश है। और मेरी ड्राइव से भी ये गुजारिश है कि इंटरनेशनल अलाइनमेंट और क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस इस वक्त हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है फॉर आवर एक्सपोर्ट लाइन। Role of the WHO and international organization, WHO contribute traditional medicines strategy और homeopathic herbal monographs और GMP guidelines। और future direction जो है वो integration of traditional knowledge with the modern pharmacy, combining countries of the empirical evidence with the regional scientific methodology to build to global। जैसे कल काफी बातें होती रही हैं कि हम सीना बसीना इल्म में अभी तक चल रहे हैं और हम अपनी बुनियाद को उठा के हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को लाना नहीं चाहते, या लाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी मुनाफी हमारे पास ही रहे। तो इस तरह तो फिर हम ग्लोबली विनिंग पोजीशन में नहीं आ सकते, जिसे आने की जरूरत है। फ्यूचर होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन में एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी गुजारिश किया कि एडवांस बोटेनिकल ऑथेंटिकेशन और AI असिस्टेड क्वालिटी कंट्रोल्स और जो है वो मेटाबोलोमिक प्रोफाइलिंग और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है।
फ्यूचर ऑफ होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन में रिसर्च प्रायोरिटीज हैं, क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, फार्माकोविजिलेंस है और मल्टी सेंटर स्टडीज हैं, और कंक्लूजन में साइंटिफिक वैलिडेशन, जिसके लिए मैंने गुजारिश की करनी थी लास्ट लाइन तक 2-3 मिनट के लिए, कि जब तक हमारी ऑथेंटिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, टीएलसी, एचपीटीएलसी, फिंगरप्रिंटिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकोपियल कंप्लायंस, ये सारी चीजें जब तक इंटेग्रेट नहीं होंगी होम्योपैथिक बेसिक एपीआई रॉ मटेरियल मदर टिंचर के साथ, होम्योपैथी की इंडस्ट्री ने आगे उसकी बुनियाद पे अपनी एफिकेसी देंगी। वो एक ऐसा मेजर है कि दैट शुड बी स्ट्रिंजेंटली कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर। तो होम्योपैथी की इंडस्ट्री, होम्योपैथी की एक्सपोर्ट, होम्योपैथी की लोकल मार्केट 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो सकती है विद एक्सेप्टेबिलिटी। और आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, कि बीएम पाकिस्तान ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया पाकिस्तान पे 1997 में काम शुरू किया, और अभी तक बीएम पाकिस्तान ऑलमोस्ट कोई 620 के करीब मोनोग्राफ डेवलप कर चुका है, एंड दैट इज वेरी बिग डाटा। हम ये बिल्कुल क्लेम नहीं करते कि जो मोनोग्राफ हमने डेवलप किए हैं वो 110% बिल्कुल ठीक है, बट उसी बुनियाद के ऊपर हम अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज को हमारी एक्सपोर्ट जा रही हैं। आई एम रेडी टू सबमिट दैट डाटा टू द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि वो एक ऐसी कमेटी बनाए फॉर द होम्योपैथिक फार्माकोपिया पाकिस्तान के लिए, कि उस कमेटी की बुनियाद के ऊपर हम वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज, अपनी लेबोरेटरीज, अपने टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सब कुछ वॉलंटरीली मुहैया करने को तैयार है। कि जिस तरह दुनिया के फार्माकोपियाज हैं, अगर हमारा ये एक एफर्ट, एक मेहनत, एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया पाकिस्तान जिस तरह एक बहुत बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, हकीम सईद मरहूम का फार्माकोपिया एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है पूरी दुनिया में, उसको एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट को आपका स्टैंडर्ड, आपका रेगुलेटर, आपकी टीम वैल्यूएट करे। हम एज एज ए असिस्टेंट्स के तौर के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम तमाम स्टैंडर्ड रन करके, दिखा के, और उसके ऊपर वर्किंग करके उस डॉक्यूमेंट को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोवाइड हम करें, वो अपने नाम से छाप दे, ताकि उसके ऊपर भी एक छाप आए कि पाकिस्तान का अपना फार्माकोपिया भी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एनी क्वेश्चन लेटर ऑन प्लीज। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Bismil Saab, for highlighting a very important challenge faced by herbal manufacturing, that is standardization, ensuring consistent composition of quality. We appreciate your recommendation और हम चाहेंगे कि ये आप जरूर सबमिट करें और पैनल डिस्कशन में हम इसको जरूर हाईलाइट करेंगे। थैंक यू जी। Now moving forward, we are pleased to invite distinguished representative of Ashraf Laboratories, Faisalabad, to share perspectives on Pakistan's rich herbal medical heritage, Hakeem Mohammad Irfan Akram. You are welcome on stage, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। सदर ज़ी वक़ार, मेहमानान गिरामी, लाइके तकरीम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए ये अमर बाइस एज़ाज़ है कि मैं इस बावक़ार तकरीब में आपसे मुखातब होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मैं आपके सामने एक नहायत अहम और असरे हाज़िर के तकाज़ों से हमहंग मौजू पर इज़हार ख्याल करूँगा, जिसका अनवान है कदीम तिब्बी विरसा। अजीज दोस्तों,
कदीम तिब्बी विरसा से मुराद वो इल्मी, अमली और तजर्बाती तहकीकी सरमाया है जो मुख्तलिफ तहजीबों, अक़वाम और उलमा ने सदियों की तहकीक, मुशाहदे और तजर्बात के जरिए इंसानियत को अता किया। आज जदीद तिब इन्हीं कदीम बुनियादों पर सवार है। इस बार में दो आरा मुमकिन ही नहीं कि अहद जदीद के अमराज ने आज के इंसान के लिए अनगिनत खतरात, हैबतनाक खदशात और हौलनाक मिसाइल को जन्म दिया। अभी एक मर्द की संगीनी कम नहीं होती कि दूसरे मर्द की हलाकत अपनीयां मुंह खोले सामने आन खड़ी होती है। कभी एड्स अपनी तबाहकारियों फैलाता नजर आता है तो कभी हेपेटाइटिस की यलगार शिद्दत पजीर दिखाई देती है। बसा औकात डेंगू फीवर लोगों को निगलना शुरू कर देता है तो कभी स्वाइन फ्लू मुख्तलिफ ममालिक में अपने पंजे गाड़ने लगता है। अगर दियाबितस इंसानों को खोखला करने के दर पर होता है तो हाई ब्लड प्रेशर भी बर्बादी सेहत की अलामत बन जाता है। कभी जहनी दबाव से सेहत बर्बाद होने लगती है और माशरती बिगाड़ जन्म लेने लगता है तो दूसरी तरफ अमराज कल्ब से जिंदगियों के चिराग गुल होने लगते हैं। कभी कैंसर से होने वाली हलाकतें खौफ के साए दराज करने लगती हैं तो कभी गुर्दों के अवारदात इंसान को जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कर देते हैं। बाज़ औक़ात नफ्सियाती उलझने अलाम आज़ाम का सबब बनती हैं तो कभी माहौलियाती आलूदगी इंसानी मशीनरी अनगिनत मसाइल से दो चार होने लगती है और कभी वबाई अमराज जन्म लेते हैं तो वो कोरोना की तरह लाखों करोड़ों इंसानों को मौत से हमकिनार कर देते हैं। अजीज दोस्तों, इन अमराज और अवारिस से निजात के लिए जो इल्म और फन मार्ज वजूद में आया इसे इल्म तिब कहते हैं। इल्म तिब की तारीफ लुगत में कुछ यूं है कि जिस्म और नफ्स के इलाज को तिब कहते हैं, जबकि इस्लाही तारीफ इब्न सीना ये करते हैं कि ये वो इल्म है जिसके जरिए इंसानी बदन के अहवाल सेहत व मर्ज के एतबार से जाने जाते हैं ताकि हासिल शुदा सेहत की हिफाजत की जा सके और ज़ाहिर शुदा को वापस लौटाया जा सके। इल्म तिब ये इल्म अपनी अहमियत के एतबार से अलूम की सफ में दूसरे नंबर पर होने का सजावार है। इंसानी जिस्म रूह और मादे से अबारत है। रूह के तकाजों को जो इल्म पूरा करता है इल्म दीन कहलाता है, जबकि मादे के वजूद पजीर होने वाले जिस्म को दुरुस्त हालत में रखने के लिए जिस इल्म का किरदार बुनियादी नौइयत का होता है इसे इल्म तिब का नाम दिया जाता है। इसीलिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह का मशहूर मकूला है कि अल इल्मु इल्मानी, इल्मुल अदियानी व इल्मुल अब्दानी। इल्म दो ही हैं, एक अदियान का इल्म और दूसरा अब्दान का इल्म। दीन का इल्म इंसानी रूह की बालिदगी का एहतमाम करता है, इसे तरावत अता करता है, इंसान में मौजूद हैवानी जबिलतों को जेर दाम लाकर इसे इंसानियत के आला और अरफा मकाम पर फाइज करता है, इंसानी जिंदगी की मकसदियत और मानवियत को आश्कार करता है। जबकि इल्म तिब इंसानी जिस्म की सलाहियत व इस्तेदाद को परवान चढ़ाता है, इसे मतलूबा सतह पर बरकरार रखने में मुआवन है, इसकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होने वाले अवामल का सद्देबाब करता है, इस पर हमला आवर होने वाले अमराज के अजाला की तदबीर जाता है और इससे इसकी जायज शुदा सेहत को बहाल करने की राहें तराशता है। क्योंकि मेरा मौजूद तिब की विरसा है, तिब की इब्तिदा के बारे में कुछ थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। रूह बदन के मुरक्का इंसानी बदन के लिए रूहानियत किस कदर अहम थी, इसका अंदाजा इस अमर से लगा लीजिए कि तारीखी शवाहिद के मुताबिक इल्म तिब अपनी इब्तिदा में अंबिया के घरानों में परवान चढ़ा। तारीख तिब की एक मुस्लिम माखज और यूनुल अम्बा के तबकातुल अतिबा में इसके मुसन्नफ इब्ने अबी उत्तैबा लिखते हैं कि तिब को वजूद पजीर करने वाली पहली शख्सियत हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत तैश अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने फन बतौर वरासत अपने वालिद से हासिल किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की छठी नस्ल में हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी इसी किताब में ये लिखा है कि तारीख तिब पर गहरी नजर रखने वाली शख्सियात का ये कहना है कि हिकमत बतौर नबूवत हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजल की गई, जबकि मुख्तसर तारीखुल तिब अरबी में दक्तूर कमाल सामराई ने का कहना है कि माकबल तूफान नूह अलैहिस्सलाम से पहले की इतलाह मजहर है कि अल्लाह ताला के नबी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जो तिब में महारत के हामिल थे। असली व्यूज तारीखी तनाजर में एक और अहम शख्सियत असली व्यूज का नाम
से पहचानी जाती है। तजर्बाती तिब की बुनियाद रखने वाले ये पहले वाहिद फर्द हैं। इनसे पहले इल्म तिब को का माखज वही इल्हाम था। अल्लाह ताला का अता करदा इल्म ही अजाला मर्द और हसूल सेहत में मददगार था। और चूंकि पहली शख्सियात मकाम नबुव्वत पर फाइज थी या खानवादा नबुव्वत का हिस्सा थी, इसलिए इनकी बराह रास्त तालीम और तरबियत का इस्तेमाल अल्लाह ताला की तरफ से किया जाता था। असलीबियूस चूंकि खलात नबूवत से सरफराज न थे, इसलिए उन्होंने अपनी काविशों को हसूल तरवीज इल्म तिब की बुनियाद बनाया। अपने तजर्बात की असास पर इस फन को वुसअत दी। यह तजर्बाती तिब इस तकद्दस का भी अमीन थी जो पहली शख्सियात के इस फन से वाबस्तगी की बुनियाद पर इसे हासिल हुआ। क्योंकि असलीबियूस बराह रास्त हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, असलीबियूस ने तालीम तिब की इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया और अपने औलाद के अलावा करीबी रिश्तेदारों में से फिर 6 लोगों को इल्म तिब से आरास्ता किया। अजीज दोस्तों, हमारी तिब मुख्तलिफ तहजीबों में रही है, उस हवाले से कुछ थोड़ा सा बयान करूंगा। तिब की इब्तदा इंसानी नज़ुल अर्जी के साथ हुई। इसकी इब्तदाई कवायद इल्हामी इल्म पर मबनी है। बादज़ां ये तिब इंसानी तजर्बात और मुशाहदात के जरिए इर्तकाई मनाजिल तय करती हुई दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों तिब बाबिल, तिब मिस्र, तिब हिंद, तिब चीन, तिब फारस, तिब यूनान और तिब नबवी की शक्ल में कई सदियों तक आलमी उफक पर जगमगाती रही। अभी आपके सामने इनके मुख्तसर से इन अदवार की तफसीलात बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्तसर से तारफ इन अदवार का आपके सामने रखूंगा। तिब्ब बाबल बाबली तहजीब को पूरा अर्ज की कदीम तरीन तहजीब तस्लीम किया गया। इसके दरियाफ्त शुदा आसार से इल्म तिब में अहले बाबल की महारत और वसअत के इल्म आश्कार होती है। इल्म नबातात, कराबादीन और आलात दवासाजी के बारे में इनकी काविशों का पता चलता है। अहले बाबिल की एक कानूनी दस्तावेज शरिया हम्मुराबी कहलाती है। इसमें जहाँ दीगर शुबह हयात के बारे में कवानीन वज़ा किए गए, वहीं तिब्बी हवाले से भी कानून साजी की गई थी। हत्ता के मौलिद की फीस का तयन करने के लिए बनाया गया कानून इस दस्तावेज का हिस्सा है। तिब्बे मिस्र मिस्री तहजीब भी कदीम होने के नाते बाबली तहजीब के हम पल्ला करार दी जा सकती है, बल्कि बाद शवाहिद के मुताबिक इल्म तिब इसके हवाले से इसे ज्यादा कदीम होने का एजाज हासिल है। काबिल एतमाद कदीम मिस्री दस्तावेज को बुर्दियात का नाम दिया जाता है। इनकी रूह से 6000 साल कबल मसीह के एक बादशाह अतुसस ने इल्म तिब के बारे में एक किताब तालीफ की थी। बुर्दियात जैसी अहम तारीखी दस्तावेज इल्म तिब में अहले मिस्र के इल्म और मुख्तलिफ शोबाजात तिब में इनकी महारत से आगाह करती है। मिस्रियों को मुर्दा अजसाम को हनूर करने में भी महारत हासिल थी। तिब हिंद कदीम तहजीबों में हिंदी तहजीब भी अहम मुकाम हासिल है। तारीखी रवायात बतलाती हैं कि हिंदी तिब आयुर्वेदिक में मटीरिया मेडिका का तस्वर 4500 साल कबल मसीह मौजूद था। हिंदुओं की तमाम मुकद्दस कुतुब में तिब्बी मालूमात का तज़किरा पाया जाता है। यजुर्वेदा में 81 जबकि अथर्ववेदा में 290 तिब्बी नबातात के बारे में तफासील रकम है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक तबीब कारा का 500 जबकि तबीब 760 तिब्बी मुफरदात का इल्म रखते थे। हिंदुओं की क्लासिकल तिब्बी कुतुब में न सिर्फ मुफरद अद्विया का तज़किरा किया गया है, बल्कि इनके मुआलजाना ख्वास, इनके असूल इलाज, अद्वियात की तैयारी के तरीके, इनके अफ़ाल भी पर भी रोशनी डाली गई है। तकलीसुल अद्विया तिब्ब हिंदी का अहम इम्तियाज़ है। कुश्ता साजी का फन इनके हाथों परवान चढ़ा और मुख्तलिफ अशिया के कुश्ताजात तैयार करने के कई एक तरीके ईजाद किए गए। तिब्बत चीन तिब्बत चीन का आगाज तकरीबन 3000 साल कबल मसीह होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक को चीनी तिब का बानी करार दिया जाता है। इसने कवानीन सेहत को वजह किया। शहनशाह शीनन जैसे बाबाए तिब्बत चीन का लकब दिया जाता है। इसने अपने हम वतनों को खुद करदा तिब्बी मालूमात से भी आगाह किया। आकोपेंचर या सुइयों के जरिए इलाज का बानी शहनशाह है।
ठीक है, वक्त हमारे साथ नहीं दे रहा, मुख्तसर अब चलते हैं। तिब्बे यूनानी फन तिब का एक बहुत ही कह लें कि रोशन दौर है। तिब्बे नबी बिस्तत नबी के बाद आलमी इंसानियत ने तमाम शोबाए जिंदगी के साथ तिब के शोबे में भी एक अहम जैसी इनकलाब का मुशाहिदा किया। नबी आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बी मैदान में ऐसी बुनियादें और असूल वज़ा फरमाए जिन्होंने इस फन को देवी और देवताओं से हसूल शिफा जैसे बातिल अकायद और गुमराह कुन अफकार और नजरियात से पाक कर दिया। इस्लाम ने यह तसव्वुर दिया कि असल शाफी अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए शिफा भी पैदा फरमाई। इसलिए इलाज इख्तियार करना इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़रूरी है। तिब्बे नबी इंसान को यह सिखाती है कि अक्ल शर्म में इत्तदाल करो, सफाई और तहारत माहिर तबीब की तरफ रजू करना, मरीज और मर्ज के दवा की मुताबिकत का होना। अल्लाह ने हराम अशिया में शिफा नहीं रखी। प्रोग्राम तो आप था कि आपको कुछ तिब की विषय के बारे में तफसीलन आगाही दी जाए, लेकिन चूंकि वो टाइम बिल्कुल शार्ट है, बहुत बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है, तो मुख्तसरन अतिबा के नाम और उनके जो है उनका जिक्र करूंगा कि कदीम तिबी विरसा हमें जिन मुहस्ने तिब अतिबा इकराम से मिला, इनमें से चंद अजीम अतिबा का जिक्र करना चाहूँगा। बुकरात इसे बाबा तिब कहते हैं, क्योंकि ये वो आदमी है कि जिसने जिसने हमें क्या किया, जादू और टोनों से निकाल कर एक अ, असल तिब की तरफ रुझान दिया कि जादू और टूने को, जो बुकरात को बाबा तिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तिब को तोहमात और जादू और टोनों से अलग करने करके मुशाहदे, तजर्बे और अकल की बुनियाद पर इलाज का तरीका मुतारफ करवाया। बुकरात का ही मशहूर मकूला है कि हर मरीज का इलाज इसकी अपनी सरजमीन पर पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से किया जाता है। जालिनूस 200 कुतब के मुसन्निफ है। काफी इनकी एक बात आपको बताता हूँ कि जालिनूस के दौर में उन्होंने नबाती और हैवानी और मादनी अशिया पर मुश्तमिल 473 नुस्खाजात तरतीब किए। 473 नुस्खाजात जालिनूस ने तरतीब किया, यानी इतनी हजार साल पुरानी के नुस्खाजात चलते आ रहे हैं। जैसे तो ये हमारे बहुत माहिर यूनान के तिब्बा में से हैं, माहिर नबातात हैं, जिन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियों का जिक्र इनकी किताब है हशाइश में मौजूद है। अबुल कासम अल जहरावी बाबा जराहत इनको कहा जाता है। जराहत में इनकी खिदमत, जराहत की आज जो बुनियाद है, इन्हीं के ऊपर मबनी आज जो हमारी सामने इमारत है, उसकी बुनियाद रखने वाले अबुल कासम अल जहरावी ही हैं। वो अली सीना बाबा जदीद तिब इनको कहा जाता है। बहुत सारी खिदमत हैं इनकी। इनकी मशहूर किताब अल कानून फिल तिब सदियों तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही है। अब अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी माहिर अमराज अतफाल हैं, तो बच्चों के अमराज में इनके बहुत खिदमत हैं। इब्ने बेतार माहिर नबातात हैं। हुनैन बिन हिसाक मुसन्निफ हैं, बहुत सारी कुतब के मुसन्निफ हैं, बहुत सारी पुरानी कुतब को कम के मुतरजम हैं, उनका तर्जमा किया है ना। जाबर बिन हयान, इनको बाबा कीमिया कहा जाता है। जिस तरह बुकरात ने किया, इसी तरह जाबर बिन हयान का रोल है कि जाबर बिन हयान ने भी जो है इल्म कीमिया को जादू और तोहमात से निकालकर तजर्बाती और मुशाहदाती बुनियाद पर एक बाकायदा साइंस की शक्ल में सामने लाए। नहीं तो इससे पहले ये भी इसी तरह का था। ये चंद थोड़ा सा अतिफा की खिदमत आपके सामने रखी, तफसील से इस पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त क्योंकि कम है। तो मेरे अजीज साथियों, अतिफा कदीम ने तिब के मैदान में गरां कदर खिदमत अंजाम दी। इनकी तसानीफ सदियों तक दुनिया भर के तिब्बी अदारों में बतौर निसाब पढ़ाई जाती रही और जदीद तिब की बुनियादों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। आज के दौर में तिब्बे यूनानी अपनी फितरी और हमागीर खसूसियात की वजह से अहमियत रखती है। ये निज़ामी इलाज इंसान के मिजाज, तर्ज जिंदगी और गजाई आदात को मद्देनजर रखते हुए बीमारी के इलाज और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देता है। तिब्बे यूनानी में कुदरती अद्वियात, गजाई तदाबीर और एहतियाती असूलों को अहम मुकाम हासिल है। अतिबा कदीम के इल्मी खिदमात ने तिब के तरक्की की बुनियाद रखी, जबकि तिब यूनानी आज भी कुदरती इलाज, हिफ्ज़ान सेहत और मुतवाज़न जिंदगी के फ़रोग़ के बाइस अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं।
तिब्बे यूनानी की तरवीज और तरक्की दुखी इंसानियत के अमराज के अजाले में अहम किरदार अदा करेगी। दुनिया भर में भी इस वक्त फितरत और फितरती अद्वियात की तरफ रुजू का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपने तिब्बी माहिरीन की रहनुमाई में कायदाना किरदार अदा कर सकता है कि इसी वक्त मुमकिन होगा जब हम तिब्बी असूलों और मुबादियात की रोशनी में तिब्बी माहिरीन से इस्तेफादा करते हुए दर्ज झैल तजावीज़ को अमली शक्ल दें। ये कुछ तजावीज़ हैं, इसको जरा तवज्जो की मुझे दरकार होगी। हजार साल से मुफीद और मौसर तिब्बे यूनानी के तहफ़्फ़ुज़, बका, इर्तिक़ा के लिए दर्ज झैल इक़दाम ज़रूरी हैं। तिब की तालीम, प्रैक्टिस और दुआ को जदीद तकाज़ों से हमहंग करना ज़रूर किया जाए, लेकिन इस सारे अमल में तिब की फ़नी बुनियादों और फ़िलासफ़ी को न सिर्फ मद्देनज़र रखा जाए, बल्कि इसे ही तरजीह दी जाए। इस सारे अमल को तिब्बे यूनानी और इसकी दवासात के माहिरीन की निगरानी में सर अंजाम दिया जाए। तिब्बी दवासाजी के लिए कवानीन की तश्कील में तिब्बी माहिरीन को बुनियादी किरदार सौंपा जाए। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर तिब्बी तालीम और तरबियत, इसकी सनत दवासाजी और मुतबादल तरीका इलाज के फ़रोग़ के लिए हमसाया मुल्क की वजारत आविश की तरह एक वजारत कायम की जाए, जिससे मुल्की मसला सेहत को हल करने में मुतबादल तरीका इलाज अपना मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। ये बेहतरीन अंदाज में तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। इनसे हम हमारे हम वतनों को अपने मिजाज से हम आहंग तरीका इलाज से इल्ज़ामों में मुयस्सर आ सकेगा। दरामदी अद्वियात पर हमारा इन्हसार कम होगा, जिससे मुल्की ज़र मुबादला बचा पाएंगे। अद्वियात की बरामद के जरिए मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला के हसूल का जरिया बनेंगे। ये चंद गुजारिशात थी आपके सामने, और ये कदीम तिब्बी विरसा आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हमारे असलाफ की ये मेहनत है, हमारे असलाफ, हमारे अकाबर की ये मेहनत है कि जिस पर ये बुनियाद फराहम की, जिस पर मुख्तलिफ इमारतें खड़ी हैं। लेकिन हमें उन असलाफ को न तो भूलना चाहिए और ना ही उन असलाफ के जो बुनियादें हैं उनको दाएं बाएं करना चाहिए। उन्हीं बुनियादों पर आगे चलना चाहिए कि उसने हमारी सिर्फ क्या जो असल रूह क्या है, कि उसकी फिलासफी, उसकी बुनियादें, असल रूह वो है। साइंस से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमारी बुनियादों को दाएं बाएं करेंगे तो सिस्टम सारा के सारा दाएं बाएं हो जाएगा। अल्लाह पाक खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम मोहम्मद इरफान अकरम साहब। We are now pleased to welcome Professor Dr. Atiyatul Wahab from International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi. Professor Atiya is a distinguished researcher whose work has contributed significantly to molecular medicine, drug discovery, and natural product research in Pakistan. Welcome, Dr. Atiyatul Wahab. Assalamu alaikum and very good morning, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank Coordinator General Comstech, Professor Muhammad Iqbal Chaudhry. He's my teacher and mentor as well, for invitation to attend and deliver lecture in this conference. I'm also very grateful to Dr. Abdul Rashid for accommodating me in the program. So today I would like to present our research work
that has been done under the mentorship of Professor Iqbal Chaudhry, which is related to development of dietary herbal health supplement for the treatment and management of Parkinson's disease. The worldwide burden of Parkinson's disease is quite increasing, and men are actually more prone to develop Parkinson's disease as compared to women. And overall, you could see in this statistics that till 2040, the population that will be affecting all over the world with Parkinson's disease will be 12.9 million. And in 1990, it was only 2.6 million. So it's a gradual increasing because of the aging population as well. And there are many other criteria that mainly the aging, that since people have more lifespan, and with the slowly and gradually, with the increasing lifespan, they are developing different neurological disorders. So the key objectives of this study was to develop the neuroprotective and dietary herbal health supplement. And Professor Iqbal Chaudhry actually guided us that we need to develop something which is acceptable for everyone. And we need to find out something that we are taking in our diet on the regular basis. So it will be easier for patients to accept it, and definitely it won't have that much, won't have the side effects. So this was the main thought that he gave to us. And it was Searle Company, which is the main sponsor of this company, of this study. And then the Higher Education Commission also provides some funding for the work. Here is the signs and symptom of the Parkinson's disease. There are some motor symptoms and some are non-motor symptoms that slowly and gradually is being developed within the Parkinson patient. Among the motor symptoms, resting tremor, bradykinesia, muscular rigidity, postural instability, depression, and non-motor symptoms, depression, anxiety, disturbed sleep, and olfactory dysfunctions. And L-DOPA is is the one that is being given for the management of the disease. And the medicine which is available for this, I'm sorry. Okay, so this is levodopa and carbidopa, which is the main medicine that is being given for the treatment and management of the disease. And in Parkinson patient, because of the dopamine level stability, and that is actually connected with the substantia nigra. And this actually helps for some time, for few hours, for the patient to control the movement, unintentional movement of the body symptoms, and also help them to walk and perform their life a relatively better way. And here there are the treatment options for the Parkinson disease. That is, as I told you, levodopa, carbidopa, and then restorative, for example, aerobic exercises and maintenance of vitamin D3 level, and surgery is also recommended. And but here there is no cure of the disease, as yesterday Professor Iqbal was mentioning in his speech, that there is no cure of the disease. More than 90%, we are just trying to manage. So this is the overall plan of work that
we have done, we have done it's preclinical trials and also the analysis and standardization. And we have developed the dietary health supplement. So here, the development of the model that has the Parkinson is, since the Parkinson is not a disease for rats, so we have to give a substance that can develop. So we have selected rotenone-induced model, and like human has a different Parkinson score, so rats also have the Parkinson score. Here you could see the score 1 is the one in which they start leaking, and the piloerection, the fur turned yellow and dirty, and the mobility becomes decreased. And score 2, above all these indications, they have tremor started and slow motion and gait instability. Score 4, above all these, they have worsened gait instability, and rats could not walk straight and rotating towards one side. Score 6, which above all these criteria, they have lay obliquely on one side, or either showed unilateral forelimb or hind limb paralysis, and very difficult in walking. And score 8 is complete unilateral forelimb or hind limb paralysis, and limb spasm, rapid weight loss, inability to eat, and score 10 is the death. So these are the scoring, which is being, like human also has the scoring criteria. So these are also the scoring criteria of rat. And so Cenemet, so we have done the in vivo studies, not on, first we have developed the model, and we have the control rats, and in which we did not give anything, and only the disease model. And then we have the treatment model with the available drugs, which is levodopa, carbidopa, Cenemet, which is available. And this is the formula that we have used to calculate the animal equivalent dose from the human equivalent dose. And here you could see these in the human equivalent dose, and then the animal equivalent dose is being calculated from using the formula that I have shown you. And so this is the result of the standard Cenemet, which was given, and you could see starting from score 8, which is a very worsened condition. And as a matter of fact, the rats cannot eat and drink water at all in score 8. So we have to feed them, we have to give them water to, and then this Cenemet actually, the overall result of it shows 56% improvement in the behavioral symptom using the drug. And here is the disease control. So in this one, there is no medicine is being given, and we have observed that about not much improvement in the PD symptom, because we would like to see if the rat himself is recovering from the disease or not. So we found out that most of the rats has not recovered, and but definitely few rats have been recovered, but they go up to the score 2, but they cannot go further. So and here, this is the herbal health supplement that we have selected, and after the lots of literature search and studies, that initial studies, and that we have done. And these are the list of the medicine plant that has been selected from Allium sativum, Prunus, Arachis, Solanum, Vitis, Eugenia, Vigna, Curcuma, Camilla, and Mucuna species. And here, these are the results of herbal health supplement from score 8. We could see there is 16 rats, because when we develop this disease, if we induce 100 rats,
for rotenone, so we get their induction rate only 30 to 40%, and sometimes 20% also. So the remaining rats does not develop any symptoms. So we have to select for different scoring based on the which has some PD symptom developed. So the induction rate is very low in this whole study. So you could see here that score rate has been about 10 were dead, and there are 1 rat goes to score 4 and 5 goes to score 2, which is really improvement here, because score 8 is really worse condition, and score 6 about 9 9 actually rats has gone there, and then it's score 2, which is about here. I would like to, and then there are other supplements also, which I was known that I have to give 20 minutes. So that is still okay. All right, so there are another different herbal health supplement that we have developed, and then we have checked individual components as well on the Parkinson rat model. And these are individual component studies that we have done. And then we also checked ethanolic extract improvement. And we found that the ethanolic extract doesn't have that much good impact as compared to the herbal health supplement that we have made. And so these again, we would like to, Professor Iqbal and Professor Shinman Liu has guided us that it would be better that instead of 10 plants, we need to reduce to 5 to 6 plants. So we have checked individually to remove those which are less significant, and we checked on each individual to individual on the in vivo test, and then we find out that we have reduced it up to 6 plants that has very good impact, and and definitely number one, and these are already patented, US patented and Pakistani patent we have already obtained. So there are different combinations that I'm showing you here. Number 1, number 2, number 3, we have given different number of herbal health supplement that we have checked a number of herbal supplements in our studies, in vivo studies, and these are the results. And then we also checked the traditional Chinese medicine in our study, and we made some combination of Chinese medicine plants that we obtained from China. Professor Shinman Liu has sent this to us, and then we find out they are also quite improvement, about 41%, but not as good as the herbal as the supplement that we have prepared. And this one also is good, like 66% improvement. So, and then we have checked not only this behavioral study that we have done, but also checked the dopaminergic level also. So we have isolated the serotonin, and then checked the 2 important neurotransmitter, that dopamine and 5-HT, in normal control and pathological control, and the most prominent herbal health supplement that we prepare. So you could see here the dopamine level in normal control is about 6,460, and in pathological group it's is reduced to half. And then the treatment with DHS 1 and 8 all give very good level improvement in the dopamine level, and similarly 5-HT level is these 2 herbal health supplement give a very much improved 5-HT level. So these are the preparation of herbal health supplement 1 and number 8. And we also we have made different type of biscuits, powder, fiber smoothie, honey pills, etc. So this we were trying to what else we can do and how to make
the product to bring it to the market. And these are the Pakistani and US patent. And I would like first to thank my supervisor, my teacher, and this all work is being done under his guidance. He has provided all the brain thoughts and everything. And we were, I would say that he is, mashallah, he started thinking, working on the Parkinson, and he asked us that we have to go to the clinical trial level also. And I was surprised that we haven't done this. And he said, we have to do it. And then he guided us in each and every step. Not only this, there are many other scientific projects that he's been guiding us, but this all work is being done under his supervision. These were the projects run by Professor Iqbal Chaudhry. And at the end, I just like to show a small few seconds video of 8 and score number 8 and 6 and how they are improved. Can you please show them? All right. So here you could see this is before treatment, one of the rat in score 8. So looking at this, so this is, you could see that it's not moving at all, and is the same rat. You know, I will show after the treatment how this rat is being improved. So this is not able to walk and drink or anything the rat can do. And this is the same rat, the video I would show after the treatment of the same rat that you could see here after treatment. So this is the same rat after treatment. So you could see the impact of this herbal health supplement. And another video, which is score 6 before treatment, I would like to show here. So this is the before treatment. And yeah, just a few seconds. So this is the piloerection and the movement of the rat, and not able to walk properly. And this one is after treatment that you could see of the same rat after treatment. So is much improved walking, and so this shows actually very good improvement of the herbal health supplement that has been developed under the supervision of Professor Iqbal Chaudhry. Thank you so much. Thank you so much, Atiya Wahab, for sharing your research. Now we break for tea, and we will reconvene after 20 minutes. Thank you. President, National Council for TIP, Hakim Mohammad Ahmed Salimi, is a prominent advocate of Unani medicine in Pakistan. We are pleased to have him here with us. We welcome you on stage, sir. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब का और कॉमस्टेक की तमाम इंतज़ामिया का, जिन्होंने इतना एक फ्रूटफुल सेशन का इनेकाद किया और इसमें नेशनल काउंसिल फॉर तिब की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे उन्होंने मौका दिया। मौजू तो इंटीग्रेशन है और मैं ये सोच रहा था कि बहुत अच्छा ये सेशन है और हम सिस्टम की इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। एक सिर्फ सोचने का एक मौका प्रोवाइड करना चाहता हूँ। क्या ये इंटीग्रेशन जो एक ही सिस्टम के मुख्तलिफ इदारे हैं,
क्या उनमें भी होनी चाहिए? और फिर मैं आखिर में अपने कंक्लूजन और तजावीज़ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। नेशनल काउंसिल फॉर तिब एक बॉडी कॉर्पोरेट है और ये UAH एक्ट 1965 के तहत काम कर रही है। और इसके मौजूदा जो इंतजामिया जिसमें प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी मैं हूँ, और मेरे साथ हकीम सिराजुद्दीन चांडियो ये वाइस प्रेसिडेंट है, और रजिस्ट्रार हमारे डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल है। हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब की जो इसके मेंबर्स हैं 22 मेंबर्स होते हैं, और इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी और फेडरल की इसमें इलेक्शन और नॉमिनेशन दोनों तरह की नुमाइंदगी होती है इसमें जी। आज हमारा जो असल टॉपिक है वो इंटीग्रेशन, और इसमें WHO बेसिकली उसकी स्ट्रेटजी क्या है इस हवाले से, वो क्या कहता है। बुनियादी तौर पर ये हमारा ज़ाहिर है कि हमने अक़वाम आलम के साथ सफ़र करना है, और उसमें WHO वो एक फोरम है जो इसके हवाले से हमें रहनुमाई प्रोवाइड करता है। उसकी रोशनी में पहले देखते हैं कि WHO क्या कहता है कि उसमें जो ट्रांजिशन है ये जो कंटेम्प्रेरी मेडिकल मॉडल इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क की तरफ जो हमें शिफ्ट होने के लिए वो खास तौर पर हिदायत देता है। तो इसलिए जो कोर ड्राइवर्स हैं ये इसमें बुनियादी तौर पर वो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसका जो बर्डन है और वो तेजी से जो बढ़ रहा है, और इसके अलावा जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा जो इलाज के हवाले से और पेशेंट की डिमांड इस हवाले से, वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए WHO कहता है कि आप इंटीग्रेट करें जो आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। WHO जो स्ट्रेटेजिक स्टांस है वो जो अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो माइलस्टोन है उसको अचीव करना है, तो उसके लिए भी जरूरी करार देता है WHO कि अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में हम इसको इंटीग्रेट करें। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है जी, इसमें जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी है ये हमें इस वाले से रहनुमाई प्रोवाइड करती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए, और उसके लिए वो जो 4 इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये एविडेंस बेस्ड हो, कि ये जो स्ट्रेंथन द एविडेंस बेस फॉर PCIM थ्रू डेडिकेटेड रिसोर्सेज एलोकेशन और रेगुलेशन, इसके लिए भी मुख्तलिफ दीगर डॉक्टर अमान बिस्मिल ने भी बात की थी, और रेगुलेशन बेसिकली इसके लिए जो बुनियादी जरूरत है, और इंटीग्रेट सेफ TCIM इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम एंड एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज पैकेज, और क्रॉस सेक्टर वैल्यू जो है ऑप्टिमाइज क्रॉस सेक्टर वैल्यू इंश्योरिंग इकोलॉजिकल सस्टेबिलिटी एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। IPCH और ये जो इंटीग्रेटेड पीपल सेंटर्ड हेल्थ सर्विसेज जो हैं ये मई 2016 में जो WHO की जो फंडामेंटली रिडिफाइंड द ग्लोबल हेल्थ केयर डिलीवरी विद द adoption of the framework of integrated people centered health services at the World Health Assembly in May 2016, तो उसके वाले से भी ये WHO में असल में ये चीज़ें ज़ाहिर है कि लोगों को आम दस्तियाब भी हैं, सिर्फ इसका एक रेफरेंस देकर मैं अपने नुक्ते की तरफ आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे भी एक पर्ची आए और कहीं जी आपके 20 मिनट पूरे हो गए हैं, तो मैं अपना नुक्ता उस तरफ फोकस करना चाहूँगा जी। ये मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली UNGA का जो 1978 का आलमाता है, और 2018 में आस्ताना डिक्लेरेशन है, और UNGA रेजोल्यूशन 74(2) और 78(4), इन सब में इस बात पर जो ख़ास तौर पर फोकस किया गया और हिदायत जारी की गई कि जो मेंबर ममालिक हैं वो अपने अगर हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, और जो प्राइमरी लेवल पर ख़ास तौर पर अगर मसाइल सेहत को हल करना है तो ख़ास तौर पर इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने जो आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को। तो ये तमाम जो डिक्लेरेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की हैं वो बाइंडिंग हैं, बाइंडिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, ये एडवाइजरी ओपिनियन, तो इस बात को भी मद्देनजर रखना इंतहाई जरूरी है सारे मामला। की मैसेज जो है, मोर देन 88% ऑफ WHO मेंबर स्टेट्स रिपोर्ट द यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। ये तकरीबन अक्सर स्लाइड्स में इस किस्म का फिगर शेयर किया जाता है, और ये जो फिगर्स हैं सारे
ये जो क्रॉस चेक किए जा सकते हैं और इसका रेफरेंस भी हमारे मौजूद है यहाँ। तो ये WHO इंटीग्रेशन वर्ल्ड फोरम मकाओ 2016, ये भी एक जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है, कन्वीन्ड इन जुलाई 2016 इन मकाओ, China, under the theme integration, innovation and promotion for better healthcare, making a transition from conceptual advocacy to on the ground implementation. कि अब सिर्फ बातों में ना रहा जाए और सिर्फ गौर फिक्र की हद तक ही ना रह जाए, बल्कि हदायत ही जारी ना की जाए, बल्कि इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होती नजर भी आनी चाहिए। तो इसके लिए जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव तय की गए, रिव्यूड द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2014-2023 की जो स्ट्रेटजी थी, एंड प्रोटाइज्ड कंक्रीट इंटीग्रेशन वर्क इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम फॉर दी 2016-2017 बाइनियम। जो ये 2 साल जो मनसूबा तरतीब दिएगा उसमें ये बात हिदायत की गई। Strategic role of Macau, leverage Macau's unique position as a multilateral platform for Macau, acting as a bridge between China and Portuguese-speaking countries, deeply aligning with international economic frameworks. इसमें 4 मॉडल जो पेश किए गए, इसमें पीपल लेड इंटीग्रेशन है कि ये ड्रिवन इंटायरली बाय पेशेंट चॉइस इज एन अनरेगुलेटेड मार्केट, पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली नेविगेट बिटवीन एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड ट्रेडिशनल हीलर्स विद जीरो स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन। ये एक है जो लोगों की चॉइस पर छोड़ दिया गया। और दूसरा जो मॉडल है वो प्रैक्टिशनर लेड इंटीग्रेशन है कि वो ग्रास रूट इनफॉर्मल कोलैबोरेशन वेयर इंडिविजुअल एलोपैथिक एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर बिल्ड पर्सनल प्रोफेशनल नेटवर्क्स, कि ये आप जाती जो इसमें जो नेटवर्क्स है उसको वो कायम करें और उसके हवाले से वो एंड शेयर्ड रेफरल पाथवेज विदाउट अ टॉप डाउन मैंडेट, जो एक मुश्किल सूरत हाल है मौजूदा हालात में, मगर ये है कि ये एक मॉडल ये भी रखा गया। कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेशन ये एक बेहतर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वेयर द स्टेट एक्टिवली इंटरवीन्स, regulates both sector, establishes formal referral pathways, sets standardized educational qualification while keeping system distinct. ये बेसिकली तो गवर्नमेंट लेवल के करने का काम है कि ये कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेशन का जो मॉडल है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इसके लिए डेफिनेटली रेगुलेशन होनी चाहिए। ड्रैप की बात भी हुई, जिसमें हमने सबको साथ लेकर चलना। पहले ड्रग्स की बात की जाती थी तो सिर्फ ये था कि वो एक फार्मा सेक्टर के लिए जो कवानीन और मामलात हैं। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से ड्रैप के आने के बाद ये सूरत हाल अच्छी हुई, बेहतर हुई कि अब हमारे यूनानी सेक्टर और होम्यो सेक्टर को भी इसमें बाकायदा रेगुलेट किया जा रहा है। और इसी मॉडल को एक बात इसमें हेल्थ केयर कमीशन जो है वो कायम हो चुके हैं जो प्रैक्टिस को देखते हैं, मगर मसला ये है कि वहां पे भी जो इंटीग्रेशन जो WHO भी कह रहा है, जो जरूरत भी है दुनिया भर में इसका वो खास इस पे एहतमाम भी किया जा रहा है, मगर हमारे यहाँ इस इंटीग्रेशन को जो इतना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे हमारे हुक्मा की जहाँ पे होम्योपैथ की वहाँ पे ऑलरेडी BHQ THQ वगैरह में ऑलरेडी सीट्स थी, वहाँ पे जो वो साथ बैठ के एक सिस्टम था कि वो अगर पेशेंट चाहे तो वो उनसे रब्ता करे, तो वो सीटें भी खत्म की जा रही है। हेल्थ केयर कमीशन भी इसको डिस्करेज करता है कि वो आप डुअल जो प्रैक्टिस है वो अपना की जाए। तो जबकि WHO जो कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए कि वो पहले तो मरीज की चॉइस पर हो कि मरीज जिससे इलाज कराना चाहता है। पाकिस्तान में लाहौर में जुबली टाउन में एक इंडस हॉस्पिटल वहां पे कायम हुआ और वहां पे ये एक मॉडल उसका एक आप समझ लें कि एक आपके सामने आया मॉडल आया जिसमें नेचुरल मेडिसिन सिस्टम यूनानी मेडिसिन सिस्टम के क्लिनिक्स बनाए गए हैं और वहां पे एलोपैथी के क्लिनिक्स भी हैं। तो वहां देखा यह गया कि 11 के करीब क्लिनिक्स हैं जो यूनानी मेडिसिन के हैं। इंडस हॉस्पिटल में जो 550 बेड का हॉस्पिटल है और बहुत ही जो आला मेयार का हॉस्पिटल है लाहौर में, और वहां पे हमने देखा कि जो पेशेंट की रेशियो है वो उनको चॉइस है, आप काउंटर पे जाएगा पेशेंट और वो उसकी चॉइस है कि वो अगर नेचुरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर से इलाज करवाना है तो वो उसकी पर्ची बनवाएगा, और अगर उसने एलोपैथिक के पास जाना है, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो उसके पास जाएगा। तो वहां पे ये नोट किया गया कि इस मॉडल में
लोगों की 50% से ज्यादा जो रेशियो है डेली, वो नेचुरल मेडिसिन सिस्टम को प्रेफर कर रही है, और वहाँ पे जो यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं वो ज्यादा इसके हवाले से वो उनको इलाज मुआवजा की सहूलियात मुहैया की जा रही है। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान में। और मेरी इस फोरम के तवसत से भी रिक्वेस्ट है कि जो आला जो जिम्मेदारान है वो इस बात पर गौर फरमाए, और जो इंडस हॉस्पिटल का मॉडल है इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी। और इससे यकीनन जो टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम में जो बोझ है बहुत ज्यादा, WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसे भी काम करने में काफी हेल्प होगी। ये चौथा है जो सबसे जो ब्लेंडेड इंटीग्रेशन है, ये द अल्टीमेट अपेक्स गोल वेयर कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, workforces, diagnostic tools, and therapeutics entirely synthesized into a single model, indistinguishable at the point of care. ये आइडियल सिस्टम है कि इसको आप इंटीग्रेशन का जो ये मॉडल है, दोनों को मिला दीजिए और मिल के इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें। अगरचे बहुत ज्यादा दूरियां हैं, मगर कुछ भी अगर नीयत साफ हो और नीयत इंसानियत की भलाई हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो, इंसानियत की भलाई हो और उम्मा की सरबुलंदी हो, तो फिर इंशाल्लाह ये कोई बात मुश्किल नहीं रहती। ये जो इंटीग्रेशन डिलीवर्स वैल्यू अक्रॉस एवरी स्टेक होल्डर डायमेंशन है, ये पेशेंट्स के लिए कि ये होलिस्टिक क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, रूट कॉज नॉट सिम्टम्स, कि ये असल रूट कॉज को एड्रेस किया जाए, सिर्फ अलामात का इलाज ना किया जाए। अगरचे होम्योपैथिक सिस्टम बिल्कुल अलामात की बात करता है, मगर वो अल्टीमेटली उसका भी वो असल इलाज की तरफ ही बात जारी होती है। कल्चरली रेजोनेट केयर, हायर एडहेरेंस एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन, प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल टूल्स, डाइट, रेजिमेंटल थेरापी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल टूल्स जो आजकल हमारे मिनिस्टर जो हैं जनाब मुस्तफा कमाल कालवत शरीफ की लाइफ, वो अपनी हर जगह पे अपनी स्पीचेस में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने मरीज को इलाज की बात करनी है, उसको सिर्फ मेडिसिन पे नहीं लगाना। तो इलाज तो ये है कि उससे मेडिसिन से पाक किया जाए, ना कि मेडिसिन पे लगाया जाए। तो उस पे ये यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो है ये बेहतरीन एक लाइफस्टाइल जो मेडिकेशन का सूरत मुहैया कर सकता है। फाइनेंशियल रिलीफ सारे जानते हैं कि अगर आप अपने रवायती तरीका इलाज से रिलाय करते हैं और इन जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात पर आते हैं, तो डेफिनेटली ये जो फाइनेंशियल रिलीफ है वो भी आज के इस महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ा रिलीफ आप मुहैया करते हैं एक पेशेंट को। इकोनॉमी के हवाले से देखें तो ग्लोबल ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री मार्केट ये 213.81 बिलियन 2025 तक का ये जो है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी, और स्टिमुलेट्स डोमेस्टिक मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, reduces pharmaceutical import dependency, save foreign exchange। ये हम डेफिनेटली हमारे यहाँ अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो अभी बहुत सारा हमारा जो रिलाय हम करते हैं जो इंपोर्ट पर करते हैं, तो अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट करें तो इसकी भी बचत होगी और फिर उसके अगेंस्ट डेफिनेटली बहुत सारी हमारा जो सरमाया बचेगा। WHO एविडेंस ये बड़ी बस कि अगर आप ₹1 प्रिवेंशन पे खर्च करते हैं तो इसके अगेंस्ट आपको 400 यानी 100 रुपया अगर खर्च हैं तो 400 से 700 रुपया उसके अगेंस्ट आपकी बचत होती है। तो ये जो इस फार्मूले के तहत भी ये एक अच्छा फार्मूला बनता है। गवर्नमेंट के करने के लिए क्या है जी, एक्सपैंड प्राइमरी हेल्थ केयर कैपेसिटी विदाउट डिकेड्स ऑफ मेडिकल कॉलेज इन्वेस्टमेंट। और ये आपने जो एग्जिस्टिंग आपके तिबिया कॉलेजेस हैं, होम्यो कॉलेजेस हैं, उससे जो तबीब और होम्योपैथ निकल रहे हैं उनको अगर आप नेशनल हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं तो आप बहुत सारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो फौरी तौर पर उसकी वो कमी एक कमी होगी कि आपको बहुत ज्यादा उस नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बजाय जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको यूज किया जाए और उसमें उनकी सर्विसेज को जो है ना वो इस्तेमाल में लाया जाए। 80,000 से ज्यादा जो यूनानी नेशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं इनको फॉर्मुलाइज किया जाए और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और WHO की कमिटमेंट्स हैं स्ट्रेंथन हेल्थ डिप्लोमेसी, ये उसको ये स्ट्रॉन्ग करने किया जाएगा और रिगरस
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी, और ये पब्लिक सेफ्टी की तरफ भी एक कदम होगा। और हेल्थ कवरेज की बात करें तो ब्रिजेस द रूरल अर्बन एक्सेस गैप, हकीम ऑलरेडी इन अंडर सर्व्ड एरियाज। ये हमारी बहुत सालों से बात की जा रही है, चीमा साहब भी तशरीफ रखते हैं, इरफान शाहिद साहब भी, कि हम अक्सर बात करते हैं कि वो, और ये तमाम जो हमारे पॉलिसी साज हैं सबको पता है कि हमारा जो MBBS डॉक्टर है वो क्वालिफाई करने के बाद जो दूर दराज रूरल एरियाज हैं वहां पे जाकर प्रैक्टिस करने की बजाय बड़े शहरों में क्लिनिक्स बनाकर प्रैक्टिस करने को तरजीह देते हैं। और इसीलिए तमाम तर हंड्रेड्स की तादाद में मेडिकल कॉलेज बनने के बावजूद और 1000 की तादाद में डॉक्टर्स के होने के बावजूद आज भी जो हमारे दूर दराज दही इलाके हैं वहां पे वो सेहत की सहूलियात या उस तरह के मुआलज दस्तियाब नहीं है। इस कमी को भी आप अगर अपने जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो होम्योपैथ हैं, उनको अगर आप नेशनल हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बना दें तो ये कमी भी पूरी की जा सकती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा, ये गवर्नमेंट के लिए अपनी एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन टू वुल्नरेबल पॉपुलेशन, डेफिनेटली जिस तरह हमारी आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है उस हवाले से भी ये एक बेहतरीन प्रोटेक्शन मुहैया होती है। और कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग फॉर लो इनकम फैमिलीज, डेफिनेटली हम यही बात कर रहे हैं बार बार। और मोस्ट pragmatic pathway to universal health coverage, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हवाले से भी ये एक बेहतरीन मॉडल बनता है। ये एक वो जायजे हैं जो WHO के हमें वेबसाइट से मिलते हैं कि जी 80% जो आबादी है जो वो इसमें वर्ल्ड पब्लिक यूजेस इस्तेमाल करती है नेचुरल मेडिसिन को, और 88% जो है ना वो मेंबर स्टेट ऑफिशियली एक्नॉलेज, 88% एक्नॉलेज करते हैं इस मेडिसिन सिस्टम को। और 70% ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एज प्राइमरी हेल्थ केयर। और 170 प्लस जो कंट्रीज हैं हमारे WHO के जो मेंबर स्टेट्स हैं वहां पे ये इसका जो ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है ना वो रिपोर्ट हो गए। ये ग्लोबल बर्डन, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है इसका जो बर्डन आप देखते हैं, ये जिसकी वजह से पूरी दुनिया के माहिरीन और आलमी इदारा सेहत भी इस तरफ मुतवज्जो हुआ। देखें कितना कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रेशो देखें कि 86.1% और कैंसर 24.4, और ये सारे वो जो WHO के वेबसाइट से और मुख्तलिफ जगहों से हमें ये मिलते हैं, मुख्तलिफ जायजे और ये स्टैटिस्टिक्स जो मिलती है हमें उस वाले से बात की जा रही है। ये अगर यही शरह रही तो आज अगर 2000 में 31 मिलियन जो है ना वो डॉलर अगर इसका जो बर्डन था, डेथ थी 31 मिलियन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डेथ बेस्ड ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्टेटस, तो ये 2030 तक 52 मिलियन तक पहुंच सकती है जी। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है और इस तरफ हमें तवज्जो देनी बहुत जरूरी है जी। पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है ये भी आप देखें तो ये दी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग 63% एनुअली, कंप्राइजिंग मेनली CVDs 48%, कैंसर 21, और ये सारा कुछ। Nearly 80% of all NCDs death occur in low and middle income countries, as these are responsible for 58% of all death in Pakistan. 58% जो अमवात होती है पाकिस्तान में उसकी बड़ी वजह ये NCDs है, और जिसपे हम अपनी अगर हम जो यूनानी सिस्टम है, होम्योपैथिक सिस्टम है, और प्राइमरी लेवल पर अगर हम एजुकेट करना शुरू करें, वहां पे उनको एक्सेस दें इलाज मुआवजे की, तो इस बर्डन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। आगे उसका जो मुख्तलिफ हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज और डायबिटीज वगैरह के जो इस वक्त डायबिटीज का सेकंड मोस्ट कॉमन जो है ना NCD विद नेशनल प्रिवेलेंस एस्टिमेट्स रेंजिंग फ्रॉम 11 to 14.6%। और ये बहुत ज्यादा आप समझे कि ये इसका जो ज्यादा जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें 68.8% ऑफ द वर्ल्ड ओवरवेट और ओबीज, 37% सफर्ड फ्रॉम प्री हाइपरटेंशन, और इस तरह ये दिगर आप देख रहे हैं। ये मैं अपनी स्लाइड्स इसमें सिर्फ आपको एक दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों ने आयुष की बात की, इंडिया में अपने इंटीग्रेट किया जा रहा है और बहुत ज्यादा इसमें
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, वहाँ पे CCRUM वहाँ पे बन चुकी है और बहुत सारा काम इस पे हो चुका है। और हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस ये इस तरह वो कायम हो चुके हैं और वहाँ पे बाकायदा इक्वली लेके चला जा रहा है दोनों कंटेम्प्रेरी हेल्थ केयर सिस्टम को और इंटीग्रेटेड जो हेल्थ सिस्टम है दोनों को साथ साथ लेके चला जा रहा है। और अब इस वक्त हमारे पाकिस्तान के तमाम जो अल्टरनेटिव मेडिसिन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनकी इस वक्त मेन मुतालबा ये है कि जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इंडिया में, इस तरह जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो मिनिस्ट्री है ये पाकिस्तान में ये एक कायम की जाए ताकि इसको बाकायदा फोकस किया जा सके और इसको इंटीग्रेशन के वाले से जो सॉलिड इक़दाम आए उसमें किए जा सके। चाइना, आप देखते हैं हम आजकल चाइना क्योंकि हिमालय से बुलंद हमारी दोस्ती है तो इसी दोस्ती को ही सबक बनाएं और जो चाइना ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कर रहा है वो हमें पाकिस्तान में भी करना चाहिए। और मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल ये सब लोग जो ममालिक हैं, इवन के स्विट्जरलैंड, US, ऑस्ट्रेलिया, उन सब के जो आप चेक कर सकते हैं। और उसमें मैं टाइम की कमी की वजह से इन चीज़ों को सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी किस तरह इस इंटीग्रेशन की जा रही है मैस्टोन सिस्टम के साथ। ये वो एक आपके सामने एक पैराग्राफ एक है कि कौन से मुल्क में हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के इस्तेमाल की शरह, देखिए चाइना 90% तक है और इंडिया में 77% है। अब देखिए तमाम जापान, मैक्सिको और सारे ममालिक इसमें मौजूद हैं जहाँ पे ये जो नेचुरल मेडिसिन सिस्टम है या ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वहाँ पे राइज है बाकायदा। तो प्रॉब्लम क्या है, रेगुलेटरी गैप एंड लीगल फ्रेगमेंटेशन, ये हमने बात की और इसकी असल में जरूरत है कि कोई क्रॉस रेफरल बिटवीन यूनानी एंड एलोपैथिक प्रैक्टिशनर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है हमारे यहाँ फॉर्मल। और इसको अगर गवर्नमेंट की सतह पर रेगुलेटरी बुनियादों पर इसको हल किया जाए और दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका दिया जाए, करीब करने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ बड़े अजीब मामला, हम नॉर्म्स में रह रहे हैं। हमारे यहाँ ये इस फोरम पर शायद ये बात करनी अजीब सी लगे कि जब मेडिकल डॉक्टर किसी एजुकेशन के लिए एडमिट होते हैं मेडिकल कॉलेज में तो डे फर्स्ट से उनको असातिज़ा यही बता रहे होते हैं कि ये जो मरीज आपके पास आ रहे हैं ये जिगर इसलिए इनका खराब हुआ है कि इन्होंने कोई देसी दवाई खाई होगी, कोई होम्योपैथिक का इलाज किया होगा, इनके गुर्दे इसलिए खराब हो रहे हैं कि इन्होंने देसी दवाई खाई होगी, कोई होम्योपैथिक इलाज, इसलिए जोड़ों के मसाइल। ये शुरू से बच्चों को पॉइजन किया जाता है। जब वो डॉक्टर बनते हैं तो वो फिर बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के, और आज तक मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए, चौथी नस्ल में खुद तबीब हूँ, मैंने नहीं देखा इस तरह का मामला। और अगर इसके अगेंस्ट देखें तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं जिसकी बिना पर अगर ये मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए, मैं डरता हूँ इस बात से कि अगर ट्रेडिशनल नॉलेज यही दूसरी तरफ बात करे कि पोस्ट ऑपरेटिव हलाकतें, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स और स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट और पेन किलर्स के साइड इफेक्ट और इनका ज्यादा इस्तेमाल से जो नुकसानात होते हैं, तो ये जो एक गलत रवश है इसको खत्म करने की जरूरत है और तीनों तरीका इलाज के मौलवीन को इकट्ठे बैठने की जरूरत है। और बस एक मिनट और चाहिए। ये सारी चीजें जी, इसमें आप रिसर्च एंड एविडेंस बेस, इसके लिए हम कौन से ने क्या किया वो आखिर में बताता हूँ सिर्फ। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी हमने बात करनी चाहिए कि इसमें जो हम आपस में मिलकर काम करें जी। और ये हमने एक NCT के लेवल पर, ये जिस तरह MBBS में एडमिशन के लिए प्री मेडिकल, FSC प्री मेडिकल है, तो हमने यूनानी मेडिसिन के जो हमने ग्रेजुएट बनने के लिए हमने एक स्कीम ऑफ स्टडी अप्रूव करवाई और एक इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें इंटरमीडिएट जो 12 साल की एजुकेशन उसमें बाकायदा यूनानी मेडिसिन को शामिल कर दिया और फेडरल बोर्ड के वो एग्जाम देकर वो BEMS के 5 साल एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक नई एक यहाँ पे है कि वो उसे जो 11th ईयर से ही उसकी एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाए इस सिस्टम के वाले से। और हमने CPD प्रोग्राम वगैरह मुख्तलिफ किए। और मैं जो चीज़ आपके साथ, हमने नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने अपना पाकिस्तान जर्नल ऑफ यूनानी मेडिसिन ये लॉन्च कर दिया है, इसका एक शुमारा आ चुका है। वो इंशाल्लाह हम इसको रेगुलर करने जा रहे हैं और 2-3 शुमारों के बाद जो इसकी स्टेटस है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक चीज जो हमने रिसर्च कोलैबोरेशन रेगुलेशन 2026 हमने मुतारफ करे, इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा इरफान शाह साहब का, इनकी बड़ी हमें सपोर्ट रही। ये बुनियादी तौर पर ये जो एक ट्राइपार्टाइट जो एक फार्मूला है जिसमें इंडस्ट्री है, एकेडमी है और काउंसिल, ये तीनों मिलकर इस रिसर्च के मामलात को
आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे BEMS 5 साल कोर्स करने के बाद जो MPhil और PhD करते हैं स्कॉलर, उनके लिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसकी सपोर्ट के लिए अगर इंडस्ट्री सपोर्ट करे तो ये मिलकर एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम फ्यूचर में एक रिसर्च बेस्ड आप चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड सिर्फ ये है कि इसमें कोरिलेशन जो ह्यूमन रिसोर्स करेक्शन है, हेल्थ वर्कफोर्स में इंटीग्रेट किया जाए, पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेशन है, जितने भी गवर्नमेंट के जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे तीनों तरीका इलाज को इक्वल मौका दिया जाए और मिल बैठे ताकि हम इंसानियत की भलाई के लिए काम कर सकें और बीमारियों का खात्मा और जो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मिलकर काम कर सकें। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और रिसर्च के वजह मैंने सर्च की कि वो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं और इसमें और भी जरूरत है, इसमें गवर्नमेंट की सरपरस्ती। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Salimi Saab, for emphasizing the strengthening of the coordinated healthcare systems and integration of Herbal into modern healthcare system. बहुत shukriya. Now moving forward, we are pleased to welcome Mr. Farooq Sarwar Sahab, Director Business Development at Herbal, Pakistan, leading advocate for the growth and internationalization of Pakistan's herbal medicine sector. Thank you, sir. Nature, a gift for us all. Based on expertise, tradition, and passion, it was in 1983 that the rich legacy of Herbal Naturals began. The firm started small with a clear goal in mind: develop natural solutions to facilitate healthier lives by providing innovative and quality products which are globally accessible and universally affordable. Traditional remedies have long taken advantage of natural ingredients, focusing on the earth's bountiful plants and herbs. And the practice continues today in modern medicine. This is where nature meets science. Certified by PICS, GMP Russia, our facilities host state-of-the-art automated manufacturing units, from extracts, syrups and lozenges to ointments and powders. Our enterprise has constantly strived to address consumer needs. We have chosen to target multiple markets while staying true to our vision. Quality is an integral pillar of Herbal. Using the most advanced technology and employing highly qualified personnel, we place the utmost importance on research and development, creating new products by studying natural ingredients, emerging active pharmaceutical ingredients, API, and drug delivery systems. Committed to protecting the environment and fulfilling our corporate social responsibilities to present and future generations, we strive to adhere to sustainable practices at Herbal. Our in-house incinerator ensures that we do not contribute to harmful pollution or have any detrimental effects on human health. The herbs used in production at Herbal are responsibly recycled through an efficient step-by-step process. Our state-of-the-art machines categorically separate the waste, which is then loaded on a waste disposal truck to be taken to a local farm, where it is then used for fertilization. That's not all. Each day, Herbal's teams strategize innovative ways to better the environment and minimize our footprint. A cleaner world means a better world. With its prestigious global certifications, Herbal prides itself on its reach. 1,500 employees, over 20 countries, 3 continents, and offices across the globe. Household
household brand names like Linkus, Insti, Verona, and Bontegar have achieved top-of-the-line status due to their proven safety and efficacy. Our products are available across shelves of some of the biggest retailers. Besides our established herbal formulations, we have quickly expanded into areas such as allopathic medicines, nutraceuticals, dietary supplements, personal care, and household consumer products, all while keeping an eye on global trends. This is just the beginning. Come join us as we stay inspired, become leaders locally and internationally, and take one step forward towards improving global healthcare. Good morning, esteemed faculty members, representatives from Drug Regulatory Authority, international delegates, industry partners, and my dear students. Today, we stand at a critical crossroads where ancient therapeutic wisdom meets modern biomedical science. The traditional medicine sector has historically operated parallel to conventional pharmaceuticals. However, to unlock its true clinical and economic potential, we must bridge this gap. Over the next 20 minutes, I will outline a strategic framework focused on evidence-based validation, global regulatory harmonization, and a unified collaborative model. Our goal today is to establish how we can collectively elevate our local herbal sector into a globally recognized, scientifically verified powerhouse. Let us first ground our scientific ambitions in commercial reality. The global herbal medicine market is no longer a niche alternative sector. It is currently valued at an impressive $271.14 billion US dollars. And it is aggressively expanding at a compound annual growth rate of 8.37%, on track to hit over $515 billion US dollars by 2034. When we look at the regional breakdown, Europe commands over 44% of this market because they have successfully standardized their products, earning deep consumer trust. Meanwhile, Asia is the fastest growing hub. The global consumer is actively demanding preventive health and natural alternatives with fewer side effects. For our manufacturers and regulators in the room, this represents a massive export opportunity. But to capture a piece of this multi-billion-dollar pie, we cannot rely on unverified claims. We must deliver premium, standardized, and globally compliant products. Just to show you Pakistan herbal export opportunity metrics. If you look at the regions, European Union has a market size of 6.2 billion US dollars and an annual growth rate of 6.5% per year. GCC countries have market share of 1.8 billion dollars with an annual growth rate of 9.2% per year. CIS market has a market size of 2.4 billion US dollars, an annual growth rate of 8.8% per year. ASEAN region
has a market size of 5.1 billion US dollars with an annual growth rate of 10.3% per year, which is really impressive. North America has a market size of 9.8 billion US dollars with an annual growth rate of 7.1%, and South Asia stands at the bottom with 1.2 billion US dollar market, and annual growth is 12.1%, 12% almost. If you look at the last column, Herbion is in all these markets, in all these regions. What is the Pakistan's competitive advantage in herbal medicine? Number one, biodiversity capital. We have 600 plus medicinal plant species. Cost competitive manufacturing. Production costs 30 to 40% below European Union standards. Strategic geography. Pakistan sits at the nexus of South Asia, Central Asia, Middle East, and China. And finally, academic and R&D base. We have institutions like HEG Research Institute, DCSIR, and NUS pharmaceutical programs are developing a pipeline of phytochemical researchers and quality professionals. Ladies and gentlemen, Pakistan has set its export target of 1.2 billion by 2030. Well, I think it has a lot of room for improvement. Why evidence-based herbal medicines matter? There are 4 straightforward reasons. Number one, safety and risk reduction. Detects contamination, adulteration, and interactions. Protecting patients and supporting pharmacovigilance. Number two, quality and consistency. Standardization of active constituents reduces variability between batches and seasons. Number three, regulatory acceptance. Robust data packages increase chances for approvals and broader market access. And finally, clinical credibility. Clinical and mechanistic evidence builds physician and consumer trust. How do we achieve this? It begins with evidence-based development. We must shift the paradigm from it has been used from centuries to here is the data that proves it works safely. This process starts in the lab with high throughput screening and in vitro and in vivo toxicity profiling to clearly map out the mechanism of action. But the real challenge lies in clinical trial design. Conventional trials are built for a single chemical entity, one molecule. Herbal medicines, however, are complex multi-component matrices. We need innovative, adaptive, randomized controlled trials that can evaluate these synergistic effects without compromising scientific rigor. By systematically documenting pharmacokinetics and herb-drug interaction, we provide conventional doctors with the objective safety metrics they need to confidently prescribe these treatments. Research and product development workflow. Excuse me. Modern R&D integrates botanical knowledge with analytical, preclinical, and clinical science to create reproducible, efficacious products. It has 5 major components. It starts with plant sourcing, followed by extraction, standardization, preclinical studies, and clinical evaluation. This end-to-end workflow emphasizes authentication, reproducible analytics, and evidence generation to support claims and regulatory dossiers.
Moving from ethnobotany to a shelf-ready product requires strict chemical and physical consistency. Phytochemical standardization is non-negotiable. We must utilize advanced tools like SPLC and LCMS to fingerprint our extracts, ensuring every single batch contains the exact same active biomarkers. Furthermore, we must modernize how these medicines are delivered. Traditional powders and fruit syrups often suffer from poor bioavailability. By researching advanced delivery systems like nanoemulsions and phytosomes, we can significantly enhance how the body absorbs these natural active ingredients. Finally, R&D fails if our raw materials are compromised. We must enforce Good Agriculture and Collection Practices, GACP, right at the farm level to ensure our herbs are free from heavy metals, pesticides, and adulteration from day one. Regulatory harmonization, the case for alignment. Regulatory fragmentation increases costs and complicates global launches. Harmonization streamlines documentation, testing methods, and post-market surveillance. Country-specific classifications create uncertainty. Divergent pharmacopoeial monographs and analytical requirements slow approvals. Stronger international pharmacovigilance systems improve safety signals across borders. Leveraging WHO guidance, harmonized monographs, and mutual recognition approaches can reduce barriers and strengthen patient protection. GMP compliance in herbal manufacturing. Ladies and gentlemen, GMP compliance in herbal manufacturing is rather challenging. It has four major components or pillars. Number one, raw material control. That includes botanical identification, certificate of analysis, and supplier qualification. Number two, traceability and supply chain. Batch tracking from harvest through finished product to enable recalls and audits. Number three, process cleaning and validation. Validated extracts, cross-contamination controls, and cleaning procedures. Finally, data integrity in QC labs. It ensures secure records, validated analytical methods, and deviation management. Adopting GMP is both regulatory and commercial. It reduces variability and unlocks export opportunity. This brings us to our regulators and quality assurance professionals. To build a robust export pipeline, local regulatory frameworks must align with global bodies like WHO, the European Medicines Agency, and ASEAN. Compliance with Good Manufacturing Practices or GMP is our absolute baseline. For many manufacturers, this means upgrading facility layouts. We must ensure a strict physical segregation between the initial raw botanical processing areas, where dirt and microbes are naturally present, and the final primary packaging lines. Whenever QA systems guarantee batch-to-batch reproducibility, and whenever registration files compiled in international formats like Common Technical Document, our regulatory bottlenecks disappear and international borders open up seamlessly. Modernizing traditional medicine system. To modernize traditional medicine system,
we must start from preservation and improvement. Digitize formulations, document traditional clinical experience, and translate into standardized dosage form, followed by digital records, centralized repositories for formulations, usage patterns, and safety reports. Then the scientific validation is a must, analytical verification and targeted clinical studies to support traditional claims. Pharmacovigilance integrates adverse event reporting into national systems for continuous safety monitoring. Dear audience, modernization does not mean discarding our heritage. It means empowering it with 21st century tools. By employing bioinformatics and artificial intelligence, we can rapidly scan classical pharmacopoeias to predict which herbal combinations will successfully target modern diseases. We can also employ reverse pharmacology. Instead of spending a decade discovering a molecule in a lab, we start with documented, safe human use and work backwards to understand its chemistry. This fast tracks our research timelines and dramatically lowers development costs. Ultimately, this modernization embeds validated herbal solutions directly into our mainstream national healthcare infrastructure, replacing consumer skepticism with complete scientific transparency. Industry, academia, regulator collaboration. Cross-sector partnerships accelerate translation of research into compliant products and build regulatory literacy within industry. We suggest shared research, joint studies reduce duplication, and pool resources for larger clinical trials. Policy and training, regulatory training programs, and industry secondments build mutual understanding. Shared infrastructure, centralized analytical labs, and reference materials lower barriers for small and medium enterprises. It is extremely difficult for any single entity to achieve this transformation alone. We must establish a dynamic triple helix model of collaboration. First, our academic institutions must stop researching in isolation. Universities need to align their laboratories with the commercial realities of the market, acting as the R&D engine for the local industry. Second, the industry must set up and fund these translation research projects, providing the capital and manufacturing scale needed to bring university discoveries to life. Third, our regulators must act as enablers. We need predictable guidance pathways and pre-submission consultation desks to guide collaborative innovation safely and quickly through approval pipeline. Here, we propose the creation of a joint permanent task force comprising all three sectors to continuously steer our policy, standards, and market data sharing. Future direction and strategic priorities. Future direction and strategic priorities are very clear. Number one is innovation. We must resort to AI-driven formulation design, green extraction, and personalized herbal approaches. We should address capacity building, GMP training, laboratory accreditation, and workforce development. And finally, regulatory readiness.
adopt harmonized standards, invest in pharmacovigilance, and use internationally recognized monograph. Countries and companies that invest in research infrastructure, traceable supply chains, and regulatory alignment will lead market growth and public trust. Conclusion and call to action. The key takeaways from my today's talk are evidence-based development, GMP compliance, regulatory harmonization, and cross-sector collaboration are essential to scale safe, effective herbal medicines globally. Our next step should be to invest in shared analytical and clinical infrastructure, develop harmonized dosages aligned with WHO and pharmacopoeial standards, and launch multi-stakeholder training and pharmacovigilance initiatives. Together, we can transform herbal medicines into globally trusted, scientifically validated healthcare solutions. To conclude, our roadmap forward is clear. We must collectively choose quality over low-cost production. Stripping out quality to save on overhead will only lock us out of global market and erode public trust. When science validates our products, when clear regulations protect their consumers, and when industry efficiently commercializes these discoveries, we create an unbeatable healthcare ecosystem. Let us commit today to draft a unified national herbal development roadmap backed up by dedicated research funding. Thank you for your time, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Server, for a wonderful presentation regarding evidence-based development of herbal medicine. Moving forward, Dr. Khizr Abbas, joining us online from the UK, Associate Professor, Bahauddin Zikria University. Dr. Abbas will present his research related to PCOS and Dalbergia Siso. Welcome, Dr. Khizr Abbas. आप लोग इस नाम से किधर जा KIZER वो पेज कराओ तो ना आप ये किधर बोल रहे हैं आप किधर बोल रहे हैं I think there is some connection. इसमें होल्ड करो जरा ऐसा बोलें SSA आगे बोलें TY yes बस जाने की पड़ी हाँ हो गए
डॉक्टर आज Are you listening me? Yes, we can hear you. You can continue. Okay. Thank you, Dr. Abdul Rashid and Chairman Comstech, Dr. Iqbal Chaudhary, for giving the opportunity to present my research here. I am a postdoctoral researcher nowadays on a fellowship of HEC in the UCA University College of Pharmacy, working on the nanomedicine of nature products. But this research work was carried out in Pakistan in Bahauddin Zakir University, Multan, the University, city of Saint. Usually, the contents of my presentations, and if we come to the introduction of that, you know that PCOS is a common hormonal disorders of the reproductive age of the women's. Usually it impact on the menstruation, fertility, hormones, and physical appearance or attitude of the woman. Usually what happens to these, there is an increased level of androgens, normal or raised level of estrogens, increased secretions of luteinizing hormones, irregular or absent menstruation. If we see that, then what happens to the causes of these reasons? They may be the uncontrolled ovary synthesis, steroid angiogenesis, genetic factors, most common cause that is physical inactivity in the woman at the reproductive age, alteration in the secretion of the gonadotropin-releasing hormones. Due to the physical inactivity and other reasons, there is a development of insulin resistance. And due to that reasons, there is the chance of obesity as other cause and chronic inflammation. Basically, this chronic inflammation is the major cause of many other diseases also that leads to the problems. What the symptoms usually appears in the physical appearance, there may be the acne, there may be the hirsutism, there may be the baldness, there may be the eye skin, discoloration, complete absence of menstruation, sometimes menstruation delays for more than 35 days. Heavy bleeding sometimes excessive follicles formed in the ovary and enlarged ovary size that contains more than 10 millimeter volume in that. This is the alarming situation regarding the Pakistan and world that WHO's data says that approximately 10 to 13% of the women of the reproductive age facing this problem. And up to major important is that 70% of the women with the PCOS worldwide does not know whether they have a PCOS or not. When we come to the Pakistan point of view, then the situation is very worse. Due to many reasons, approximately study says that 18 to 50% of the population in the Pakistan facing the PCOS, but this data based on the population studies and the diagnostic criteria used because there was no authenticated data still available in Pakistan to authenticate how much it is, because the population in the cities, they have less prevalence as compared to the villages. Then, when these women have a PCOS, they have many problems like that of lung health issues, physical and emotional well-beings, like they may develop the gestational diabetes, they may have high blood pressure if they conceive, weight gain, usually around the bellies, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, metabolic problems, and most importantly is the endometrial cancer that develop in the women with the PCOS. Due to that reason, many of the commercial medicines available, but they have the similar type of the side effects that leads to the problems with that. Our theme was to use the nature medicines that are in the common practices in the villages to validate the claim of the traditional practitioners for the treatment of the PCOS.
So one of the component of the traditional medicine that was using by the traditional practice, that was the Derbagia Sisu. Usually we called them as shisham tree in the local language, and they were using two parts of this, leaves and flowers. When we know the chemistry of this, they may contains the phenolics compounds, flavonoids, and alkaloids and tannins. But this is commonly used in the traditional medicines for the treatment of this PCOS. Our aims and objective was to determine the extraction, how it is to be performed, their phenolic and flavonoid contents, antioxidant potential, different enzymes inhibitory potentials, and in vivo study. For this, usually we have performed different types, mean phenolic contents was determined by the Foreign-Cohen methods, flavonoid contents by the aluminum chloride method, antioxidant activity by the DPPH method, anti-diabetic potential by alpha glucosidase and amylase potentials, hypoepidemic activity by the lipase inhibitory assay, anti-inflammatory activity by the lipase activity, lipoxygenase, and in vivo study that we use the letrozole to induce the PCOs in the animals, and then we give the different concentrations of our extract, usually at different doses, to see what are the variations are they observed. Purpose to find out these different parameters in vitro was either these are effective or not. Then we have to go for the in vivo studies. So we have found that the leaves contains highest concentration of phenolic compounds as compared to the flowers. Like that of flavonoid contents, they were much more. And antioxidanty in the DPPH method, it was no doubt less than the standard one, but more in the leaves were there. And in the similar way, in the enzyme inhibition assay of alpha amylase and glucosidase, we have found out that approximately leaves were more than the standard acarbose as compared that was we are using the as a standard drug. And in a similar way, when we go to the lipase activity for the hypoepidemic potential, leaves contains comparative activity as compared to standard drug that we use orlistat. And in the anti-inflammatory potential, we find out that it was less as compared to question, but they contains. Purpose of these two, I have again told you that to validate the causes of the PCOS, that was basically with the obesity, inflammation, and stress, and these are. When we go to the antioxidant activity, there were in vivo studies, then weight variation, there was a different phenomena. Basically, it was a 12-week study in which first 6 weeks we have induced the PCOS, and in the next 6 weeks we have uses this methanoic extract of this by that was prepared by the methylation. This was the normal control group that their weight variation was not so much. This was the disease control that was gaining the atrazole, and this was disturbing the usually hormonal imbalance. There was a continuous increase in the weight, and this was the treatment group that we have seen that at the 6 week there was increase in the weight and then continuous but not a drastic change in the weight that has been occurred. This was the control minimum dose, that was the 250 and then 500 and then 1 gram that are being used, and this causes the impact that as we increase the dose, weight reduction will be there. Then we go to the insulin sensitization and testosterone of these animals' blood parameters. As I have told you that there is in the normal control group, you have seen that insulin was a minimum concentration, and disease control, there was a high insulin sensitivity, but the extract decreases the insulin sensitivity but not bring to the normal ones. Similar to that of testosterone level, that in the diseased animal, it was a high concentration of the testosterone, but our extract decreasing the testosterone, but not to the normal ones. This is a point of consideration. That is not say that we can, our treatment, our extract bring it to the normal. It is not like that, but it was helpful for that.
In the similar way, there was a progesterone decrease in the diseased group. And when this was treated with this extract, there was increase in the progesterone level and it brings to the normal one. But when we go to the estrogen, in the diseased group, estrogen level was increased and usually it decreases the estrogen level, but not too high that it becomes to the normal one. Similarly, there was a change in the luteinizing hormones and follicle stimulating hormones, but it is not, we can say that it is only the herb that can be used for the treatment. Many others was also be used. Then what were the, we have find out that this herbaceous tissue contains the considerable total phenolics and flavonoids that may helpful in reducing the inflammation and to protect them for the oxidation that are taking place in the body when there is metabolic changes. In the similar way, it may helpful in decreasing the blood glucose level and decrease the enzyme level, inhibit them. And in vivo study, they reduce to normalize the elevated blood levels and restore the elevated imbalance in the hormones. We have working basically on a product that is being used by the common practitioners, and we were evaluating one by one of the plants they are using. As a pharmacist, as a pharmacologist, as academicians, it was a good perspective of that herbal product, but our aim was to fractionate that extract, find out the marker compounds that will be responsible for that, standardization of that fractions, toxicological assessment of the other organs of the human body that are being used, and then it go to the formulation and then preclinical studies. There was the different references that we have used for this study, and this is from my side. Thank you, Dr. Rashid, for inviting me. Any question? It will be honor for me. Thank you very much, Dr. Fizar Abbas. Now we moving forward for our next speaker. Our final technical speaker is Mr. Najmul Hassan from Mint Pharmaceuticals. He will discuss the history, scope, and future potential of Pakistan's herbal industry. We welcome you, sir, on stage. Thank you. मेरे पास कुछ I'm very grateful to DRAP, comstech, and all the dear colleagues sitting here. For the last 24 hours, we have been discussing the important topic, which is majorly focused on the alternate and primarily the herbal industry, its scope and working in Pakistan. मैंने भी सबकी तरह काफ़ी फैक्ट्स लेकर अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी, बट आई फील कि तमाम फैक्ट जारी बात है, एक दिन में 6,000 पाकिस्तान की फ्लोरा से 6,200 से 6,000 प्लांट्स में जो मैंने भी मेंशन करने थे, और 600 मेडिसिनल प्लांट्स वो मैंने मेंशन करने थे. जो ग्लोबल जो नेशनल मेडिसिन का बजट है वो भी उतना ही रहना है जितना कि मेरे कलीग जो कि हमदर्द से, कर्शन से और उन लोगों ने मेंशन किया. और आई हैव गॉट द टाइम, जो मुझे टाइम मिला है वो भी बेसिकली डिस्कशन, क्वेश्चन आवर एंड वे फॉरवर्ड में से था. तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स, मोस्टली मैं अपनी प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा बाहर जाके ना, तो चूँकि आई एम रिप्रेजेंटिंग द नॉट माई कंपनी मिंट फार्मास्यूटिकल्स और एनीथिंग, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग द PTP में, पाकिस्तान तिब्बी फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
लकीली हमारे चेयरमैन हकीम उस्मान साहब भी मेरे प्रेजेंटेशन से आ गए हैं, और करशी, हमदर्द, हर्बियन, अशरफ, चीमा लेबॉर्ट्रीज, अवामी, ब्रेक, तकरीबन 70 to 80% ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं। तो बजाय इसके कि मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाऊं जिसमें कि कितनी हमारी सेल है, कितनी होनी चाहिए, मैं कुछ पीटीपीएमए का वर्जन पेश करना चाहूँगा जो मेरी शायद स्लाइड में, क्योंकि कल मुझे नफीस ने कहा आप दे दें, तो मैंने कल जितनी अपडेशन थी, बल्कि मैंने अपनी प्रेजेंट जब भी मुझे मिला तो मैंने अपनी इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की था मेरी प्रेजेंटेशन में, चूँकि बुजदार साहब ने और आज सुबह अरसलान ने भी सिर्फ बात करनी थी, मैंने उसको स्किप कर दी। एनीवे, मैं अपने आप को 20 मिनट के अंदर ही रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आई टॉक अबाउट द टॉपिक डिस्कस्ड यस्टरडे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। उसमें डॉक्टर ज़ाब्ता शनवारी साहब ने और मंजूर बुज़दार साहब ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। सर इसमें क्योंकि मंजूर साहब भी हैं, मुनीजा भी हैं, नफीस भी हैं, और डॉक्टर रशीद साहब हमारा मिडिल लेवल फ्रेश और एक्सपीरियंस ड्रैप का सब लोग यहाँ पे मौजूद है। जब ड्रैप नहीं होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती थी, डॉक्टर रशीद साहब ने वो ट्रांजिशन भी देखा हुआ है, किस तरह पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती थी। और तो मैं आपको दो सिचुएशन दिखाना चाहूँगा, एक 1976 और एक 2012। तो 1976 में जब ड्रग एक्ट 1976 आया, तो शायद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंडीशन वो थी या उससे भी थोड़ी पीछे थी जो 2012 में हर्बल इंडस्ट्री की थी। और तकरीबन 40 से 50 साल लगे कि जब वो पाकिस्तान में 40 मल्टीनेशनल कंपनियां थी, 200 के करीब पाकिस्तानी कंपनियां काम कर रही थी, और पहली पाकिस्तानी कंपनी 41वें नंबर पर आती थी। यानी 40 मल्टीनेशनल कंपनियों में देयर वाज नो वे कि कोई पाकिस्तानी कंपनी सोचेगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हमारे पुराने डॉक्टर फाजी साहब से शुरू हो जाएं या उससे भी पीछे चले जाएं जो, और उसके बाद डॉक्टर फरजाना चौधरी, रऊफ फारिस साहब, खालिद अजीज साहब, और सब ने मिलकर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि उस वक्त जो रिमिंगटन या सीसीएल गड़ी शो में वर्क कर रही थी, आज के सीसीएल और रिमिंगटन के जो वॉशरूम का स्टैंडर्ड जो है तब के प्रोडक्शन एरिया से बहुत बेहतर है। सर इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, टाइम, और सबसे बढ़ के पैटर्नेज एंड ट्रेनिंग। मुझे अच्छी तरह याद है 1999 में, क्योंकि मैं एलोपैथिक इंडस्ट्री से हर्बल इंडस्ट्री में आया हूँ। तो इन 1999 आई वाज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन में पंजाब एंड केपी की आता था, बट उसमें मुझे सारा पाकिस्तान इसलिए देखना पड़ता है। डॉक्टर खालिद चौधरी हमारे सेंट्रल चेयरमैन थे, और वो चूँकि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती। तो उस साल में तकरीबन कोई 3 या 4 WHO ट्रेनिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ विद द कोलैबोरेशन ऑफ पीपीएमए की गई, जिसमें गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड तमाम प्रैक्टिसेस के ऊपर ट्रेनिंग कराई गई। सर अब मैं 2012 की सिचुएशन पर आता। सर 2012 जब आपका ड्रैप एक्ट आया, जिसमें कि आपने हर्बल, होम्योपैथिक और जो बाकी सबको भी इन सर्कल में ले आए, तो ये एक इट वाज नॉट एक बहुत जल्दी में किया गया एक्ट था कि जो पीआईसी लाहौर में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से सारी दुनिया में पाकिस्तान हाईलाइट हो गया। तो उसके बाद आके ड्रास्टिक चेंज की गई, और उसके बाद आके ड्रग एक्ट ड्रैप एक्ट 2012 आ गई। उसके बाद 2 साल लग के मई 2014 में SRO 412 आया, जिसके बाद से रूल्स बना दिए गए HOTC के लिए। मैं 2012 में पीटीपीएमए का मेंबर नहीं था, पर इकबाल करची साहब, जैद अशरफ साहब, डॉक्टर नवीद जफर साहब, सबसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो वो मुझे एज अ अपने एडवाइजर तो नहीं कहूँगा, उनके सामने मैं चिरागी था सूरज के आगे, बट वो मुझे इकबाल करची साहब हमेशा मुझे बुलाते होते थे पीटीपीएमओ की मीटिंग। मेरा सर उनसे पहले दिन 2012 में जब आया दिसंबर में, पहली मीटिंग मैजना टोटल लाहौर में हो रही थी। चीमा साहब भी वहाँ मौजूद थे, इरफान भी थे।
वहाँ पे मेरा बड़ा स्ट्रांग स्टैंड था कि हमें इसको एक्सेप्ट करके इसका हिस्सा बन के और जो चेंजेस आ रही हैं उनके अपना इनपुट देना चाहिए। बट अनलकीली मेरी बात नहीं सुनी गई। 2012 तक तो कुछ हुआ नहीं। 2014 में जब SR 412 आया तो हमारी एसोसिएशन ने, जिसका मैं भी पार्ट हूँ, हमने एक स्टे ले लिया उसने हाई कोर्ट से, और 2-3 साल हम लोग जो होता है ना एक स्टेट ऑफ कहते हैं ना डिनाइल में चलते रहे। जब 2016 में एक थोड़ा सा डंडा फिरा और लोगों ने इनको फैक्ट्री शैक्ट्री बंद करनी शुरू की, फिर हम लोगों ने आके सुनानी साहब से मीटिंगें शुरू की और उस पर चलते रहे। सर अभी फिर कल मजबूर बुद्दार साहब ने सारा हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो आने वाला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसके बारे में बताया। मंजूर साहब मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली आपसे एक चीज़ कहूँगा कि सर 2012 से पहले तकरीबन जितनी हमारी हर्बल इंडस्ट्री थी ना उसका 10% सिर्फ, बल्कि 10% से कम भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवा सके, और बाकी सब लोग बंद हो गए, चाहे वो मियाँ वाली में थे, सरगोदा में थे, उधर बलूचिस्तान में थे, पब्बी में थे, मर्दान में थे, तो वो लोग कंप्लाई नहीं कर पाए आपकी रिक्वायरमेंट्स को। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें वो तमाम GMP रेगुलेशन और ये सब हमारे अवाम की बेहतरी के लिए उनको अप्लाई करवाना। बट उसके लिए जो मेथड डॉक्टर रशीद साहब और बाकी सब सीनियर ने अडॉप्ट किया था, वी नीड टू मूव लाइक दैट, वी नीड टू ट्रेन द पीपल, जिसका अभी बात हो रही है क्लिनिकल ट्रायल की। सर इस वक्त इशू बहुत सारे CRO भी बन गए हैं, ड्राफ्ट ने अप्रूव किया CRO, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर आप उस तो खुदूस की ऑयल का अगर आप उसका बायो इक्विवेलेंस या बायो करवाना चाहेंगे ना, तो कम से कम 20 मिलियन का आपका खर्चा आ जाएगा, 2 करोड़ रुपये। और सर हमारी हर्बल कंपनीज को सर चाहे करछी हो जाए, हमदर्द हो जाए, सर 10 प्रोडक्ट से करवाएंगे ना तो इनका सारा जो है ना बजट आउट हो जाएगा। कुछ हम आप बात करेंगे कि लसानी को ऐसा कहा जाए या अवामी को ऐसा कहा जाए, तो सर उनकी तो इतनी सेल भी शायद नहीं होगी जितने का बायो इक्विवेलेंस का या बायो आपकी जो क्लिनिकल रिसर्च का बजट होगा इसमें। सर लेट मी कंप्लीट क्वेश्चन सेशन करेंगे नहीं, उसके बाद करें सेशन प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद हम इसको करेंगे। मैं अपनी बात मुख्तसर रखते हुए आगे चलाऊंगा। डॉक्टर मानल्ला बिस्मिल साहब ने भी अपनी होम्योपैथिक की सारी बातें की। सो बेसिकली मंजूर साहब और आप मुनीजा आपसे मैं बात करूंगा। तो यू आर रेगुलेटिंग 3 एक अलाइन चीजें नहीं, हर्बल, होम्योपैथिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल एक ट्राइंगल के 3 कोने हैं, और आप लोग उसके दरमियान में बैठे हुए हैं। कल आप जो दे रहे थे उसमें मैं नदीम खालिद के साथ बैठा हुआ था। सर आपने जो मदर टिंचर स्लैश बल्क एक्सट्रैक्ट्स को किया, तो बल्क एक्सट्रैक्ट्स केमिस्ट्री है, और वो जो मदर टिंचर जो है ना, बहरहाल मुझे अभी डिटेल्स पढ़ूंगा तो मुमकिन है मेरी गलतफहमी दूर हो जाए, बट अभी मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगी थी जब मैं नदीम खालिद से भी डिस्कस किया। तो इसमें बाकी तो मैं मसाइल को नहीं बताऊंगा। जो PTPMA की तरफ से हमारा शुरू से 2014 से हमारा मुतालबा रहा है कि सर आप लोग बहुत अच्छा समझते हैं फार्माकोलॉजी भी आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है, बट होम्योपैथी और हिकमत सर ये आपस में 180 डिग्री है। तो होम्योपैथी में जितना डाइल्यूट होता जाता है उतना ज्यादा पोटेंशिएट होता जाता है, जबकि हर्बल में जितनी आपकी मकदार बढ़ाती जाती है उतनी आपकी इफादियत बढ़ती जाती है। होम्योपैथी में जितनी आप मकदार बना घटाएंगे उतनी इफादियत बढ़ जाएगी। लिहाजा ये 180 डिग्री है। तो आपको उस ट्रायंगल के दरमियान में बैठ के कभी आप इधर देखते, कभी आप इधर देखते, कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते। तो मेरा एक छोटा सजेशन, जारी बात है साहिब इख्तियार आप हैं और आपने करना है। आपने ये 2 दिन के लिए हमें बुलाया, तो आमतौर पर इंडस्ट्रियल एकेडमी लिंकेज की बात होती है। बेसिकली ये 2 दिन हमने इंडस्ट्री रेगुलेटर लिंकेज के लिए ही बैठे हुए हैं, और आप हमारी बातें सुने उस पर अमल करें तो हम बहुत मशहूर हैं। सर 2014 से हमारा एक मुतालबा मुसलसल 12 साल से चला आ रहा है कि हम लोग तो पहले जो हमारे साथी थे जो आज भी यहाँ बैठे हैं, चीमा साहब बड़े सख्त मुखालिफ थे कि ड्रैप में होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान काउंसिल फॉर तिब्ब सलीमी साहब, इन लोगों को रेगुलेट करना चाहिए। बट एनीवे मैं शुरू से मुखालिफ था, बट आपसे सजेशन ये होगी कि आप HOTC में 3 पोर्शंस कर दें। एक हर्बल, अभी भी इसी तरह होता है, आपकी मीटिंगें अलहदा होती हैं,
बट आप डायरेक्टर फार्मासिस्ट ही हो, बट एक जो एडिशनल डायरेक्टर है ना वो हर्बल का एक हकीम को रख दें, और होम्योपैथिक का एक होम्योपैथ को रख दें, और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का फार्मासिस्ट ही होना चाहिए। इन तीनों की मीटिंगें अलग होएं और इन तीनों की इन्वेस्टमेंट एवेल्युएशन कमेटी के अंदर एक एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट लाजमी बिठाएं। सर मैं जब 2012 में मैं अरशद आपकी बात यहाँ एक सेकंड के जी लिए काटूंगी। सर एक सेकंड के लिए काटूंगी। एडिशनल डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स अलग होने से रूल्स या रेगुलेशंस तो चेंज नहीं नहीं होते। नहीं बिल्कुल नहीं चेंज होंगे, बट एक नॉलेज और इनपुट जो है ना, डीप इंसाइट। और उसके अलावा सर जो हमारा मुतालबा 2012 से है कि इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव अब लाजमी रखी। सर पीपीएमए, पीसीडीए, फार्मा ब्यूरो के लोग रजिस्ट्रेशन बोर्ड में बैठ सकते हैं। अच्छा, मैं अरशद फारूक फहीम से लेकर अरशद खान से लेकर अंसार सबसे बातें होती है। वो कहते हैं जी आपकी एक ही बात सुनी तो बड़ा महकमे हमारे ऊपर झपट पड़ेंगे, फलां एसोसिएशन। सर आप किसी एसोसिएशन को ना, हमारी शक्ल बहुत अच्छी नहीं पीटीपीएमए की है। सर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डीडीटीओ जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करती है उसका नुमाइंदा आप रखें सर। तो हम लोग आपके काम में रुकावट नहीं डालेंगे, बल्कि आपके सपोर्टिव करेक्टर के तौर पर एक्ट करेंगे और आपको इंडस्ट्री की रियलिटीज के बारे में बताएंगे। सर आपके 20 मिनट। मैं फिनिश कर दूँ क्योंकि डिस्कशन और क्यूए पार्ट बीच में आते हैं, इसलिए थोड़ी सी लिबर्टी आपको मैं दे दूँ। मेरी काफी बातें होगी तो एक या दो चीजें रहेगी थी। हाँ, एक और चीज मजदूर गुलजार साहब, आपसे पहले हमारे जो थे हमारे भाई फखरुद्दीन, एक हमारे सर देखें, अभी अभी हम बात कर क्लिनिकल ट्रायल्स की। हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स और एलोपैथी जमीन आसमान का फर्क होगा। तो हमारी LD50 और ED50 में बहुत बड़ा गैप होता है। एक्सेप्ट अभी वेरी फ्यू प्रोडक्ट जैसे दतूरास्का अमोनियम को छोड़ दें या स्ट्रिक्नीन को छोड़ दें, सब बादाम, काजू, अखरोट, तुलसी, सर इनमें पॉइजनस कंटेंट सर 2, 2.5, 3 किलो खाएंगे तो फिर आपको हेलुसिनेशन होंगी। सर एक पता नहीं कहाँ से एक लिस्ट आ गई पॉइजनस मेडिसिन की, और 4 साल हो गए हमें डाटा देते हुए हमारा अभी तक वो मसला जो है ना, तो उसमें अशरफ बहुत ज्यादा सफर हो रहे हैं, हम सफर हो रहे हैं, हकीम साहब सफर हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों से। तो अगर हमारा नुमाइंदा आपके साथ बैठा होता तो शायद ये चीज होती ही ना। तो बाकी आई हाईली अप्रिशिएट टुडेज एफर्ट, एंड आई होप कि डॉक्टर रशीद साहब और आप लोग मंजूर गुलजार साहब हमारी रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। जहाँ हम गलत हैं हम गलती मानेंगे, अगर कहीं हमारी गलती है हम गलती मानेंगे और इम्प्रूव भी करेंगे। तो बट सब लोग पर्ची हम दर्द देते रिसोर्सफुल नहीं है। तो एक टीचर जो होता है ना, उसने टॉपर को नहीं लेना होता है, उसने हम जैसे नालायकों को भी देखना होता है। आप सिर्फ एक जो टॉपर को देख लेते यार, उसने उसको पीरियोडिक चार्ट भी सारा याद है, उसको ये भी याद है, उसको वो भी याद है, उसके मिड टर्म्स भी अच्छे, ये भी अच्छे, वो भी अच्छे। तो दूसरे बेचारे के शायद उसने घर जाके मजदूरी करनी हो, उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो उनको भी साथ लेकर चलिए। तो हमारे जिस तरह चीजें चल रही हैं, तो 10% हर्बल इंडस्ट्री रह गई थी, मजीद 10% रह जाएगी। तो आई थिंक, और बड़ी इंडस्ट्री, आई एम श्योर बड़ी इंडस्ट्री कभी ख्वाहिश नहीं कि छोटी इंडस्ट्री ना चले। तो रिमेंटन CCL जो छोटी छोटी 2-2 कंपनी की फैक्ट्रियाँ थी गड़ी शाह में, जहाँ पे भी आप लोगों की मदद से, आप लोगों के ताउन से, जो हमारे सीनियर हैं उनके ताउन से इतनी बड़ी बनी। तो PTPMA के बिहाफ पे हकीम उस्मान साहब, बाकी सबके बिहाफ पे ये गुजारिशात की अगर आप गौर करेंगे तो हम आपसे बहुत मशहूर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल हसन साहब। हमें क्वेश्चन आंसर सेशन ये अच्छा चलें कह दे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल हसन साहब। आई होप कि आपके सारे गिले शिकवे साइंटिफिकली, टेक्निकली और बाय रूल्स एंड बाय बुक सॉल्व किए जाएं और एड्रेस किए जाएं। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मूविंग फॉरवर्ड विद आवर साइंटिफिक एजेंडा,
Please help me welcome Dr. Abdul Rashid, serving as the Consultant of Health Initiatives at OIC, Comstech, and the former Director of Pharmacy Services at RAP. His illustrious career has shaped the very laws that govern therapeutic goods today. Please welcome Dr. Abdul Rashid to the podium. Thank you, sir. एवरीबॉडी मेरे लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो कॉम्स्टेक का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्स्टेक जो है उसका दायरा करार ये है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतर करे। दिस इज द जॉब ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओएच। लेकिन मेरा ताल्लुक चूँकि फार्मेसी सब्जेक्ट से है और मैं यहाँ आऊँ तो उसके बाद शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का। मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि मैं कहता हूँ कि वो मैं जो आज सोच रहा हूँ वो 100 साल एडवांस में सोचते हैं, इतनी उनकी विजन है और इंशाल्लाह उनका एक नुक्ता नज़र होता है। तो हेल्थ में हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो थी 57 कंट्रीज जो जहाँ तक हम पहुँच सकते थे वो हेल्थ। मैं ये पेश करना चाहता था कि 57 मुस्लिम कंट्रीज में हेल्थ यूनानी हर्बल होम्योपैथिक न्यूट्रास्यूटिकल की क्या मार्केट है और उसका क्या शेयर है और क्या उसकी चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज में। तो मेरा जो सर्कल था वो 57 कंट्रीज था। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से हम सुनते आ रहे हैं यूनानी हर्बल होम्योपैथिक न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन। तो इसमें एक बात हर हकीम की मैं बात करूंगा, हर हकीम ये क्लेम करता है कि ये दवाई जो है फलां मर्ज में इफेक्टिव है या फलां मर्ज के इलाज के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ से जो एलोपैथिक एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ एलोपैथी जानते हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए, कोई उसका सबूत होना चाहिए। तो वो सबूत जो है बड़ा मुश्किल होता है और इसी तरह जो है कम अज़ कम मेरा तो 42 ईयर इस्लामाबाद में गुजरे हैं तो ये हम सारी उम्र यही सुनते आ रहे हैं। मैं इस हैरान हूँ कि इसमें मैं ये प्रेजेंटेशन दूं या न दूं। मैं हकीम इकबाल काशी साहब से हतार में मिला उनके प्लांट में और जिसको फैक्ट्रीन गार्डन कहते हैं और वेरी लश ग्रीन एरिया इन हतार। इकबाल काशी साहब ने ये फरमाया कि देयर इज नो नीड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन यूनानी हर्बल मेडिसिन। ये उनकी वर्डिंग है। क्यों? उसके इसलिए कि उसका एम्पिरिकल नॉलेज होता है, उस बेसिस पे हम इलाज करते हैं। हकीम उस्मान साहब भी इसको सेकंड करेंगे। तो एम्पिरिकल नॉलेज क्या है? कम अज कम मेरा तो 42 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया, ये मुझे नहीं पता डिटेल में। तो एक में हफीज साहब भी करशी इंडस्ट्री से बैठे हैं, इरफान साहब भी हैं, जावा साहब भी हैं, हकीम उस्मान साहब के अलावा इरफान, बाकी सारे जो मैं नाम नहीं लेना चाहता जो तिब से यूनानी एरिया से या तिब से रिलेटेड लोग हैं वो एक अलग सेपरेट सेमिनार करवाएं कि व्हाट इज एम्पिरिकल नॉलेज, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोग जाने और उस पर फिर वो अगर आज को स्टार्ट हुए तो मे भी 2 साल बाद 5 साल बाद कोई ना कोई उसके रिजल्ट निकल आए। लेकिन ये नॉलेज जरूरी है क्योंकि जो एलोपैथिक, क्योंकि रेगुलेटर जो है उसका ज़्यादातर एलोपैथिक का नॉलेज होता है, पॉलिसी मेकर जो है उनको भी वो दूसरी जो होते हैं, लेकिन वो बेसिकली जानते नहीं है कि इसकी क्लिनिकल ट्रायल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये इसलिए दिया कि जो आइडिया था किसी को ये नहीं पता कि यूनानी हर्बल मेडिसिन की ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्लिनिकल ट्रायल कैसे की जाए। तो हमने कोशिश की थी, क्योंकि मैं को ड्राइव से रिटायर हुए 4.5 साल हो गए, तो मैं तो अब ड्राइव को भूल चुका हूँ। नाउ आई एम कॉन्स्टेंट और अल्हम्दुलिल्लाह 57 मुस्लिम कंट्री बड़े इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। उस वक्त कोई ट्राई की थी, कुछ गाइडलाइंस बनी थी, मैं वो पेश करना चाहता हूँ। शायद उसमें आप लोग जो एक्सपीरियंस और टेक्निकल लोग हैं, जो तबीब हैं, हकीम हैं, वो अपने इनपुट डालें और फिर आगे उसको हम लेके जा सकते हैं। उसमें बेहतरी भी आ सकती है, उसमें कोई डिलीशन भी आ सकती है, एडिक्शन भी हो सकती है। और मुझे टाइम दी क्या 15 मिनट का, और मैं 15 मिनट में इंशाल्लाह फिनिश करूँ, क्योंकि लंच जो है बड़ा अच्छा होता है, कामतक का लंच बड़ा मशहूर है। तो मैं उसमें हर्डल भी नहीं बनना चाहता, मैं जल्दी इसको गो थ्रू करूँगा।
जो जितनी CROs हैं उन पे गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट होते हैं, जितनी क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं। देखिए मैं ऐसी बात करूंगा कि सबको इतनी क्लिनिकल ट्रायल साइट जो है, क्लिनिकल रिसर्च वर्क में कहते हैं क्लिनिकल साइट, दूसरे लफ्जों में सिर्फ हॉस्पिटल समझ लें। जितने भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं, वो बगैर गवर्नमेंट के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, हेल्थ अथॉरिटी के, उनसे अप्रूवल के बगैर कोई क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकते। ये जनरल प्रिंसिपल। एक बात बड़ी होती है, कंफ्यूजन होती है कि क्लिनिकल ट्रायल क्या चीज है, क्लिनिकल स्टडी क्या है। बेसिकली दिस इज द वन ऑफ द सेम थिंग। आप उसको क्लिनिकल ट्रायल कहें या क्लिनिकल स्टडी कहें, एक ही टर्मिनोलॉजी है, सिंपल अल्फाज में। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ड्रग है, मैं कहूँगा एक जड़ी बूटी है, उस पर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, आप उसको देखना चाहते हैं उसकी क्या एफिकेसी है। सबसे पहले जो दवाई की रिसर्च वर्क की जाती है, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल हो, आपने ये देखना है कि ये दवाई जो है, देखिए मैं ये दवाई कहता हूँ, मैं उसको दवाई नहीं कहता, मैंने तो उसका नाम रखा था, मैं ड्राई फ्रूट बनाने वाला मैं हूँ, मैं उसको थेरेप्यूटिक गुड्स कहता हूँ। और जो भी आप कोई भी नाम ले लें, उस तमाम चीजें जो थेरेप्यूटिक गुड्स के अंदर है, तो उसके लिए कि ये दवाई जो है वो सेफ है कि नहीं, आपकी यूनानी दवाई सेफ है। दूसरा है कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फार्माकोडायनामिक्स क्या है, इस चीज को मालूम करने के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। मेरे एक्सपर्ट बैठे हैं प्रोफेसर एहसाना, ये इनका सारी उम्र जो है ये प्री क्लिनिकल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल रिसर्च में, शी नोज बेटर देन मी। इसमें थोड़ा सा मैं हर्ब्स है उसकी डेफिनेशन है, हर्बल मटेरियल्स है, हर्बल प्रिपरेशंस हैं, और फिनिश गुड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। ये इनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, और ये मोस्टली जो है वो ड्राफ्ट के रूल से ली गई। देखिए हर चीज को हम क्लिनिकल ट्रायल में नहीं करें, कोई एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो उसमें सबसे पहले अगर कोई केमिकली सिंथेटिक है या उसमें कोई अडल्ट्रेशन है, तो वो हर्बल ड्रग नहीं हो सकती। दो चीजें सबसे पहले कहते हैं, क्योंकि अडल्ट्रेशन है या फिर केमिकल सिंथेसाइड प्रोडक्ट, तो वो केमिकल जो नेचुरल सोर्स से होगा वो उसको आपके जो हेल्थ एंड ओडीसी के अंडर आता है उसकी कवरेज हो सकती है। एक्सिपिएंट जो है उसमें अंग्रेजी में एलोपैथिक ड्रग में कहते हो, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक्सिपिएंट जो है यूनानी हर्बल और जो ट्रेडिशनल हमारी मेडिसिन, उसमें एक्सिपिएंट्स को क्या हम डिफाइन करेंगे, फिनिश हर्बल प्रोडक्ट्स एंड मिक्सचर हर्बल प्रोडक्ट्स मे कंटेन स्टैंडर्ड इन एक्सिपिएंट्स इन एडिशन टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। जिसको आप कहते हैं कि ये आपका हर्बल दवाई है और इफेक्ट है, उसके अलावा जो बाकी इजाफी चीजें जाते हैं एक्सिपिएंट्स होंगे। और मार्कर्स क्या होते हैं, उसको दूसरा है मार्कर सब्सटेंसेस। दीज आर द रेफरेंस सब्सटेंसेस that are chemically defined constituents of a herbal material. They may or may not contribute to therapeutic activity. Evidence that they are solely responsible for efficacy is not mandatory. ये उनका काम, उनका एक्सिपिएंट का रोल जरूरी नहीं है कि वो उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी हो या नो। मुझे खुद भी इतना नहीं पता, लेकिन बेसिकली फेज 1 हमें सारी उम्र, मैं खुद यूनिवर्सिटी का टीचर रहा हूँ मैं, तो हम खुद पढ़ाते थे कि फेज 4 है। लेकिन जो मेरे कुलीग मैं जहाँ से अब रिटायर हुआ हूँ, 4-5 साल हो गए, हमें पढ़ाते थे सरफराज न्याजी साहब, जो कराची के लोग हैं, बहुत अच्छी तरह जानते सरफराज न्याजी का क्या स्टेटस है दुनिया में, अमेरिका में होते हैं, फार्मासिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 5 फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल। उसको फेज 0 कहते हैं, जिसकी प्रोफेसर आसना एक्सपर्ट है, जिसको प्री क्लिनिकल स्टडीज पे, उसको फेज 0 उसने कहा था, हमें बताया। फिर फेज 1 है, फिर फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4। फेज 4 था 1 to 4 तक जो क्लिनिकल स्टडी, उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं, सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। जब आप नॉन क्लिनिकल कहेंगे, जैसे ड्रैप एक्ट या रूल्स के अंदर हमारे मौजूद है, उसमें जो है नॉन क्लिनिकल मीन्स 100% दैट स्टडीज ऑन द एनिमल्स में स्टडी करेंगे तो उसको हम फेज 0 कहते हैं। और बाकी जब ह्यूमन सब्जेक्ट होगा तो उसको क्लिनिकल स्टडी करने। फेज 1 में सबसे पहले उसमें क्या मेजर किया जाता है, क्या मालूम किया जाता है, उसमें सबसे पहले जो है जिस यूनानी हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल होम्योपैथिक की दवाई को आप उसको देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी डिटरमिन की जाती है। फेज 1 में सिर्फ सेफ्टी डिटरमिन की जाती है और कुछ नहीं कर। एक और चीज होती है जिसमें मैं कहूँगा, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट सब्जेक्ट कितने होते हैं, आपसे कह लें 30 से लेकर 100 तक
आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएशन है। फेज 2 क्या आ जाती है, इसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एफिकेसी को डिटरमिन किया जाता है। और फेज 2 में सिर्फ दवाई यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, हर्बल हो, ट्रेडिशनल हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, कोई भी हो, फेज 2 में उसकी दवाई की एफिकेसी को मालूम किया जाता है, चाहे वो अंग्रेजी क्यों ना हो। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें मेंशन करना चाहूंगा कि डोज रिस्पांस का क्या आपस में इंटरेक्शन है। मैं सादा अल्फाज में कहूंगा कि अगर आप उसको फेज 2 में आप फिर ये आप 1 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम से लेंगे, तो क्या 1 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 और 15, 20, उसमें कौन सी दवाई मरीज को दें तो क्या कि उसका एफिकेसी हो सके। और ये जो है 100 से 300 के मुकाबले, तो ये दो चीजें फेज 2 में होते हैं, एक उसकी एफिकेसी, दूसरा डोज रेशो, कितनी दवाई दें। एक दवाई होती है 1 मिलीग्राम, एक 5 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 में 1000 मिलीग्राम, ये जो हम फेज 2 में करते हैं। मैं जनरल कंसेप्ट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो है एक तबीब हकीम से लेकर एक हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स बैठे हैं और रेगुलेटर्स बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, तो इसलिए मैं सिंपल अल्फाज में बात। फेज 3 में जो है फेज 3 में जो है आप उसमें ज्यादा नंबर ले लेते हैं और उसमें एफिकेसी को ज्यादा नंबर में टर्म में करते हैं। फेज 3 में जो है आप 300 से लेकर आप इवन 3000 तक, बल्कि 1000 से लेकर 3000 तक जो आप उस पर करते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा कि फेज 1, 2, 3 जो तक स्टडी करेंगे तो वो जो है अगर अपने आउटकम जो है अपने रिजल्ट्स में ड्राफ्ट में जमा कराएंगे तो फिर उनकी रिसेशन मिल सकती है या एनलिस्टमेंट मिल सकती है। लेकिन बदकिस्मती से कोई एक बता सकता है कि पाकिस्तान में कितनी दवाइयां जो है ड्राफ्ट में रजिस्टर्ड हैं, जो पाकिस्तान ने ही रिसर्च की और ड्राफ्ट ने उसको एनलिस्टमेंट दी हो, या उसकी अंग्रेजी दवाई की रजिस्टर्ड की हो। कोई हाथ उठा सकता है, कोई जवाब दे सकता है? नॉट ए सिंगल वन कि पाकिस्तान में कोई भी दवाई जिसकी क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान में ही रजिस्टर्ड हुई, आज तक पाकिस्तान में कोई दवाई नहीं मिली। हमने इंडस्ट्री तो बहुत लगा ली लेकिन रिसर्च वर्क के लिए आप हम इस पोजीशन में हैं। फेज 3 की स्टडी जो जब जमा होंगी तो फिर ड्राफ्ट जो है उसकी या लिस्टमेंट देता है हर्बल मेडिसिन की, अंग्रेजी दवाई को तो उसकी या उसकी रिसेशन देता है। इसमें तादाद ज्यादा होती है और कम नंबर पे हो, ये भी इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन जब नंबर ऑफ पेशेंट जो है 50,000, 1 लाख, 10 लाख तक जाते हैं तो फिर उसकी सेफ्टी जो है फिर रिजल्ट्स कुछ और आते हैं, उसकी एफिकेसी के भी आते हैं, लेकिन साथ साथ ही उसके हम नेक्स्ट जब मार्केट में आ जाते हैं तो उसको फेज 4 कहते हैं। और पोस्ट मार्केटिंग सर्विस मीन्स ड्राफ्ट में एनलिस्टमेंट होने के बाद जब यूनानी हर्बल मेडिसिन मार्केट में आती है तो क्या वो उसका क्या रिस्पॉन्स है, पेशेंट का क्या वो उसके बारे में क्या अपनी एवोल्यूशन देता है, अपनी राय देता है कि ये दवाई इफेक्टिव है या नहीं है, या मैंने ये दवाई ली तो मुझसे उसको फायदा हुआ, मुझको नुकसान हुआ। ये तमाम चीजें जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विस में होती है। और ड्राइव पे जो इंस्पेक्टर होते हैं वो सैंपल लेते हैं और एनालिसिस करते हैं अपनी लेबोरेटरीज में। ये तो फोर्स हो गया। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड रिस्पांस में इसमें छोड़ देता हूँ। जस्टिफिकेशन ऑफ हर्बल फ्रेमवर्क, ये जरूरी है। वो देखें, दुनिया कहती है कि जब यूनानी हर्बल मेडिसिन होम्योपैथिक देते हैं तो आप हमें कोई ना कोई सबूत तो देना, उसकी वैलिडेशन दे कि ये इफेक्टिव है और सेफ। अब मैं एक बात बता दूं आप सब लोगों को कि WHO के साथ में एज ए कंसल्टेंट कुछ अरसे के लिए अफगानिस्तान गया था, 2 दफा गया हूँ। WHO ये कहता है कि अगर कोई भी दवाई यूनानी हर्बल होम्योपैथिक अगर मार्केट में 3 साल से 5 साल से 10 साल में वेरी इफेक्टिवली वो मौजूद है और उसकी एफिकेसी, उसकी कंप्लेंट कोई नहीं है, उसकी सेफ्टी का कोई कंप्लेंट नहीं है, इट मीन दिस इज अ सेफ मेडिसिन। ये आप ध्यान में रखिएगा। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द WHO। लेकिन उसके बावजूद भी रैब ने एक हेल्थ एंड रोड से जिसमें मौजूद बाजार साहब मेरे कलीग हैं, वो जिनके वो हेड हैं, उसमें इन्होंने दूसरा एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विस उसमें फार्माकोविजिलेंस का स्टार्ट किया ताकि हर्बल यूनानी जितने भी हैं उनके जो साइड इफेक्ट मरीज सफर करता है, जैसे कोविड में थी तो 60,000 से ज्यादा हुई थी। तो एक बहुत ही लीगल एक सिस्टम मौजूद है ड्राइव के अंदर जो थेरेप्यूटिक गुड्स को तमाम चीजों को वो कवर करता है। इसमें इसकी हिस्ट्री और कल्चर देखिए थोड़ा सा। मैं हर्बल यूनानी में डिफरेंशिएशन क्लिनिकल रिसर्च मस्ट स्ट्रिक्टली
differentiate between herbal medicine with documented long-term historical use and those whose traditional use has not been established. एक बात है कि अंग्रेजी दवाई की क्लिनिकल ट्रायल और हर्बल मेडिसिन की ट्रायल डिफरेंट है। उसमें आप लोगों को जब देसी यूनानी दवाई की आप करते हैं तो जो दुनिया के वर्ल्ड लेवल पे जो उसमें फर्क है, देखिए यहाँ जो आप यूनानी इस्तेमाल करते हैं तो अफ्रीका में शायद किसी और तरीके से, ईरान में और इंडोनेशिया मलेशिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में हो गई। तो ये जो फर्क डिफरेंसेस होते हैं इनको आपको ख्याल रखना चाहिए। यूनानी का खास का कल्चर रेस्पेक्ट देखिए, फिर मैं सेनेगाल गया हूँ, वहाँ उनकी ट्रेडिशन है। माली में हमने एक एक्टिविटी की, हम 4 डिफरेंट मुल्कों में, मैं 4 डिफरेंट मुल्कों में मैं हर्बल ट्रेडिशनल यूनानी मेडिसिन के कॉन्फ्रेंसेस करा चुके हैं। और उसका आगाज इस तरह हुआ था कि सेनेगाल से एक आया, उसने कर्शियर इंडस्ट्रियल हतार को विजिट किया, उसने कहा हमारे यहाँ एक्टिविटी करें। तो पहली एक्टिविटी हमने सेनेगाल में की, फिर हमने ओवरी कोस्ट में की, फिर मडगास्कर में की, फिर हमने माली में की। तो 4 एक्टिविटीज हो चुकी हैं, 5वीं हमारी वर्चुअल थी। तो हर मुल्क अपना कल्चर होता है। तो जब यूनानी मेडिसिन की आप रिसर्च करें तो कल्चर उनकी ट्रेडिशन को जरूर ख्याल है। ये अंग्रेजी दवाइयाँ हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जब आप यूनानी हर्बल होम्योपैथिक तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के जहन में रखते हैं तो उस वक्त अंग्रेजी दवाई को जहन से निकाल दें कि अंग्रेजी दवाई भी कोई चीज है। ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। और उनका जो तरीका इलाज है, उनका जो यूज का तरीकाकार है जो मुझे भी नहीं पता, उसको सामने रखा करें। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल। एंड आल्सो द मेथोडोलॉजिकल इंटीग्रेशन, उसमें ट्रेडिशन नॉलेज है। यही बात है, 4000 साल पुराने है, 5000, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जैसे मैं उसमें डिटेल में नहीं जानता, मैं तो फार्मासिस्ट हूँ। डिफरेंट टेक्निक्स जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी पता है, लेकिन दिस इज नो मोर टाइम टू डिस्कस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है। कितनी एक दवाई जो है मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में 30 साल से मौजूद है, 20 साल से। देयर इज नो नीड, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एफिकेसी है। उसकी सेफ्टी के बारे में तो प्लीज ना करें, एफिकेसी के बारे में बेस्ट जज इज देयर पेशेंट। तो वो जो उसको भी आप कंसिडर किया जब क्लिनिकल स्टडी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं बुक्स में, रेफरेंस, वो सारी चीजों डाटा इकट्ठा होना चाहिए जब आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैलिडेशन पाथवे है, डेवलपमेंट पाथवे है, तो कुछ टेक्निकल चीजें मैं बताना चाहूंगा ताकि आप लोग कुछ फायदा हो। जब आपका कुछ एक डिसिप्लिनरी, देखिए एक बंदा है हकीम उस्मान से अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ बाकी एक्सपर्ट हो, कौन हो, कोई क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट एक टीम बना लें। एक फिजिशियन है, एक एलोपैथिक वाला फिजिशियन है, एक उसके अंदर फार्मासिस्ट मिला लें, एक्सपर्ट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे होगा। और बायोटेक्नीशियंस का होना बहुत जरूरी है, स्पेशलाइज्ड साइट कोऑर्डिनेटर। ये लोग एक टीम हो, फिर बैठ के डिस्कस करें और फिर उसको एक नतीजा खास करें तो उस पर बेटर रिजल्ट आ सकते हैं, बजाय इंडिविजुअली एक बंदा फैसला। साइक्लोन में एक फैसले करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट हौसला अफजा नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन होगा इस पूरे ऑडिटोरियम से, किसी भी फील्ड से ताल्लुक है, कोई जवाब दे सकता है कि उसने कोई भी अपने यूनानी हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल कोई अपने तौर पे रिसर्च वर्क की है, और या अंग्रेजी दवाई, इवन अंग्रेजी दवाई उसने प्रोजेक्ट जो है ड्राइव में जमा कराया हो और उसके प्रोटोकॉल उसने खुद लिखे हो। शर्त ये है कि क्या उसको प्रोटोकॉल लिखना आता है। अगर जिसको प्रोटोकॉल लिखना आता है या उसने एक केस जमा कराया ड्राइव में, तो वो हाथ खड़ा करा। नॉट ए सिंगल वन, नॉट ए सिंगल वन, बिकॉज हमें ये पता ही नहीं है कि प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रैप क्या मांगता है। ट्रैप जो है उसके अंदर उसके सामने पूरी दुनिया होती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं होता, जो दुनिया का रहे उनके सामने होती है। तो जो दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोपियन कमीशन के 28 मुल्कों में, यूके में या मलेशिया में या ईरान में या इंडोनेशिया या तुर्की में या सऊदी अरब में, जहाँ ये हर्बल मेडिसिन उनका जो क्या म्यार है, ट्रैप नोस वेरी वेल। they are educated, they are competent, they are well trained, they are experienced people. You cannot think कि जो उनकी काबिलियत है, दुनिया में किसी टाइप के कोई भी ऑफिसर दुनिया के किसी भी रेगुलेटर से कम नहीं है। ये मेरी वर्डिंग है और मैं अपनी वर्ड पे इंशाल्लाह कायम रहूंगा। तो ये जो बस मैं इसको जल्दी खत्म करता हूँ। मैं सिर्फ टॉपिक बताता जाता हूँ, बाकी आप लोग पता हो कि टाइटल आप जो आप यूनानी दवाइयों पे आप रखना चाहते हैं उसका प्रोटोकॉल ड्राइव में जमा कराएंगे तो उसका
टाइटल ऑफ द ट्रायल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए कि हम इस जड़ी बूटी पे काम करना चाहते हैं। स्टडी जो आप करना चाहते हैं, आप सौंफ पे करना चाहते हैं, आप जस्टिफाई करें कि सौंफ पे क्यों करना चाहते हैं। आप यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन टू द ट्रैप। अब फार्मूला रैशनल होना चाहिए, ट्रायल डिजाइन एंड टाइप होना चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जानता। सब्जेक्ट क्राइटेरिया जिस मरीज को दे रहे हैं, नॉर्मल को दे रहे हैं, उसके बारे में आपको जिक्र करना पड़ेगा। कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, मैं उसकी डिटेल नहीं जानना चाहता, वो आपको देना पड़ेगा। ऑब्जर्वेंट मैट्रिक्स होने चाहिए, ट्रीटमेंट शेड्यूल देना चाहिए कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में। कौन में ट्रीटमेंट्स होता है, कोड है, फार्म मेंटेनेंस होती है, एवोल्यूशन मेथोडोलॉजी होती है, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, रेगुलेटरी कम्युनिकेशन है, स्टाफ इन्फॉर्मेशन बुक्स हैं, पोस्ट ट्रायल मेडिकल केयर है। ये 16 टॉपिक है जो एक लफ्ज होता है प्रोटोकॉल, आपको क्लिनिकल ट्रायल के लिए देना पड़े, चाहे वो अंग्रेजी दवाई को। और जी, और उसके अलावा जो है मैं इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड होता है, और दूसरा है मैं उसको देख के बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, जिसको IEC कहते हैं। IRB हो हर इदारे की, वो कृषि की हो, मरहबा की हो, वो इरफान साहब की हो, और उनके इदारे की हो, तो उसके अंदर जो है यू हैव टू अपने इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड देना पड़ता है। उसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए। उसमें जब उनसे, जिस पे आप जड़ी बूटी की रिसर्च करना चाहते हैं, उनसे अप्रूवल, उसको IRB कहते हैं। देन आई कम टू द नेशनल बायोएथिक्स कमेटी, जो कंट्री लेवल पे होती है और जिसका हेड ऑफिस NH में या PMRC में है, वहां से मिलेंगे। ड्रैप उस वक्त तक एप्लीकेशन रिसीव नहीं करता जब तक आपके इदारे की IRB से या IEC से अप्रूव ना हो, फिर नेशनल बायोएथिक्स कमेटी से अप्रूव ना हो, और फिर ड्रैप आप कर सकते हैं। ये 2 अप्रूवल मैंडेटरी है, उसके बाद जो है प्रोसेस हो। एफिकेसी एविडेंस आपको देना पड़ेगा, टॉक्सिकोलॉजी देना पड़ेगी, फार्माकोकाइनेटिक्स का करना पड़ेगा। ड्रैप में अगर आपने यूनानी दवाई पे कोई रिसर्च हुआ की है, तो ड्रैप जो है बड़ा समझदार है, और उन्होंने आपके लिए एक फॉर्म ऑलरेडी तैयार किया है, पक्की पकाई खीर। अब तो ऑनलाइन है, देखिए जब ये 14 डिवीजन बनाए थे मैंने, उसमें एक MIS था, इसलिए कि पेपरलेस हो। नो ड्रैप इज MIS आफ्टर 10 years, आफ्टर 12 years। और तमाम एप्लीकेशन जो है मे भी, क्योंकि मुझे अब पूरी इंफॉर्मेशन आती है, 12 ड्रैप अब ऑनलाइन है, उस पर आप एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और किसको करेंगे, मंजूर बदार साहब को एड्रेस करेंगे, या उनके सेक्रेटरी हैं नफीस साहब, उनको एड्रेस करेंगे। ड्रैप के फाइनेंशियल कंपोनेंट के, ये जो आप क्लिनिकल रिसर्च करेंगे, पैसा कहाँ से लिया है, कितना खर्च किया, बैंक का अकाउंट नंबर होगा। इनिशियली ड्रैप जो है उस इनिशियली एप्लीकेशन को देखती है, और जो एप्लीकेशन जहाँ देखी जाती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, वो मैं गलती कर गया हूँ, आपके लिस्टमेंट और लाइसेंस वो मंजूर बदार साहब के डिवीजन में हेल्थ एंड में देते हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल करनी हो तो डिवीजन ऑफ फार्मेसी सर्विस में जाता है, जिसके अख्तरबाज साहब हैं और दूसरे हमारे कुलीग हैं उनको। जी बस हम जा रहे हैं, खत्म हो गया। आप एक्सपर्ट रिव्यू को भेजेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, और आपको जो भी जवाब होगा वो ड्रैप डिवीजन ऑफ फार्मेसी सर्विस वो आपको जवाब है, क्योंकि क्लिनिकल स्टडी कमेटी है, वो उसके डोमेन में आता है। मैं आपको एक बता दूं कि पहली जो 82 क्लिनिकल साइट्स हैं हॉस्पिटल पाकिस्तान में, जब मैं कोविड से पहले, वो मैंने अप्रूव की हुई हैं 82। और जो पहली स्टडी जो अंग्रेजी दवाई की थी, जिसमें हर्बल भी थी, जो रजा शाह ने की, 40 स्टडी जो है वो मेरी अप्रूव शुदा हैं, जब मैं चेयरमैन क्वालिटी कंट्रोल था। जब मैं हाजिर था, अब तो मैं रिटायर हो गया। इसी तरह जो इमरजेंसी ट्रैकिंग है, आप ड्रैप पे कर सकते हैं एप्लीकेशंस को, और उसकी लेबलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेट होनी चाहिए। डाटा इंटीग्रिटी जो है, डाटा जो है ड्रैप जो बड़ा क्रिटिकली देखता है कि इसमें कहीं कोई गलती ना किसी ने की हो। और रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है कि जब क्लिनिकल स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो आप ड्रैप को रिपोर्ट वो जमा कराने के पाबंद हैं। और इसमें मैं अगर आप कोई एब्सोल्यूट, ये मैं आप बड़ा क्लियर अल्फाज में बता दूं कि जब तक आप कोई MBBS डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई वेटरनरियन, कोई फार्मासिस्ट, कोई नर्स उस वक्त तक क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकती, हर एक को अपने फील्ड में, जब तक वो ड्रैप से अप्रूवल नहीं ले। और अगर अप्रूवल लेती है तो ला की खिलाफ वर्जी करें। इवन जो इस वक्त जो डॉक्टर भी कर रहे हैं, वो उसको भी फेज 4 के लिए ड्रैप से अप्रूवल लेना जरूरी है।
कि ड्राइव हर चीज मुश्किल हो जाती है ड्राइव के लिए, तो वो फेस वॉच करते होते हैं। और दे आर गोइंग वेरी वेल ड्राइव माशाल्लाह, चाहे एनलिस्टमेंट हो या उसकी हर्बल यूनानी फैक्ट्री का लाइसेंस हो। बस मैं इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं होती। आपको आपको ना मैं स्लाइड पूरे प्रेजेंटेशन भेजूंगा, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। आपको ये मुनीजा जो है ये लंच रेडी है। थैंक यू वेरी मच। लंच रेडी है, लेकिन लंच पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब टेक्निकल सेशन सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लंच के बाद 2 बजे सिर्फ पैनल डिस्कशन करेंगे। आप सबके जो जो सवाल हैं हम उन सबको सुनेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स कोशिश करेंगे आप सब में से ही आप लोग उनके जवाब देंगे। ठीक है, तो अब आप रेडी रहें। अब कोई टेक्निकल डिस्कशन वो नहीं है सेशन, अब सिर्फ पैनल डिस्कशन हो। ठीक है, सी यू एट 2। बिल्कुल सुनेंगे। मैं अब कोई हम यहाँ खड़े होंगे चुपचाप और आपके सिर्फ आपके सवाल होंगे। ठीक है जी, नो साइंटिफिक सेशंस। थैंक यू, एंजॉय योर लंच। काइंडली 2 बजे आ जाइएगा, उसके बाद 2 बजे ठीक शुरू कर देंगे। Welcome back, dear participants. सबसे पहले I would like to introduce myself. I forgot and skipped my introduction at the start of the session, क्योंकि हमारे साथ इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स और सीनियर्स बैठे हैं कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम मुनीजा खान है और मैं एडिशनल डायरेक्टर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हूँ और HOTC में पोस्टेड हूँ। बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट हूँ, मास्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स और मास्टर्स ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ भी हूँ, और 20 साल से ड्रैप के साथ हूँ। अभी मंजूर साहब के साथ HOTC में हूँ और सीख रही हूँ। थैंक यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, over the past 2 days, we have heard diverse perspectives from regulators, researchers, industry representatives, and practitioners. The panel discussion provides an opportunity to bring these perspectives together, identify common priorities, and explore practical pathways forward for Pakistan's herbal medicine sector. Please welcome our panel experts to the stage. I look forward for an engaging and constructive discussion. I welcome Dr. Ehsanul Haq Sahab and I request कि वो आएं, और बिस्मिल साहब, अमानुल्लाह बिस्मिल साहब के आएं और हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। But before moving forward towards panel discussion, I would like to summarize the 2 days event in 5 minutes. मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगी और उस 5 मिनट में if you have missed anything, तो आपको उसकी एक समरी इस 5 मिनट में मिल जाएगी. Then we will open the forum for panel discussion. The top 5 core themes of this 2 days event. Number 1, integration of herbal traditional medicines into healthcare system. दूसरी, रेगुलेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, हमने इसकी बात की. तीसरी, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन. चौथी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन. और पांचवी, इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल. ये 5 कोर थीम्स थी हमारे सेमिनार की. अब अगर इस सेमिनार से हमें स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या मिला है, वो 4 मैसेजेस हैं, वो भी मैं आप तक कन्वे करूंगी. ट्रेडिशनल नॉलेज इज एन एसेट, बट क्वालिटी एंड सेफ्टी आर नॉन नेगोशिएबल. दूसरी बात ये, रिसर्च एंड एविडेंस आर नीडेड टू कन्वर्ट ट्रेडिशनल रेमेडीज इनटू ग्लोबली एक्सेप्टेड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. थर्ड, Pakistan has significant medicinal plant resources
but must improve standardization and GMP compliance. Final, the future lies in integration, not in competition, between the traditional and modern healthcare systems. ये स्ट्रेटेजिक मैसेज था जो हमें मिला है. अगर हम चैलेंज ये हमारी जितनी ओवरऑल प्रेजेंटेशंस हुई हैं उनमें हमने यही इन्हीं चीजों के बारे में बात की है. जो चैलेंजेस थे वो बिग चैलेंजेस हर्बल सेक्टर के जो हमने डिस्कस किए, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वेरिएबल रॉ मटेरियल क्वालिटी, लिमिटेड क्लिनिकल एविडेंस, वीक एक्सपोर्ट रेडीनेस, need for stronger industry academia collaboration, limited physician acceptance, need for pharmacovigilance. ये challenges थे जो हमने 2 दिन में डिस्कस किए. अब मैं आपका मजीद टाइम नहीं लूंगी और फोरम ओपन है. आई होप कि मैंने समराइज किया है 2 दिन के सेशन को. 2 दिन में आपके जितने सवालात हैं हम उन सबको अभी एड्रेस करते हैं. डिस्कशन का आगाज मैं करती हूँ. एहसानुल हक साहब से पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हाउ कैन यूनिवर्सिटीज बेटर सपोर्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ हर्बल रिसर्च. सर, अगर आप इस बारे में कुछ रोशनी डालना चाहें कि यूनिवर्सिटीज किस तरह बेटर सपोर्ट कर सकती हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ हर्बल रिसर्च को. Thank you very much for providing this opportunity to put forward our point of view and things we have learned from last 2 days. And here we can discuss that actually the universities and industries both are very close friends. But unfortunately in Pakistan it is not. इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा भी, और हमें जो है ना वो मेरा ये ख्याल है कि जो आपका क्वेश्चन है ना वो वेरी क्विकली क्लियर भी हो जाएगा. और उसमें से एक चीज़ जो है इस सारे एस्पेक्ट के अंदर जो चीज़ हमें हर सूरत में किसी सूरत भी हम जिसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें एफिकेसी थी, सेफ्टी थी, सब कुछ था, और इसमें फाइनेंशियल हेल्थ भी मौजूद है. अगर फाइनेंशियल हेल्थ और वायबिलिटी नहीं होती तो भी मसले मसाइल क्रिएट होते हैं, और ये भी क्वालिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. अब यूनिवर्सिटीज इस तरह से इंडस्ट्री को हेल्प आउट कर सकती हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमने जो देखा है, मेरा बैकग्राउंड इंडस्ट्री का भी है, मैंने 10 ईयर्स इंडस्ट्री में सर्व किए हैं. मैंने यूनिवर्सिटी में और मेरी मैडम बैठी हैं, टीचर हैं मेरी, और इकबाल चौधरी साहब भी हैं, इनसे इंस्पायर होकर मैं नेचुरल प्रोडक्ट के तरफ मूव किया था और इसमें भी हमने काम किया. यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की, फर्ज करें कि एक लैब के अंदर एक आदमी के अंदर एक जगह पे, जैसे फर्ज करो कि मैं हूं और या मेरी लैब है या मेरे साथ दूसरे प्रोफेसर हैं, मोर देन 10. एक चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है, वो ये डिस्कस की है कि अगर फर्ज करें कि हर्बियान या करशी की फार्मास्यूटिकल की जो टेस्टिंग लैब है ना वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की है. उसके रिसोर्सेज या उसकी मेंटालिटी जो नेटवर्किंग है, ब्रेन नेटवर्किंग ना, वो सिर्फ और सिर्फ हर्बियान की जो मेन कोर का थीम है ना वो उसी के अंदर फिट होके चल सकती है, उससे बाहर तो नहीं निकल सकती. और जो दूसरा सवाल था, पीएमए वाले हमारे वो कुलीग थे, उनका ये था कि बहुत सारे छोटे लोग रह गए जिनके बस की ये बात नहीं है कि इस लेवल के इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करें. इसमें से अब जो यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर या एक रिसर्चर खड़ा होता है तो उसकी एक पूरी पीछे फैमिली होती है, उसकी पूरी एक जो स्कॉलर्स हैं ना वो साथ चल रहे होते हैं. अब उसकी एक एक्सपर्टी एरिया है और उसके पास भी वो मशीन्स मौजूद हैं. आप किसी और प्रोफेसर को देखें तो उसका एक्सपर्टी एरिया और है, लेकिन उसको उन मशीनों की एक्सेस भी है. इसी तरह से वो मशीनें अभी जो जहाँ पे आप पहुँचते हैं या जिन चीज़ों को आप अभी सोच रहे हैं कि 4 इंडस्ट्रीज ने ली है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ में
एक्सेसिबल होती हैं, आज से 20 साल पहले भी एक्सेसिबल थी। अब यहाँ पे एक चीज जो आती है म्यूचुअलिज्म। बाहर की दुनिया में, यहाँ की दुनिया में, मैंने कुछ टाइम अमेरिका गुजारा और कुछ टाइम इधर गुजारा। एक चीज मैं डिस्कस यहाँ पे एक एग्जांपल भी छोटी सी देना चाहूँगा। वो रिवर्स फार्माकोलॉजी की है। हमारे अक्सर तबीब और ये कहते हैं ना कि एफिकेसी का जो सवाल है। तो मैं एक दफा एक छोटे से सफर पे था। मैडम 5 मिनट ले सकते हो? आज टाइम है? वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ले रहा हूँ, इसलिए कि मैं ना 40 इयर्स की एज थी मेरी और मैं ना क्रोनिक डिजीजेस का शिकार हुआ। तो मुझे ये लगा कि लाइफ की क्वालिटी हिट हो गई है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी अचीवमेंट्स तो बाकी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हिट हो चुकी है। तो ये अचीवमेंट्स की तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ना हुई तो क्या करेंगे। मैंने एक ट्रिप किया, अपने स्टूडेंट सबको लिया कि सबसे पहला एक काम तो करें कि जब तक हम पढ़ के ट्रेंड और एक एक्सीलेंट माइंड या ट्रेंड पर्सन बनते हैं तो उधर से जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आ जाती है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि 100 years ऑफ हेल्दी लाइफ, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि 100 years तक हेल्दी लाइफ हो और उसको हम करके चलें। तो उसके लिए हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को लगाया और 6 महीने के लिए लगा दिया कि सर्वे करें कहाँ पे कौन सा बंदा है और वो 100 साल तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बीमारियों का कैसे वो मुकाबला करते हैं। इस सिलसिले में हम सारे नॉर्दर्न एरियाज और इधर चले गए तो मुझे शहरों से नहीं मिले। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे रिफाइंड, दो चीजें रिफाइन हुई हैं, एक रिफाइंड मेडिसिन हुई है, एक रिफाइंड फूड हुई है। हम अगर दोनों को इकट्ठे नहीं देखेंगे और इस रिफाइनमेंट के इफेक्ट को सही तरीके नहीं समझेंगे तो हम नेचुरल मेडिसिन को नहीं समझेंगे पूरे का पूरा, और फिर हम उससे भरपूर फायदा नहीं उठा सकते। अगर हमने उससे भरपूर फायदा उठाना है हमें सारी को कंप्लीटली समझना पड़ेगा। तो मैं वहां पे गया, वहां से गुजरा, वहां पे लोग मुझे मिले और उनमें से अक्सर लोग जो थे कुछ कुछ प्रोसेस डिजाइनिंग के थ्रू और कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स के थ्रू वो चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मुझे 65 के करीब मैंने लोगों को इंटरव्यू किया और उनकी अभी भी उस टाइम परफॉर्मेंस जो थी, फिजिकल परफॉर्मेंस, मेरी 40 ईयर की परफॉर्मेंस से ऊपर थी। वहां पे एक सवाल ये भी आया कि आपको अगर कैंसर हो जाए, मैं कैंसर पे रिसर्च करता था और मैं हवाई, एक यूनिवर्सिटी है यूएसए में, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में मेरे बॉस हैं जॉन एम पजूटो, और जी पजूटो मेरे डायरेक्ट टीचर हैं। और किंग हार्न जो है, डॉगलस किंग हार्न, ठीक है, वो मेरे इनडायरेक्ट टीचर हैं। और उनके ग्रुप के साथ मैंने काम किया और उन्हीं के ग्रुप का, और ये इन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने टैक्सोल डिस्कवरी की थी। तो उसमें मैं जब वहां पे गया कि भाई आप लोग बंद मुंह का फोड़ा कैसे ट्रीट करते थे, तो इन्होंने मुझे चढ़ा दिया कि वो फलां पहाड़ पे जाओ, उसकी चोटी पे चंद पौधे हैं, आप उन पौधों की टहनियों का हम कावा पीते हैं तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा कब से पता है? पता चला कि वो जो था वो उन्हें कई 100 साल से पता है। देखें, जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन निकला है ना, हम इसको अभी भी एक चीज में गलती कर रहे हैं और वो बड़ी गलती है। तिब्ब ये समझती है ये हमसे मुख्तलिफ है, हालांकि इसको बर्थ देने में पहला हाथ ही ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है। ये तो उसका बच्चा है। अगर आप अपना कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, हिस्ट्री से क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा, अब वो टेक्सास का पौधा था मैडम, जिसके ऊपर 1972 में इतने बिलियन डॉलर्स के ऊपर बजट बना था अमेरिका में, और फिर वहां से टैक्सोल, पैक्लीटैक्सल और ये फैमिली आई है कैंसर ट्रीटमेंट की। फिर मैंने फिर इस चीज पे काम किया कि देखें, एक बात समझें, नेचुरल वापस क्यों आई है। जिस तरह हम एक यहाँ पे डिफेंस का एक स्क्वाड लेके चलते हैं, ठीक है, उसमें शूटर भी होते हैं। हमारे हमारे मुल्क में सिर्फ खाली शूटर हूं और आईएसआई ना हो तो
आप डिफेंस कर लेना। देखें, हमें इसी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट में जब हम एक यूनिफाइड सिर्फ किलर लेके जाते हैं अंदर, ठीक है, किलर किल तो करता है, इसमें कोई बात नहीं है। एफिकेसी है ही ये कि हमने किलर पे हाथ पूरा रखना है और क्वांटिटी पूरी देनी है उसको कि वो जाके डिजीज किल करे, ट्रीट करे, एलिमिनेट करे। लेकिन उसके साथ जो अलाइड मॉलिक्यूल्स है ना, जो के साइड इफेक्ट को ट्रिम डाउन करते हैं, उसको एक्सपोज नहीं होने देते, बायोलॉजिकल सिस्टम है। क्योंकि अगर वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, असल चीज जो समझने की है वो बायोलॉजिकल सिस्टम प्लांट का, बायोलॉजिकल सिस्टम एनिमल का और बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन का। बायोलॉजिकल सिस्टम है और उसमें बहुत कॉमनैलिटीज हैं, बहुत चीजें यकसा हैं। अगर बहुत सारी चीजें हाई कंसंट्रेशन में पौधे को भी किल नहीं करती या एनिमल को नहीं किल करती, तो उसमें उसका डिफेंसिव सिस्टम लगा होता है। इसलिए नेचुरल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इफेक्ट अचीव होना चाहिए, साइड इफेक्ट रिड्यूस होने चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट भी है अगर आपने आगे तरक्की करनी है तो। लेके जाना है, साइंस को लेके जाना है, वापस आना है, वो इसका ये होगा। आपको यूनिवर्सिटी दो काम करके दे सकती है। इस टाइम के टॉप प्रायोरिटी ब्रेन्स जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान से लेके अमेरिका के या दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे, एडवांस कंट्री में भी जाएंगे, वहां तक के ब्रेन्स की एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, पर्सनल क्रेडिबिलिटी, उनकी सनदें और उनका वो सरमाया आपको दे सकती है। दूसरा, उसके ऊपर जो आपको स्ट्रेंथन करने में रोल प्ले कर सकती है, वो इंस्ट्रूमेंट की एक्सेस दे सकती है। और इंस्ट्रूमेंट की वो एक्सेस और उनकी डाइवर्सिटी, ठीक है, वो शायद शायद होगी किसी में इतनी जान हो, लेकिन अभी तक अमेरिका में सारी की सारी जितनी भी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड हैं, बैक्ड हैं। वो उसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट वो देती हैं और बाकी पर्पसफुल इंस्ट्रूमेंट उनके यूज भी करती हैं, कुछ चीजें ऐड अप करती हैं और अपने प्रोजेक्ट करवाती हैं। लेकिन ये टू वे है। अब आप अगर इस चीज को, अब पाकिस्तान में क्या हुआ, स्नैचिंग का एक हमारा कल्चर है। मतलब हमें जो सबसे बड़ा मसला पड़ गया है वो हमारी एथिकल और मॉरल जो है वो उनके अंदर मसला सबसे बड़ा है कि हम ना किसी की भी चीज उठा लेंगे। इसी तरह से जो सरमायादार है सरमायादार में भी बहुत सारी जगहों पे मसला ये पड़ गया कि वो आपस में कंपटीशन भी करते हैं, लेग पुलिंग भी कर लेते हैं, आपस में कर लेंगे, बाहर जाएंगे इकट्ठे भी हो जाएंगे, वो सारे इकट्ठे भी हैं, आपस में कंपटीशन भी है। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बताऊं कि अपने बेनिफिट्स के ऊपर एक्सपेंशन जब तक आप नहीं करते, इंक्लूसिवनेस नहीं करते, आपको ये चीज नहीं मिल सकती। अभी हमने फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए अभी परचेज कर रहे हैं, वो तकरीबन 2 अरब की है। उसका पर्पज ये था, मेरा पर्पज ये था, मैंने जब वो मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई थी या लेनी थी आज से 10 साल 15 साल पहले, अब तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अब टाइम एक इतना स्लो चलता है कि मेरा वो टाइम आ गया। उस टाइम मैंने कहा था कि मैं रेफरेंस मटेरियल अब प्रोवाइड करूंगा नेचुरल प्रोडक्ट्स के, और उनका नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो फुट प्रिंटिंग करने के लिए आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है वो हम बना के प्रोवाइड कर देंगे सबको, ताकि उनकी एफिकेसी जो है वो मेजरमेंट करने में उनको आसानी रहे और ऑथेंटिकेशन एक काम का हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों में, टेक्नोलॉजी में, आपको न्यू प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में, माइंडसेट में, और इन चीजों में जो मेरा ये ख्याल है कि, और स्पेशलिटी वाइज हाईएस्ट स्टैंडर्ड में अगर आप एंगेज करें तो यूनिवर्सिटी से ये चीज आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एहसान साहब। मैं एक क्वेश्चन बिस्मिल साहब से करना चाहूंगी कि व्हाट रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वुड मोस्ट इफेक्टिवली इम्प्रूव क्वालिटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए जो क्वालिटी
और साथ साथ पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों को इम्प्रूव करेंगे। एनी सजेशन? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसका जवाब तो वन लाइनर जवाब है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के हमारे प्रोफेशन होम्योपैथी के हवाले से पब्लिक का कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी काम है वो उसी सूरत में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है कि जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसके स्टैंडर्ड, हर चीज़ें जब कंसिस्टेंटली डेवलप की जाएंगी और रेगुलेटर उसको मॉनिटर करेगा, इंडस्ट्री और एकेडमिया का आपस में कोलैबोरेशन हो, स्टूडेंट्स फाइनल ईयर को जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, स्टूडेंट फाइनल की पूरा आखिरी साल लगाए इंडस्ट्री में जाए, डिफरेंट प्लांट्स पे स्टडी करवाई जाए, पीएचडी एमफिल के स्टूडेंट्स को किया जाए, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं Very well स्टैंडर्डाइजेशन said. के अंदर। इसके बगैर हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है। थैंक यू। वेरी वेल सेड सर। थैंक यू। अब मैं हम मौका देती हूँ कि आप में से कोई मैडम सवाल करना चाहें प्लीज, और आप में से जो जवाब देना चाहें हमारे एक्सपर्ट्स वो दे सकते हैं। माइक जरा दे दें प्लीज मैडम को। मैं आपसे भी नेक्स्ट आपसे फिर लेती हूँ क्वेश्चन। इससे पहले कि मैडम सवाल करें, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन। सवाल भी हमारा प्रेसाइज हो, हमारा रिप्लाई भी प्रेसाइज हो। मैं आई वुड अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर। मैडम पहले अपना तारुफ भी करवाइएगा, तो भी हैं हमारे पार्टिसिपेंट। मेरा नाम डॉक्टर तबीबा साइमा कयास है और मेरा ताल्लुक हमदर्द यूनिवर्सिटी से है। मैडम पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने जो चैलेंजेस बताए उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की इंटीग्रेशन विद मॉडर्न हेल्थ केयर में सबसे पहली चीज़ जो है वो एजुकेशन है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एजुकेशन इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। बिल्कुल। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स वो हैं। मेरा सवाल जो है राशिद साहब से था कि उन्होंने कहा कि 82 क्लिनिकल साइट्स जो हैं अप्रूव्ड हैं फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्या ये 82 क्लिनिकल साइट्स जो हैं यूनानी मेडिसिन की क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी अप्रूव्ड हैं? अगर ऐसा है तो उन साइट्स पे उन सेटिंग्स में जो है वो यूनानी मेडिसिन के प्रिस्क्राइबर्स कौन होंगे? बिल्कुल सर आपसे क्वेश्चन। सर आप आ रहे हैं? आप रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करें। सर मेरा सवाल है आपसे, आपने कहा कि 82 साइट्स अप्रूव्ड हैं फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो वो क्लिनिकल साइट्स क्या यूनानी मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी अप्रूव्ड हैं? और अगर वो यूनानी मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी अप्रूव्ड हैं तो वहाँ यूनानी मेडिसिन के प्रिस्क्राइबर्स कौन होंगे? मैं आपको बता दूं कि जो क्लिनिकल साइंस, ये कोविड का ज़माना था, तो उसमें पहली बात है कि साइनोवैक और जो भी आपको लगती रही है पाकिस्तान में, वो पहली क्लिनिकल ट्रायल थी, वो ICCPS को अप्रूव हुई थी और इंडस ने उस पर क्लिनिकल स्टडी कंडक्ट की थी। उसी में प्रोफेसर रजा शाह, जो जिनकी सुबह वर्चुअल प्रेजेंटेशन भी थी, वो इंडोनेशिया में थे, तो उन्होंने ये जो चाइनीज ग्रेन्यूल्स की बात की थी, ये भी की हुई है। तो वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो स्पेसिफाइड नहीं है। मैंने सुबह एक लफ्ज अपनी प्रेजेंटेशन में एक लफ्ज कहा था कि थेरेप्यूटिक गुड्स, रूल जो है वो थेरेप्यूटिक गुड्स के लिए, तो उसमें जिस चीज़ का फूड को छोड़ के बाकी जिस चीज़ का हमने उसके लिए साइट अप्रूव है। और कौन प्रिस्क्राइबर है, कौन है, वो ड्राइव बड़ी विजिलेंट है, वो देखती है कि कौन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसके मुताबिक। क्योंकि यूनानी मेडिसिन के प्रिस्क्राइबर्स तो यूनानी कि वो प्रिस्क्राइब नहीं, वहाँ प्रिस्क्राइब नहीं क्लिनिकल ट्रायल में किया जाता, उसमें क्लिनिकल स्टडी कंडक्ट की जाती है, और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी क्वालिफिकेशन को जज किया जाता है, उसकी क्या इस काबिल है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट हर्बल, यूनानी, एलोपैथिक, मेडिकल ड्रग्स किस पे कर सकता है, तो उसका CV और उसकी स्टडी उसको देख के फिर कर सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर शुजाउल मुल्क, प्लांट साइंसेस, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। मजदार साहब से माजरत के साथ मेरा कमेंट है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कमेंट में थ्रू चेयर्स कन्वे करना चाहता हूँ। पूरे हाल में पहली दफ़ा रशीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को जमा किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा लगा, शायद मैं गलत भी हूँ, कि 2 स्टेक होल्डर्स की कमी है। इंशाल्लाह अगले कॉन्फ्रेंस में पूरी होगी। एक जो इंडिजिनस नॉलेज वाले लोग हैं
मैं एक जिम्मेदारी मेरी प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एथनोबायोलॉजी का है। मोरक्को में हमने कॉन्फ्रेंस की 2024 में, तो हमने ज़मींदारों को, इंडिजिनस नॉलेज वालों को भी बुलाया, 40-50 लोगों को, क्योंकि न उनकी नॉलेज को एथिकली देखा जाता है और ये उनका अपना प्रॉपर्टी राइट है उस नॉलेज का। मेरा ख्याल है कि ड्रेब इसमें भी देख ले जो लोगों का नॉलेज है। दूसरा इसमें जो मैं बात कर रहा था कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस, सान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन एक बात और भी हो सकती है कि न्यू ईचीसी, और दूसरा जो स्टेक होल्डर की कमी मुझे महसूस हुई, ईचीसी जो करिकुलम डेवलप करता है, जो मैडम ने बात की, तो अब करिकुलम में न इंडिजिनस नॉलेज की जगह है, और फिर जहाँ पे इंटर्नशिप्स न्यू पॉलिसी में आई है तो इंडस्ट्रीज अपने माहिर लोग बुलाते हैं। हमारे स्टूडेंट को तो ट्रेन करना पड़ता है, हम 2-4 साल लगा के उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे होते, तो इंडस्ट्री 4 महीने में उनसे क्या फ़ायदा लेगा। वो तो अक्सर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं वो विद माजरत, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। तो इस काम को कहाँ पे लिंक किया जा सकता है कि इंडस्ट्री को पाबंद बनाया जाए। मैंने भी यूके से पीएचडी की, तो ये लास्ट कमेंट नहीं नहीं वहाँ पे टैक्स उन इंडस्ट्री पे कम था जो कि इंटर्नशिप देती। एक खास छूट थी कि जो इंडस्ट्रीज स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स देंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट में पैसे देंगे, उन पे इतना परसेंट छूट होगा टैक्स में। तो प्लीज़ इस कॉन्फ्रेंस के जब रिकमेंडेशंस बनेंगे तो मेरा कमेंट है कि इसी को भी रिकमेंड करें, करिकुलम में इंडिजिनस नॉलेज को लाया जाए, कॉन्फ्रेंसेस में उन लोगों को लाया जाए जिसके नॉलेज पे हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये उनका हक है। और तीसरा ये कि थ्रू पॉलिसी मेकर, और एहसन इकबाल साहब को एक प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में सामने जाके मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इस फोरम से एक स्ट्रांग मैसेज चला जाए कि प्लीज़ इंडस्ट्री को पाबंद बनाया जाए कि वो एकेडेमिया से लोग लें, और एकेडेमिया को पाबंद बनाया जाए कि एट द एंड प्रोडक्ट कैसे जा रहा है। क्योंकि इस न्यू सर सैयद अहमद खान के इस न्यू एजुकेशन सिस्टम जो 100 साल पुराना है, और ये जो हकीमी नॉलेज है ये 6000 साल पुराना, और लास्ट उसमें मैं अनपढ़ हूँ तो मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले करने दो, जो बीइंग इलिटरेट पर्सन इन दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं प्लांट साइंसेज का बंदा हूँ। वो ये कि अगर कोई पौधा जहरीला नहीं है, कैटेगरीज बनाई जाए, ड्रेव वालों को रिक्वेस्ट है, और वो पौधा हम हर दिन खा रहे होते तो वो क्या नुकसान करेगा। तो थोड़ा सा कैटेगराइजेशन में उन पौधों को तो कम से कम उस फेज 1 फेज 2 की जो टेक्निकल चीजें है उससे मुबारक तस्वर की जाए। थैंक यू सो मच। सर, आप इसका जवाब मैं चाहूंगी आप इनको दो। टैक्स रिलीफ के हवाले Thank you very much. My name is Dr. Akram Sultan. I'm a cardiologist and I'm an advisor of the health to the comstech here. And I'm also the health and safety convener for the Federation of Chamber and Commerce, Pakistan. So we did a gathering before 2-3 months, academia and the industry for the promotion of all jobs and research. There are more than 400 industries of the pharmaceutical in Karachi. We arranged them, and the president of Aga Khan University came for personally giving the presentation. But unfortunately, many of the industries did not came. But nowadays, what we did it in Karachi, that we do every year a selection mode. The industries are actually sending their people to enroll the final year students of different pharmacy and other areas to give them internship into it. So we must have to interact in between allopathy, homeopathy, alternative medicines, the TRAP, comstech, and different universities to come on that stage. And your point is very valid. I request here to TRAP and the comstech organizers here just to make another workshop soon for all these stakeholders. And your point is very good. Likewise, the kumbi, the mushroom. Some mushrooms are very poisonous and some are not. So when you are going for something, you have to see this is the lacking in here in the alternative medicine. Look, if you go for the kashkai, that is an opium cover, and then you go for the opium, you'll find a lot of constipation.
and we are saying that everything in the alternative medicine is good. They don't have any side effects. So you have to go for a longer trials, and when the data and the trial will be presented, then we can stand anywhere in any part of the treatment, like allopathic or homeopathic or anywhere or an alternative. So thank you very much. जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेना चाहूँगा। आपने कहा कि स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं बताते हैं, वो हमसे नहीं सीखते, तो इंडस्ट्री में 4 महीने में क्या सीखेंगे जाके। मेरा इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैंने रिफा यूनिवर्सिटी से मेरा MOU हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ, लाहौर का विमेन यूनिवर्सिटी से हुआ, हजोरी यूनिवर्सिटी से हुआ। उन्होंने फॉर्म डी के आखिरी स्टूडेंट का हमारे साथ MOU किया, एंड इट वाज ए मार्वलस एंड एक्सलेंट एक्सपीरियंस कि उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे बीच में कि जो हमारे लिए लर्निंग का बायस बने। और मैं अगर बात पूरी कर लूँ तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो हमारे HEC के लोग हैं, हमारी जो रेगुलेटरी के लोग हैं, कि वो अपने सिलेबस को रिव्यू करें, अपने सिलेबस को थ्योरेटिकल से उठाएं, प्रैक्टिकल पे लेके जाएं। इंडस्ट्री जो है उसे मैंडेटरी करें। फॉर्म डी के लिए बेशक आखिरी साल पूरा लगवाएं हैं इंडस्ट्री में, उसको डोजेज फॉर्म का नहीं पता होता, स्टूडेंट आता है, हम ध्यान देंगे 6 महीने हमें उसको बताना पड़ता है कि बेटा डोजेज फॉर्म किसको कहते हैं, ये फलानी मशीन है, ये फलानी है, ये वायबिलिटी है, ये है। और जो MPhil का स्टूडेंट है उसकी तो टोटल स्टडी ही इंडस्ट्री में होनी चाहिए, और PhD वाले को तो इंडस्ट्री से बाहर ही नहीं आना चाहिए, रिसर्च के ऊपर उसको डाल दें, उसका काम ही रिसर्च का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. I welcome here Mr. Naeem Mirza, who is the CEO of Aurat Foundation, along with his delegation. I also welcome here Dr. Nurul Zaman, the Director, PIL Research, Punjab. Actually, they came here for a meeting, but because of the lengthening this question answer session, they are waiting. I'm sorry, sir. I submit my apologies. सर आप क्वेश्चन का प्लीज जवाब। इसमें एक चीज जिस पे मैं हूँ कन्विंस हूँ कि पाबंदियां लगाने के हम जो है ना, मैं हक में नहीं, मैं कन्विंसिंग के हक में। और दुनिया हमेशा कन्विंसिंग पावर से ज्यादा तरक्की करती है। मेरा एक स्टूडेंट गया था आयरलैंड में, एक लैब में कॉस्मेटिक्स की और डेवलपमेंट की एक है, आज वहां पे 5 हैं, और उन्होंने वो पहले वाले भी 4 वापस नहीं आने दिए। हम जो ना करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम उनको स्पून फीडिंग क्यों करें? बस स्टूडेंट ताली तो बजा देना कम से कम। स्टूडेंट्स को जब हम स्पून फीडिंग करते रहेंगे, हम उनको कभी भी एनेबल नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। हम बैठे एनेबलिंग करने के लिए, डिसेबलिंग तो हमारा काम ही नहीं है। डिसेबिलिटी क्यों जनरेट करें? जब मैच्योर हैं अपनी जगह बनाएं, गैप फाइंड करें, रिसर्च गैप उनको बताते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं, कभी एक काम भी उन्हें पर्पज लेस नहीं बताया, और उनको साथ में ये भी कहता होता हूं कि इससे कमाओगे कितने ये भी मुझे बताओ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। एक तो सवाल ये है, मैं ये कहूंगा कि हमें टीचिंग मेथड्स पे और इन चीजों पे हमें अपॉर्चुनिटीज बेइंतहा हैं, अगर हमारी देखने वाली आंख हो। ये बात इसमें बहुत सच्चाई है कि काम तो जो कल वो मेरी बेटी एक पढ़ रही थी, तो उसका जो टीचर था ना, उसका पेपर चल रहे हैं, वो कहता था आराम हराम है, थोड़ी देर के बाद कहता ये हमारा लोगो है। आराम हराम है, और उसको वो रात के 2 बजे उठ के भी पढ़ने लग जाती। साथ मैं भी जो है ना 1 बजे सोया होता, तो 2 बजे वो उठ के पढ़ने लग जाती, मुझे भी साथ कह देते कि चलें ठीक है आप भी काम करें। मैंने कहा ठीक है, आपका भी आराम हराम है और मेरा भी हराम है, ठीक है। तो वी नीड टू चेंज आवर कल्चर। अब ये क्या बात हुई कि फर्ज करें कि हम लेट जॉब पे क्यों जाते हैं। अब स्टूडेंट को 10 बजे, अगर 10 बजे वाला स्टूडेंट उठ के लैब में आना चाहता है, तो उसके लिए नई जगह होनी चाहिए। मैं इस चीज से कन्विंस्ड हूँ। अगर स्टूडेंट ने अपनी जगह बनानी है, स्टार्ट करना है, तो 8 बजे उसे मालिक से पहले होना चाहिए। एक तो ये बात है, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिक एडवांस और इसको हमें देखना है। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री खुद खुल जाएगी जब उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है ना वो हम शेयर करेंगे। तीसरी बात यह कि ज़ाब्ता खान शनवारी साहब जो थे,
वो इधर थे एथनोपार्टनी के, और वो इसका पार्ट है हमारे साथ, और वो एथनोपार्टनी के स्टेक होल्डर है। मेरा ये ख्याल है कि हम सब, आप भी जानते हैं, उनको मानते हैं, तो वो इंक्लूजन में है और इसमें इस लूप में भी है। Any other question, please? Thank you, डॉक्टर साहब। अब ऑडियंस के जो सवाल हो, हम चाहेंगे कि हम क्विकली बस 2 से 3 सवाल और ले लें, क्योंकि हमें शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्योंकि कुछ लोगों की फ्लाइट्स हैं तो वो जाना चाह रहे हैं। हाँ, भले हम शील्ड्स के बाद भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों की फ्लाइट्स हैं तो वो शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं अभी मजीद 2 क्वेश्चन ले लेती हूँ। और आप बिल्कुल बिल्कुल केन्स ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे वही पैसिफिक ओशन की मुख्तलिफ जज़ायर के इंडिजिनस लोग आते हैं। मैं रशीद साहब के उस लेक्चर से 2 पॉइंट, रशीद साहब, डॉक्टर रशीद साहब आप भी थोड़ा गौर कीजिएगा सर। वो ये है कि रशीद साहब ने कहा कि कौन सी केपीआईज और क्या प्रोटोकॉल है जो एक क्लिनिकल ट्रायल की। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जहाँ ये हर्ब वाले लोग बैठे हैं और हमारे काने भी डिस्कशन हुई, उनके गिले शिकवे ये है कि हमें बड़ी लंबी कतार से फेज़ 1 से फेज़ 4 तक गुजरना पड़ता है, और ड्रेप की अपनी मजबूरियाँ हैं कि कई प्लांट्स का, दतूरा का जो टॉक्सिक प्लांट है, कोई आगे चला जाए, कोई मर जाए तो फिर क्या होगा, जो मैं समझता हूँ। तो इस पूरी कहानी में मेरा ख्याल है कि अगर ड्रेप के पास कोई प्रोविजन हो, आई डोंट नो, जिस तरह मैंने कहा, आई एम इलिटरेट, कि जो लोग इंडिजिनस लोग हैं कराकोरम हिमालय के पहाड़ियों पे, एक बंदा बंदी हेरेक्लियम कैंडिकेंस, जिसको पश्तो में हम सोरा कहते हैं, वो पौधा वो उठाते हैं और वो बेंसो गायों में हीटिंग पीरियड के लिए यूज करता है। वो पौधा जब हम सवात से कलेक्ट करते हैं तो वो काम नहीं करता मॉइस्ट टेम्परेट, जहाँ भी मानसून बारिश है। लेकिन वही पौधा जब चतराल से ड्राई टेम्परेट, जहाँ भी मानसून की बारिशें नहीं है, जहाँ से कलेक्ट किया जाता है, वो काम करता है फिर हीटिंग पीरियड इन एनिमल्स। अब वो पौधा जब अगस्त के लास्ट वीक में फ्रूटिंग के राइपनिंग से पहले उसका राइजोम निकाला जाता है, तो उसका एक असर है, और पूरा फ्रूट बनने के बाद उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जब ट्रांसलोकेट होते हैं, वो बॉडी में मैं नहीं जाना चाह रहा, तो फिर वो असर नहीं करता। अब वो बात है, हम एजुकेटेड लोग सब, कमेंट करो सर, खत्म कमेंट करो, तो सॉरी, तो मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज, बात यही है मैडम, सॉरी आप माइंड न कीजिएगा, कि जो सर ने कहा कि फेज 1 में इतने पार्टिसिपेंट होने चाहिए, फेज 4 में इतने होने चाहिए एफिकेसी की। अब हर्बिशियस मेडिसिन का, हर्बल मेडिसिन के जो एफिकेसी का ये स्टेटिस्टिक्स है इंटरव्यूज का, ये इंडिजिनस नॉलेज वाले जो है उन पे रखा जाए कि कराकोरम हिमालय हिंदू कश से अगर 200 लोग किसी मेडिसिन को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ड्रेब उनको कोई प्रोविजन। जी सर, इसका मैं एक मुख्तसर एक फिक्रे में जवाब दूं। सर, ये मटेरियल्स होते हैं, फूड्स होती हैं, फंक्शनल फूड्स होती हैं, मेडिसिनल फूड्स होती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, पॉइजनस प्लांट्स होते हैं। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये मेडिसिन पे हैं और मेडिसिनल क्लेम पे हैं। अगर मेडिसिनल क्लेम और मेडिसिन लेना है तो क्लिनिकल ट्रायल होंगे। अगर उसके अलावा कोई जनरल गुडविल के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए किसी भी चीज के लिए, तो उस पर नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। जो उसका लॉ तो बना हुआ है ना जी, अगर आपने क्लेम के लिए कोई चीज लेनी है तो यू हैव टू प्रूव इट कि आप क्लेम कर रहे हैं। Thank you very much. Thank you. Now, may I request to Dr. Akram Sultan, cardiologist, Tapa Heart and Health Advisor to Comstech and FPCCI, who is here with us to kindly present souvenirs and shields to our distinguished speakers. I request all the speakers to please come on stage for the shield. मुझे जरा नाम, Professor Dr. Ehsanul Haq. Professor Dr. Rahmatullah Qureshi.
हाँ, शील्ड के लिए। अरसलान, आप साथ आके खड़े हो दो। डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी। और वेरी ओन मंजूर अली बोजदार साहब। डॉक्टर ज़ाब्ता खान चिनवारी, ही इज नॉट हियर विद अस। ये ले। डॉक्टर आमिर राउ। डॉक्टर तबीबा साइमा गयास। उनकी फ्लाइट है। मोहम्मद सज्जाद। हकीम हामिद अशरफ। हकीम हामिद अशरफ। सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं आपको, कुछ मिस नहीं होगा। वरना डिवीजन से मिल जाएगा आपको। हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। डॉक्टर नजमुल हसन। डॉक्टर खिजर अब्बास। डॉक्टर खिजर अब्बास। मिस्टर अरसलान तारिक। ये ले सर। सर ये ले अरसलान तारिक। डॉक्टर अब्दुल रशीद। अब आप इधर आ जाए। प्रोफेसर डॉक्टर एम रजा शाह। नदीम खालिद। हकीम मोहम्मद इरफान अकरम। हाँ, तो नदीम खालिद का, सॉरी, फारूक सरवर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर अतियतुल वहाब। Now we have shields for the stakeholders जिनके हमारे साथ स्टॉल्स थे, उसके लिए I don't have the exact list, but मैं उनकी नाम ले देती हूँ। मुझे नाम याद है, बिल्कुल याद है। हमदर्द। हमदर्द से शुरू करते हैं, प्लीज अपनी शील्ड के लिए आइए। करशी लेबोरेटरीज। मरहबा। मरहबा। अशरफी लेबोरेटरीज। हर्बयोटिक। आप अशरफ से, मैं जरा सब रेडी हो जाए ना लोग। हर्बयोटिक प्लीज।
Herbal, NutriFactor, Himani, Himani, NutriFactor से आए हमारे साथ, NutriFactor से नहीं है इधर अभी, मिंट फार्मा, एक मिनट, मिंट, सुकून वेलनेस, कमाल लेबोरेटरीज, लासानी, मरहबा हो गया, और ब्रिक लेबोरेटरीज, आई मरहबा हो गया मेरा ख्याल है, मरहबा। आई होप आई हैवंट मिस्ड एनी नेम। हाँ, अगर कुछ मिस हो गया है तो वो प्लीज आ जाएं स्टेज पे अपनी शील्ड के लिए। कमाल का भी मैंने नाम लिया है, कमाल, मरहबा, अशरफी, सब हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। हर्बियोटिक्स हो गया, हिमानी, हर्बियन, न्यूट्री फैक्टर, हमदर्द, करशी। अच्छा सर, सर मैं क्लोजिंग करूं? हो गई? नहीं अजमल में दुकान I would like to invite Dr. Syed Javed Khurshid, Consultant Science, Communication and Diplomacy for closing remarks. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Well, more than the closing remarks, it is the way forward, how we can get the results and achievements out of this meeting. First of all, I am really thankful to all the researchers, practitioners, traditional medicine representatives of academia and industry, ladies and gentlemen. As we are concluding now and looking forward how we can proceed further. So there are few suggestions which I like to make. Before that, I have seen the exhibition and I was there. Over the course of this exhibition and conference, we have witnessed the remarkable potential of the herbal medicine, not only as a valuable component of our cultural and scientific heritage, but also a promoting contributor to the contemporary healthcare, sustainable development and economic growth. The discussion have
demonstrated that traditional knowledge and modern science are not competing approaches. Rather, they are complement each other to provide innovative and evidence-based healthcare solutions. So the few key priorities which I like to mention here. First, we must strengthen our scientific research and clinical validation of herbal medicine. She was also asking a question when I was there on the one of the session. Greater, because this is very important, and we always lack in that, and therefore we are not able to go further. Greater investment in research will help establish efficacy, safety, quality, standards, and international credibility. This is one of the most important things which we have to achieve. Second, there is a need to promote stronger collaborations among universities, research institutions, healthcare professionals, industry, and regulatory bodies. Regulatory body, right now you have seen they are taking a lot of interest in it, and I think when they will take the interest. That is the only hurdle we face, and we will be able to move forward. Such partnerships are essential for translating research findings into practical health solutions and commercial opportunities. Third, we should encourage the conversations and sustainable utilization of medical plants. Here I will also like to mention one thing, that we should patent those medicinal plants first, because we have a lot of medicinal plants, but see, I will give you an example here. The example is of ginger. If you see, ginger is first patented by the India. So we have to look in those things. So we should do the patent of the things first. So they should be known that they are our products and they are our method products. Then the fourth, which is also very important in every field, is the capacity building and knowledge sharing among. We have a very big platform among the OIC member states. Should be enhanced through training programs, joint research initiatives, and exchange of expertise, enabling us to collectively benefit from our rich traditional knowledge and scientific capabilities. And here I like to pay tribute to Dr. Rashid here, and we are in many committees looking forward to the curriculum in a lot of directions, in pharmacy too, and now I think we should also revise our curricula in herbal medicine. Finally, we should strive to transform herbal medicine from a largely traditional practice into a globally recognized, scientifically validated, and economically viable sector that contribution to public health, innovation, and sustainable development. And here I will give an example. For last 3 or 4 years, I'm taking some herbal medicine, and I discuss with them. And some of them are very good. And I can give you an example. Like in allopathic medicine, doctors always give you lexotanil or something, or if he is very sincere to you, he gives melatonin, or take a sleep and cigarette. Well, I have came across to a herbal medicine which had melatonin plus a passiflora in it. Now, passiflora is a natural compound. So, actually, instead of taking those medicines which can make you habitual, if you take the natural medicine, they are very perfect. They are very good. And see, what is the difference between the herbal medicine and the
allopathic medicine. Only we find the chromophore which are very active and then concentrate them to act. But that is suppressing the disease. Now, if you take a herbal medicine, it will slowly react and slowly build up the resistance. So that is much better than the suppression of the disease. So therefore, I always recommend if you find a good herbal medicine which can affect your body. See, in herbal medicine, you have to find out that medicine which is effective for your body, because everybody takes it differently. This is my view. I can give you an example here. A diabetic patient, the doctor never tells you what I'm telling you. The diabetic patient, when he gets up early in the morning at 3 or 4 o'clock, the sugar is very good, always very good. You know, it is really amazing. But when he tests for sugar in the morning, after getting up, it is also high. Why? Because the body also helps itself. When the sugar is low, the cells start releasing the sugar in the body to keep it on that level which makes you active. So body is there. So you have to pick up that drug which is essential for you. I am confident that the ideas generated during this event will not end up here, but will evolve into the meaningful collaborations, research projects. I will emphasize into the research projects. Policy initiatives, which are very essential, as the Minister was also mentioning it, and the practical actions are very essential that benefits our society. On behalf of OIC Complex, I congratulate the organizers for successful bringing together drivers, stakeholders, and creating a platform for dialogue, innovation, and partnership. Let us leave this conference not only with new knowledge, but also with a renewed commitment to advancing herbal medicine through science, cooperation, and responsible and innovation. Thank you. Okay. Let me add to it. In Pakistan, it is always essential to bring ministries on board when you want to do something. Okay. So you cannot get away from them. You have to take them on board. Okay. And when they are on board, you succeed. And the next one is to include all these stakeholders, right from the farmers, as was mentioned. And I think we should use the word stakeholders, which is much more broader than just the scientists. मैं यहाँ उर्दू में एग्जाम्पल दूंगा. आप तो हम हर्बल पे बात कर रहे हैं, सब कुछ है. आज से 30 साल पहले I used to do at college in Madhya Pradesh, International Madhya Pradesh Summer College, which is after Islam. So there was a lot of people used to come here and we used to walk in Madhya. And I have seen many people collecting the herbal drugs and herbal medicine there from outside Pakistan. They was not Pakistani, but they was collecting for the research. Now we have moved forward. We are really in business. So we have to think about that who are the stakeholders which can push the scientists and researchers and the industry. That is the thing which you are asking. Okay? And that is the government. And that is the people who are involved in doing those things. And see, I am from the government and I know the thing. Therefore, I'm saying you have to take them on board. You have to make them feel that this is the need.
Okay, and when you are stronger as a herbal medicine people, you can do it. But you have to prove it. Thank you. Thank you very much, Dr. Saab. काइंडली न्यूट्री फैक्टर के लिए सर शील्ड देने के लिए आ जाए प्लीज स्टेज पे। मंजूर साहब से आई वुड रिक्वेस्ट मंजूर साहब के प्लीज। जी न्यूट्री फैक्टर इनको शील्ड दें प्लीज। तालियां क्लैपिंग प्लीज। So as we have concluded, I would like to thank our guests, distinguished speakers, panelists, participants, comstech, GRAP, and all stakeholders for their valuable contribution. The discussions over the past 2 days have highlighted the importance of research, quality, standardization, evidence generation, and collaboration in advancing the herbal medicine sector in Pakistan. Thank you all for your participation and contribution. Safe travels and best wishes to everyone. Thank you.